के है नाम और सर पे है ताज, या हम देते उन्हें प्यार पर वो घूरे हमें नाप के। तो देख सारे लौंडे यहाँ अज कारोबारी, और पैसे ज्यादा लिट गुंडे रखे सरकारी। कहते टाइम इज फकिंग मनी, मैं नहीं देनी फूटी कौड़ी, और तोड़े किन्ने दिल तो मैं कहंदा बिलो सॉरी। अज मुझे बोले मत देख सादा सपने, जिनके आंखों में था शक वो थे मेरे अपने। कला की इस नदी में अज काफी महफूज, मैं बनदा मैं गहराई बिलो देख डूब के। चल मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेरा काम देता मैं दिल, और तू हो गई फना। आज देख ना तुझसे मैं लिखा इतिहास। हो गए कितने साल मैं थकदा रहा, तू थी दवा पर अब लगती सजा। अंधेरी रातों में बस हंसदा रहा, बिल्लो देख ना हाथों से मैं लिखा इतिहास। देता मैं दिल और तू हो गई फना, दिल तू तोड़ के फिर देती है सलाह। बदला ये मन और बदले ये राह, बिल्लो देख ना हाथों से मैं लिखा इतिहास। चलो मेरे साथ आज तू वहाँ जहाँ कोई भी नहीं हो, मैं तू रहते बेरा काम। हाथ में पंग मैनू लगदी कला, तेनू वेखे हो गए साल दिल रहंदा है खफा। शैतानों की अब बुरी है नजर, और मैं खोदा उनकी खबर जो रख दे खबर। तू मैं अमर आज कला मेरे पास, और इन हाथों से तू दे मैं लिखूं इतिहास। ये मेरा आवाज मेरे को सुन। जाओ 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 जाओ। ओए सुई MC stand but fat and dark, समझ रहे हो? टमाटर है स्विच ऑफ। सॉरी सर। What's up everybody, how you guys doing? Bro, first I need to change this phone setting so that it doesn't turn off at all. How do I change that setting? Oh, okay. No, never. Hello, sorry, welcome to the stream. Where are you? I'm in the new on the floor above. Normal boot. One floor above. Full bootcamp was below. Now it's the upper. Hi Rana. Hi Omar. Acha vlog when? The vlog will come tomorrow, bro. I was streaming today, so that's why I didn't know the vlog out today. Rounds on Pearl. So DFM clearly a team What are that the maps? does not get upset by dropping a map here and there. They're able to bounce back. They keep their heads in the game. Yeah, and to kind of highlight, like the Well, post-play situations of things we know suggest is good. Like we've all seen it. There's no doubt in anybody's mind that he may be the best duelist in our region right now. Potentially, he's destroying everything. I mean, nobody's able to really hold a candle against him so far in that. Mic is not working, or what? Matchup. I don't have Only the had two second one. matches. Also Now, they both beat they both lost to Genji. Excuse me. At least DFM took one map off of it. It's a map that Genji beat. RRQ on, so I wouldn't be surprised if they go to Fracture, but for DFM to get through here, to get across the finish line, I think one of the biggest things today is going to be the clutches, because in every 1v1 that DFM had, so you talked about this earlier, right? Divide, he kind of pushed PERIPHERALS over the line against DFM in these clutches. Yeah. Against Gen G, they didn't win a single 1v1 clutch. So that's really telling for DFM that if Suggest isn't alive, which oftentimes he's coming out there getting a couple kills and then dying, then they struggle beyond that. So we need a little bit more depth beyond that. Hi Kushal. A little bit more, WCG, hi Viper, I'm doing good, bro. How are you doing? Welcome to the stream, bro. Good morning. What's up, Nerf? How are you doing? By the way, guys, for those of y'all who don't know, Nerf was the one who made the thumbnail. Nerf is the one who's making thumbnails for us. A big shout out to him. Thank you so much, Nerf, for being there. Thanks so much, Nerf, for doing everything for free.
crazy to be able to help them get. Where you that at? I'm at first the victory new under their bootcamp, belt. bro. The new But bootcamp I'm place. hopeful that RRQ will show improvements because they have Increase had your those and the moments. streams on a bit. By the way, oh, is it? And I'd everything like like to that, where say suddenly it's just naya like, okay, bootcamp, naya Alienware just bootcamp, got a naya 3K on a Upper sheriff wala and a pistol bootcamp. round, and now they're set up to go ahead and they take this, and then they Pretty done. streak together. Maybe they convert a bonus, and suddenly they have like a And then 3-0 the start upper and a wala half, bootcamp. and you're like, okay, maybe this is the time, and then it falls apart. So The upper wala bootcamp, guys. So naya wala liye the na udhar hu main. I'm in the above bootcamp. Oh, by the way, guys, Adam got this for me. Adam got this for me. The Razer Death Adder V2 Pro. It is a bit heavier than the G Pro, but I think it's Gucci. You know what I mean? Bootcamp is shifting. Bootcamp is not shifting, bro. We've just taken a new place. Where is the VCT watch? But that is why I switched back. As soon as I realized that, I switched back to normal screen. That's what I'm searching. Others ने group में भेजा था CC वाला group में. They only I'm searching. Yeah. And hey bro, can you send it again? I can't find it. Too. Is the new bootcamp the same building? Same building, first floor, bro. Same building, first floor. Oh, found it. Ah, that only, bro. Found it. Sorry, guys. Been long time. That's why. Fixing the shit of the sheets. Wait, should it be only under the camera by the way, Pranay? Should it like be only under? Yep. Is the new bootcamp? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. again, abysmal. I thought that they were going to end up being the 10th place team in Pacific after their performance at Lock-In, but I think that they have shown overall the most growth since then, and it has improved. It has continued. Moving Suggest over onto Primary Duelist, best decision that they've made. He looks so Hands clean, down. he looks right at home with it, and the impact that he's finding, I think, is just so overwhelming. It's No, so it can be anywhere. big That I that don't know. I can't
bootcamp, by yeah bro, going the for new RRQ. bootcamp. I'm mod expecting दे this दो to be हर a stream close में one, आता mind हूँ you. I don't भाई. think that this is going to be a काफी blowout by any काफी means. I mods think है that भाई this is already. likely going to Sorry. be a 2-1. I think that we're Why going to did see you some leave the epic old moments. bootcamp? Because there was But no space. And to be I do honest, think that DFM in the end are going to be able to take this we because they did, this is have not as a well new that bootcamp. We've just taken perseverance one more of floor upstairs dropping with a 3 map and still bedrooms being just able for to people bounce to back sleep and then here. crush their opponents for But the only second my time. And I PC liked and what you're Bum's talking about PC earlier will with be like PJ, here where RRQ needs to do a better on job top. setting him up. That's something that I think Bootcamp DFM tour does a when little I'll bit do better. today, bro. Setting Suggest up. Yes, Suggest is nuts Hi by Prasail, himself. what's We've up? seen it. Welcome to the But a stream. lot of it gets started because Anthem or Zenfree in particular are the ones setting him up with their utility. From there, he's मुझे खा able लो. to, ठीक है rocket सुन पाओ forward. जी. But मैं what's हल्का really सा interesting about RRQ, real quick, मैं teaching हल्का a सा lot of डाइट point of में था, contact but आप आके for the फोर्स side of करे तो RRQ. खा I ही need to लेता see हूँ. some counter utility here to deal with Suggest for them if they're going to win this. Yeah, I mean, the reason I went with RRQ, I do think I agree with you completely about DFM, Seth, about their improvements over the last 2 weeks. But I also believe that RRQ Security knows कौन है? that they need to. What get is it the role together, Bum and in VLT? I trust that What is the they've role been of Bum in working on VLT? it, and they know Caretaker that of Lord this Bathura. today is pretty critical. Caretaker this of could Lord be like Bathura. that first wave of wins for Looking them. low on So energy. it's Mom, good to match see, not honestly. started When yet, you're bro. in the Let the situation where match you're playing games that started. both of Look your at the also flow of motivated, the it energy, does bro. add that much more Let's pressure on go the team, because at the DFM. end of the day, one of you is getting separated Let's from the go. other. ऐसा होगा. So I think that both teams are Bathura quite secret good, behind which is losing why weight. I There's no expect that this secret is to be where they honest, end bro. up going to 3 maps. Just There's say no no to a lot of one to things back that you've been down. eating to be But very, to your very point, simple. I To mean, put I it in think like that very RQ, simpler they do words. have a coach with a really good head on his shoulders. Iwaka's been doing a great job of just continuing to melt these players together and get them to be synergized, calming in English for the first time. And we have seen that, move upward. I'm just not sure if they're keeping pace with the But FM to as far Victoria as the growth only, is bro. concerned. Victoria, Yeah, bro. Actually, what is your It role? is Build? Are you VCT1? CC or you I professional? think so. So Ashish, I joined the organization as a content creator, then stepped in or subbed in as their 6th player for the roster, then tourneyed. I mean, coached one tourney where they went to win it all. We won the Sky Esports Championship under me being the coach, and later after that, I started helping the content team with directing and writing scripts, which is I directed and wrote scripts for the Excali's announcement and for the announcement. Yeah, I pretty much do everything that I want. Also, mom's the message I sent on WhatsApp. Any update on that? Right now, I don't think I can get in touch with anyone, bro. None of them are in touch with me. A lot of them have developed egos, so I don't really want. Yo, what's up, Nachiket? Where are you? अभी नया बुक कैंप है जो ऊपर है. मतलब नया बुक कैंप मतलब ऊपर और एक फ्लोर ले लिया हमने. We just rented a new. Just rented it. So that's what I've been doing for VLT. तो इसका टूर हो जाता तो हाँ कर सकते हैं मचा. सो बेसिकली वो करते हैं, मतलब इधर अभी तक पूरा सेट नहीं हुआ, बट लेकिन ऐसा एक छोटा वीडियो डाल सकते हैं. छोटा सा हिजेट ऐसा मत देख. जो समझा समझा. आई म्यूटेड द वीडियो बिकॉज़ इसकी वजह से कॉपीराइट आता है रे. Extended bootcamp. Extended bootcamp just means in regards to time. I don't want to go in regards to time. You understand? टीजर डाल दो फिर प्रॉपर वीडियो डाल देना. उतना उतना कोई नहीं देखता भाई. लॉर्ड बथुरा एंड लॉर्ड एक्सक्यूज मी प्रेम्यूसिस. सैलरी सिर्फ एक जॉब का मिलता है या फिर यू गेट द सेपरेट सैलरी फॉर ऑल द रोल्स यू प्ले? I only get salary for me being a CC, bro. But whenever salary, in case whatever I receive, and let's say that's not enough, and whenever I need money, I just ask Anna for it, and they just give it to me. Or I have friends who I ask money too, and they send it to me. So it's pretty chill. अरे तो ऐसे ही तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा ना, वो भी तो बात है ना. Yo, your energy at the VLT watch party was next level. Much love to you. Oh, yo, thank you. I can't eat more though, unfortunately. I can't eat more though, unfortunately. G vs Zeta कब है? G vs Zeta is tomorrow, bro. Tomorrow, I don't know if I'll be watch partying here or if I'll be going to G's watch party. Thinking because it's a 1.5 hour travel and मैं वो form नहीं fill up किया था, so इसीलिए पता नहीं मेरे को क्या scene. Mumbai watch party कर रहा हूँ. No, watch party will be there in Hyderabad only. Squads just trying to get that first win under. It started, wait, isn't it on display screen?
When will be the next match of VLT? I think playoff start from the 15th or 16th. Oh, Flipside, my man. वो क्या क्या डाल के आया रे वो रेटिया? आंख में कुछ लगाया उसने. EJ and suggest. Is it EJ the duelist? Why can't you? Why can't I? As in Mukesh. Left out of the 14? No. Oh, start on the 14th, not on the 15th. Are you? I thought. Is it 40? I thought 15th. I heard somebody say 15th. But is there any other approach that I can take on this? I have no idea, bro. So being very, very honest with you. I have nothing in my mind. Matra bhai, Kushal ko thoda time out de do. क्या हुआ कुशल भाई को? कुशल भाई. Speeches that you can give to your players before a match throughout this entire year now, just given the circumstances that both teams find themselves in. So trying to get everybody उसको कान पे हाथ रखा, उसको कान पे हाथ jazzed up, रखा. देख focused into the game. सच में इधर देख किधर हाथ रखा देख वो देख. But I think like Takate's Takate's got a hands little are low there, real low, yeah. below the belt. No, I mean Keeping like it cozy. yeah, it's okay. I'm sure Cup they're for success. everybody's really close with each other. Like, look, you gotta. I mean, I think like both of these teams have shown that they have the energy, they have the the drive to do it. It's just. Also, when in the next episode was coming, I guess episode is face spinning. I have no idea. I'll ask and tell you. हाथ गरम कर रहा है bro. Natural hand warmer को है. To be able to bounce Feel the velocity. वो कर रहे हो bro. They haven't shown me the ability to adapt as often. Any vlog from Watch Party in Hyderabad? So there are 2 vlogs that will be coming up. One is me going from Mumbai to Hyderabad with Anuj Bhai, going to Adna's house. That's vlog 1. And then 2 on the day of the watch party, what all happened, a tour of the place, me losing a game of 8-ball pool to a subscriber, all of that. We captured it in the other one. Oh, I'm so happy. Batu, my favorite streamer to DC join now, Batu, please. Favorite streamer, who's there? Again, I get it. Yeah. It's probably been going well for you in Wait, script. T-Bone? T-Bone is live? Pearl for DFM. Match का पहले So, feel I ले mean, रहा these है. are maps that we've seen DFM play very recently. RRQ as well. We saw them versus Zeta, able to take Haven, so they're still feeling pretty inspired there. So we'll see if they can close it out. I felt like DFM might go Have a fracture, vlog, thank you so but I much. guess they thought maybe that right now their Pearl is a little bit better, even though they just dominated Gen.G. Maybe they don't feel as confident. Shit, what are the Ascent is maps? I final. forgot to It's see kind it of again. interesting. These are A the lot of actual times hand DFM warmers, has guys. been shying away from Ascent so far this season. So for them to go. Those are like the actual hand warmers. At the end is pretty interesting, but just shows that splits works. Yeah. In their mind. I mean, when we did see RRQ play Ascent, that was Hey versus Shraddha, Zeta, ended up हिंदी going आप पूछिए जो भी हिंदी में आप loss. कह रहे हो It was आपको a pretty हिंदी में close जवाब one there. दूंगा. So I'm curious to see if they are. Hi bro, Mohan Ram, I'm good. How are you I am a doing? little bit Welcome to the concerned stream. about the Pearl. I mean, DFM kind of got bullied by PaperX in their Got first some insane series. graphics, I'm not gonna lie. After they had selected to take us to Pearl. That's actually insane graphics, I'm not They're gonna lie. Obviously, expecting that they have improved the faults that they had on that map. So we'll have to just wait and see. But as the agent Those are actually comes in, insane we get graphics. Haven, we get Suggest right back over onto the Jet, going head to head with EJ. Yeah, so just the Omen versus the Astra, so both teams are. Wait, they are. Yeah. Oh, wait, they have mirror comms. Again, Shit. what I find really One mirror interesting comp, about the way right? RRQ plays this is that गोवा से तो 2 ही ब्लॉग आए. Bro, Nachiket, I really got demotivated to post more, bro. I shouldn't have. I should have posted more, but I'm sorry. I'm being very honest right now to you. Trying to get things done. I got really demotivated to post more. Being very honest. It is, There's no question. Yeah, it suggests. So Yes. I'm excited to see this clash. And I think we all are excited to watch this Insane is clash. also I low, bro, believe next the level. casters are ready. Who? Huh? Today we've got William, and for the first time, this VCT Photoshop isn't Pacific, maintained. we You'll got have to buy through the tasteless other ones only, bro. casting. Just like how we Hello, used to buy boys. before with cards. Bro, you know what came in my night market? Excellent work over at the desk. Yes, this is my first time casting here. This stage is insane. You know what? Now, if I have my night market, in my night market, I have 4-second knife, 4-second vandal, and recon phantom. ये तीनों मिलके मेरे को almost 4000 के अंदर मिल जाएगा.
So I have the 4-second knife for I think 2057 VP. I have the 4-second Vandal for 17 something, 17 or 16, 15. The 4-second Vandal for 1596 something. I have the Recon Phantom for 1197. I can like literally get and the opponents everything they faced so far, this is absolutely a must-win with like for below both 4K. teams. Now, last match, RRQ had some success here on Haven. मेरा मॉम का अकाउंट है अच्छा ठीक 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 We'll see how they fare against आपका नाम क्या है DFM. बताओ I mean, आपका DFM नाम did से impress बुलाऊं me when आपको they were playing against Gen G, right? The way they were counter-stranding, the way they had prepared So wait, a lot of Haven? their movements. So curious to see how RRQ now Mirror is comps. prepared against Detonation Focus Me. I gotta say, both these teams, although the scores have not Even been in mirror great, comps, the games Killjoy that set they've up brought towards have B. been very impressive. I think it's also Early fair to say aggression that, towards A with breaches you stun literally coming start up A teams that lobby and so definitely are hit the Recon weaker going up A half, the long. lower tier of all the teams that are Normal. here. But this is an important match because I यही think मैच में हम याद है आपको MLT के against we did the C-long aggression with the same thing with the C-long aggression. RRQ is ready to push back on this A attack here. I mean, they are throwing all sorts of stuns here to catch members off guard, and they get Zemfree. I mean, that's the smokes player out of the picture right away. In which case, you know what? Gravity Well plus Fault Line, not Look a at how bad fast they investment. rotated, bro. As soon as they saw the this thing, look at how fast their reaction was because they know that there are 3 people towards A. outside of A. On the other hand, we've got RRQ coming in very slowly. Still, Oh, they didn't check. And Takajay takes out. But they're not checked, dude. What? All right, well, Okay, that was a thankfully they blunder. still had a pinch, so not That was a too blunder. much damage taken on the side of RRQ. Now, they have to expect A-Link at the very Namaste, bro, least Sage God. because of the plant position. Do they suspect Anthem, though? Okay, we're gonna have them come in Oh, right no. now. A nice shot from behind from Reyna. And another kill. What? Suggest takes him out. 1v1. Now down to a 1v1 here. Could go either way. Has to fuse. Oh, what a retake If coming there was from ever a them. But it player was a that good RRQ try by wanted Rita, here, bro. last alive, it's That guy gotta got be an Zephyr. instant I mean, 3K, he's to been be putting honest. up amazing numbers despite the losses they've taken so far here in Pacific. Of course, that pistol round is so Nice important. try, though. The impact of who But you wins guys that saw how overall fast the through the- rotations were? How fast the That rotations really were could have towards gone back. That was either a way, really but good ultimately aggression, it bro. was going to be an RRQ win, a clutch Oh moment. wait, did I say Great mirror start to comps? this Well, they team. have Astra and Omen, my bad. So, I mean, They don't not have checking a mirror comps. couple of the corners, but at No, the no, same Sudesh, time, done, credit done, to done. Detonation, right? They tried to take as much space as possible after that plan, and yet, because it came down to a 1v1, Zephyro just able to get the half right before he wants to peek out again. Are they doing Now the classic RRQ, garage of push? course, they've bought up. They have 2 Bulldogs, so they're trying to roll their econ as much as possible into the coming rounds. So they're going to play just a much safer default position. Just let Garage go, right? We can still block the entry into C. They're actually watching C-Link, so they're not too worried about the space being taken. Yeah, Garage currently smoked out. It looks like they're going to pop through window, maybe take a peek just around the corner here. We've got Lemore waiting. And another shot, spike dropped, as they're going to get cleared out pretty quick. Hold it down, Amazing bro. setup here from Elmimore and Flips, just peeking one Well by played. one. They kind from of either expected the side. garage push That and they ensures set they up the actually don't ceiling even and lose a B-Link single member. push. They actually don't lose any armor either, which is huge. If they can go with a flawless and not take any damage, I mean, they go in, save all of their creds going into the bonus round. Rieta just hanging back here right now, trying to see if they can maybe get a pick. Oh, they are not taking any Yeah, chances. they're not going to waste any time here. And, you know, to what you were saying earlier, William, you're right. Look at the amount of discipline Not that they just have, bro. that Even they was knew a win, only but that they really one took guy was no there, damage at they all as they still dropped made a sure single they player. stunned That's out gave and them a they lot of peaked 3 momentum together in the round that I think at this point in time, Detonation because they didn't want to lose win, any but guns. they That's the got amount of advantage discipline that we lack, to coming be into very this. honest, Gotta bro. see if they can pull it off. That's Yeah, I the mean, I would discipline say that we should get in more the so SA than scene, usual. SA They kinda have scene, to and the win Asian without scene. losing any With members, or so they much just wanna discipline, there's hear, literally like RQ so players much. just So pop आपको off. mistakes बहुत कम करोगे रे. Now, I तो पता would कितना say बड़ा this advantage is देता है वो probably the scene. time I get a little concerned for RQ. They tend to get a little overexcited. Reality का at match times, कभी so है? we'll see I if they can think keep their on the energy in check, 15th, but, after the anytime like after you the said, all 15th. things point to good signs. I mean, DFM, they would need to win this round. I would say theoretically with The these recon four भी people मस्त है remaining bro. alive. Hey, The let's recon not cheap forget, man. RRQ had a very good start against Zeta on map 1 in their previous match, but they were not able to compound that advantage into a victory overall. So, looking strong, but let's see how this pans out over time. Oh, Flips is actually prepared for a flash here. They've already taken a lobby, and Flips has his back to the entrance, so he can swivel if a flash comes Oh, through. look at this crossfire, bro. They shouldn't go and they're falling into a And of trap, course, dude. Zephyro Very hard to watching break this, his to be back, honest. So this is all sorts of setup here. Flips is the big one here. Oh, shot He down got immediately up, by bro. EJ out of the picture, fighting back. Reyna takes Bro, out EJ another made a one. mistake. So when you're not, Yeah, when I you're mean, like he not was in a crouched bad there spot, right? and You you can't get uncrouch, you spammed can in see those there, boxes, bro. so Yo, he needs to try papa. to find a way to get out. He actually gets caught right before the dash goes through, and at that point, Flips has no option but to try to peek.
Oh, you know what? DFM, they might be getting the flawless that they need. I mean, B site is open. They smoked off both sides. They have the weapon advantage, and most importantly, Taki J is already sitting back, Miracom's ready execution with be his same. lines. No, it need not be the same execution, bro. I mean, there are limited options that they can do. But let's say one comp with this, one team with this comp chooses to do A, but the other, let's say there are three possibilities. One chooses A, one chooses C, like that. It is not a given thing that it should be the same execution that is going on. Yeah, I mean, RRQ, your goal here is to just get a couple kills, right? Bait out all the utility you can. Waste as much money as you can by just constantly tapping on this, but what a good one-way coming in from Zenfree. I mean, they will always be able to check if it's a fake or not. He has to save, he has like 1 HP left. And Anthem gets the closing kill, That was a good. allowing Detonation to start to come back. Yo, Anurag bhai, kaise ho? I'm doing good, I'm doing good. How are you doing? How are you doing, Anurag? You know what? I hope you're Both good too, teams are man. actually okay now in Your this con has round been because pretty they both crazy seem though. so many Props to the threats. team. Usually when we get to this fourth round, we're okay, well, The this song is and all of that. real That's deal. posting up. They I've been both have a watching little them bit of lately. margin. Pretty good. DFM Cheers to that. being a Props to the little team. healthier on their economy management, though. Yeah, so far the ebb and flow. The utility usage might be same. Yeah, yeah, they can expect it. That's what I'm telling you. There's not a lot of possibilities that they can do. Like utna अरे तू वनीला आइसक्रीम में तू सिर्फ बोनविटा हॉर्लिक्स और चॉकलेट सॉस के साथ खा सकता है समझ रहे इन तीनों में से एक में तो खाना ही पड़ेगा तेरे को something like that very easy to like that something like that it is. And then the team who invested will say, well, we got to save Wait, the op, this is but the we time can't where I really impress resource Anurag that Prana or to go take for me up as a retake. caster. Now, They start casting? DFM, No. their most ideal scenario, I think they expect the op, which is why they're hiding. And if they can take A-site retakes are already hard, but if EJ has to come back in with an op, it's nigh impossible. So you can see EJ is going to peer up here. This is to sync up with the drone that was coming forward. This is a very aggressive move. And a whip shot If he had to scoped the and dome. gone, EJ is taken out. If he The had op is scoped and now gone, out of the bro. picture here for RRQ. And they cannot recover it either. And this was a really good position from Zenfree, because that's a bit of an off angle. He's actually pushed up way more forward than you would expect. So EJ not able to zoom in on time. Flips just trying to save the site for as long as possible. Backup has arrived though. Wait, why did Flipside and get caught there? Oh, wait, did he try to help him out? That's Now, good though. they get the plant. The spike has now been dropped and marooned over in this Nice. All right, Zafiro made it a 1v2. This is doable. Elmimore at full health. 30 seconds left. Now, Elmimore wants to get a kill before the plant goes out. Enemy remaining. Guess Good what? shot. Let me more. 1v1 situation, but Rieta takes him out in the last second, getting that spike plant, and now evening this up 2-2. That all goes. Which team are you back supporting? I'm to supporting the RRQ, but I same just got a little bit operating confused to procedure. that attacking thing. That's why I said nice. And maybe a little bit of an I'm supporting unconventional RRQ, move, bro. but that Flips doesn't Shader, bro. Our man you Flips, take bro. those risks and you might pay I for it. met him on GRX. He's a pretty cool guy. Yeah, I mean, listen, you checked short, no one was there, and obviously the whole goal with an operator is that you're kind of eliminating an entire site on a 3-site map like Haven. So eventually you do want to push out. Bro, wait, That's when you true. put your But, rings, you can EJ, still I wear mean, it- this headphones or smoke what? credit, I think, to Zenfree, right? And the setup that DFM had, this was calculated to try to just pounce onto that operator, and now RRQ, not only are they on an eco, I mean, it's going to be kind of back and forth rounds here if they want to try to always save up for another op. It looks like they may try to creep up into B. Where am I? Where am I? I am You in have the EJ, new bootcamp, bro. New bootcamp is head over in to the this upper position, floor getting of the first old contact, and bootcamp. instead they're gonna quietly నిన్న లూనా టీమ్ navigate ఫుల్ towards బుల్ ఎక్లాస్ Garage. పూచాను I like this from DFM. వాళ్ళతో I ఆడటానికి don't స్లాట్ think ఉంటే they're మళ్ళీ gonna ఛానల్ పైకి hard వచ్చేసి commit right నాకు away, but they're scouting this వాళ్ళతో out because మాట్లాడాలి if there's no one here, the opponents are on an eco, right? So they have a shorter weaponry, which means, okay, that's like the riskiest spot you could enter is Garage. If that's clear, we can enter this open site on C and just take control of it. Yeah, I mean, 2GE now pinched. They already know he's there. Yeah, 2GE does stay back for a little bit longer. Suggest is domed and taken out of the picture here, as it still could go either Oi. way. Uh-oh. What? This got pretty messy. Oh, Bro, they got echoed. Let's go. Zavero! I mean, RRQ with an excellent retake. I mean, before the plant happens, right? They come in with the flashes right before DFM is able to actually take position, and we've been seeing this more and Bro, more. that recon and starting that with flash Lock and over here literally on the C site. literally got them the round, bro. And William, I like what you were saying earlier there. When they pushed the Garage, they identified this as an eco, then they knew they were comfortable with the proper smokes to move That into the recon C and the site. flash got them the But round, talk bro. The about recon's really good revealing that gunplay guy here while from RRQ. Recovering EJ just and come and winning mowed that them round, down, taking bro. the lead 3-2. Okay, another operator. Now DFM has a read on this. They expect another push out from Garage. This time EJ does stay alive, though.
Oi! Elmimore Let actually me more. steps back. He was actually just trying to protect EJ, but he actually gets a kill onto Taco J, so that's a cherry on top here. Right through the wall there. We've seen Suggest as pop. मैं भी ऐसे ही खेलता And they need to get some जैसे value out खेलता of ना that. full aggressive So it's player going हूँ to मैं be भी a quiet समझ रहा हूँ rotation down towards the A side of things. On the other side here, Zephyro's waiting around the corner. A smoke comes out, and he spams through, actually getting some decent damage. Yeah, this Oh, was so taking really one just to more, try to bait them into walking through Flipstrider's How many ults do they have? crosshair Rita over there, does right? Just trying can't to play with spam this through after the smoke can't to play make after them plan with the ulti really that he pay has right now. attention to that long sight line. They're not really paying attention to the close one in time. Flips gets a double. And now, look at RRQ. They've flooded A site because they say, okay, we have the numbers. We can always retake another site, right? B, even if they plant, what are they going to do? Two people both sit back far. Elmimore just trying to get the spam. I like that idea as well. But even if the plant happens, I mean, RRQ, they've got nothing to lose. And they're staying grouped. So that way, the operator will always be recovered. Yeah, it's a great way to roam here. EJ drops Rita. The flash of an eye, leaving only Zin free. Do you think the 1v4 will be clutched, bro? Yeah, well, Zemfree. Yeah, I mean, it's G probably को just gonna 7 be मैच safe. से It'd be कितना great मैच if you जितना can जितना plant on बड़ा the map, much maybe, I don't know but much. that's also pretty risky, I'm right? very Yeah, very no very intel on frankly where I they don't are know, at bro. all. And the way that RRQ set up, I mean, obviously Zemfree doesn't know this, but we look at the minimap, not only are they now covering B and seconds. Garage Bro. and A, but then Killjoy's in range to activate all of her utility on C side as well. So Zemfree, I mean, DFM's economy is actually a bit of a hodgepodge right now because of the way they try to balance it this round. So a good save, a must save, quite frankly. And now they have kind of similar ults on both sides. I like this timeout because last round, the reason DFM Minimum doesn't 4. invest it See, there is you go. at most you're just trading ults. No, This no, was let's a round that streaming was RRQ was better. theoretically supposed to win Start this anyway, part of the- so that's fine. You want that? Where is he? It's on. Did you not do watch party? अयो देखो ये बात ये स्टार्ट भी नहीं किया हेलो 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 can't hear it. I don't know. Sorry, Keshav. Leave EJ on one side. I almost think maybe you just leave EJ on one side, make sure he has an escape, try to bait out the opponent's ultimates, and then push out from the other side. They're actually just going to go a very safe route. Oh, that's a bad default utility to set What up a foot I EJ. ate, dude. B is covered with the alarm bot. Nothing too tricky here from RRQ. They're trying to go more of a stable route than they've shown so far here in Pacific. Yeah, we're going to see if EJ pushes any further down to A long here, but I think it's becoming pretty obvious that C, at least for now, is going to be the target. Some spam shots here from 2G, not quite connecting yet. No, I see what RRQ wants to do. They're going to try to set up for the Rolling Thunder as soon as they hear the plant go down. They just want to hold back sight. Yeah, they're just trying to block them from coming in. Flashes on both. Oh my god, this is a great round here from RRQ. Only Rada remaining back in the smoke, some shots spammed out there. This round is over as RRQ with a dominating performance, only dropping Alienware. RRQ is getting back to the form that they've been Read playing, to off be of that honest. Bro. timeout. They suspect that as long as we can plant the operator, in worst case, we can trade Rolling Thunders on A main and just buy time. But if they don't push A, then we do a quick rotate. So as soon as EJ takes control of main, we saw on the minimap, everyone rotates over to C. They just hold back sight, which forces actually the Hunter's Fury to come out. So they not only bait out the opponent's Sova ultimate, but then they're just holding the site and they just simply cannot take control on the side of DFM. The planning in the timeout clearly wasn't enough. They've drained out ultis. They've lost another round. The operator still in the picture as EJ is now rotated into B. Oh, and I like it, right? EJ there, but then even if he dashes out, now you've actually invested extra Killjoy utility. Now, the only danger would be Garage, but the turret is also spotting that. On top of it, Elmimore ready to make sure at least window of Garage is
under RRQ's Discord control. that. And then meanwhile, they've pushed out a main. So this is the type of Yeah, ebb and flow Discord. we've always wanted to see from all the pro teams. RRQ's always Keyboard shown is that they coming. understand Sui! the theory of this, but this is one of those maps where we finally see them execute it in a clean way. Once again, detonation collecting over at garage here. Immediately, EJ takes out Rita. See, coming here from Oh, Just stay no. alive, Elmore. Hello, No sorry, need to sorry. greet that, EJ. Actually, Hello, just can you trying hear to me? make sure that, Hey, what's up, you dude? already gave up the site. So they can actually put down the What's up, lockdown. Taklamon? Jess? Oh, sorry. Yeah, lockdown is set up here, and that is going to be keeping RRQ out at least Bro, for to the time clear being. one Oh my garage, they are gosh. taking DFM 5 shot. minutes. Why? It's doing damage. It's trapped them. They're 2G good gets a players kill and off good of team, it. bro. हमारे जैसे Fuse पुष्टा नहीं started है, आप बंद halfway. Is he करके. just going to hold it? It looks like he. Oh no! At the last second, Takachei shuts him down, Yeah, but Flips is creating so much chaos. and that's going to be it. Flips. यार Oh, भाई हो retake था गया. भाई. Beautiful round there, 6-2. यार retake था भाई, कुछ As भी we बोलती are हो. भाई हो गया about to go to the DFM, मुझे ninth लग रहा है. round here in the first half. I got to say, RRQ is RR very तो much in मस्त control form पे आ गए रे of वापस. this series. भाई attacking NHK हो रहा है बे. Exactly. हाँ, what they वही talked about मस्त during खेल the रहे हैं timeout. लोग. But the fact that they were still aware of the opponent's utility and their ultimates, right? So they empty out C-side, and then Flips is already on the flank to distract them. Because the only place they could Even be by- main, because EJ was holding C-Link. Even So by that Full means as Bajilish Flips way, just constantly RRQ, draws their attention. finals को You know, watch they're not party going आ to be रहा able to do हो anything. RRQ, they are on Finals a watch party Delhi में होगा four-round ना? streak now, and Finals they are watch party reading किधर होगा? them like a book. It was a तो beautiful दिल्ली में ही round, होगा round, भाई. really. And so this is going to be an eco round हैदराबाद here में for वापस detonation. हो तो रहा है. लाइव करेंगे ना उधर जाके. प्लेऑफ्स में तो अलाउड है. Miracles do occur here. And it looks like it's going to be a slow start. मतलब बटर as we get कॉन्फिडेंस ball देख रहे हो rolling अन्ना. for them. फाइनल सीधा Yeah, बोल you रहा know, a है. lot I of love times it. Seriously, in bro. rounds like this, you I want to love take it, Bhatura. first or I second love it. pick. Try to get भाई easy तो picks बटोरा on मत out बोला करो guys, यार, try to please press bro. ठीक है ना ना भाई. on same TV ही है. I called you my Yeah, inspiration so and all you can bro. tell You this remember is that? तू मुझे टकला बोन बोल सकता है. हाँ, मैं भाई- तुझे बटूरा नहीं बोल सकता. तू जो है वो बोल रहा हो भाई. वो क्या हेयर कट है? ड्रेक है, ऐसे- ड्रेक. ड्रेक है. साला ड्रैकुला का चड्डी लग रहे वो. Zafiro, I mean, really Drake just don't बोलते हैं. let go of God's a plan. link, right? No reason Oh, to try to oh, stop the plan that's oh, already gonna man, happen. great. Oh my Bro, God. कौन बोला इधर It's a DFM massacre short team over है? here. NHK हो Spike रहा है. has now been dropped as we only have Takachei remaining. No, Shots but into with the window, the not enough. ये The Sheriff RR finds को back. थोड़ा गंदा खेल रहा था रे. अभी फॉर्म पे आ गया वापस. हाँ ना? हाँ, RR को थोड़ा गंदा खेल रहा था. मेरे को भी लगा DFM कहाँ जाएगा, बट ये तो उल्टा सीन है. ये तो ऐसा लग रहा है तेरा वो टॉप ट्रैकिंग वाला सीन है ना, ऐसा हो गया है. मुझे क्यों तोड़ा भाई? That was just a beautiful arrow there. Really, that was the moment that What's won up, the Rupert? round. Welcome, Obviously, it Macha. was a Hey, Hail Mary play there in that eco round to try to come in with the spring attack onto B. टीबोन, तू हम खेलते हुए देखा ना, हम पूरा सिर्फ वो टैप या बस्ट करने देखते हैं. ये लोग देख क्या बोल रहा है? हम जब भी खेलते हैं ना, तो देखते हैं ना सिर्फ वो टैप बस्ट वगैरह करते हैं, वरना स्प्रे में हक देते करके स्प्रे ही नहीं करते, रीसेट कर देते. ये लोग को देखना भाई, स्प्रे ही करते हैं वैंडल लेके भी. ओके. सब लोग तू देख वैंडल लेके भी स्प्रे ही करते हैं. अरे मैं भी तो स्प्रे ही करता हूँ. अरे तेरा स्प्रे अलग है अयो. भाई कोई भी डॉट क्रॉसर क्यों नहीं यूज कर रहा है यार? को पता. हाय बात कैसे है? Oh, you got out alive? Wait, मेरा sound नहीं Making होता. sure they clear the close angles. लॉर्ड टू डैश वेस्ट हो गया. हाय 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 देखा मैंने Alright, EJ there's a देखा. shot there. EJ takes out Jinfree Takachei. Takes Smoke EJ free back man. out Oh as my well. God! Bro, that so is crazy, dude. Zafiro hides in the smoke long enough to get a भाई 4 साहब kill. ये है It's कौन? wild. These Bro, spam their Sova is shots crazy, are dude. हाँ भाई, Till this date, is the best Sova is Leo by. Sensor arrow to Till try to date. figure out exactly where they are. Bro, nobody can beat Leo, dude. Are being set up with that. right to I mean, they knew Zafiro was in here, which Bro, is why they Bro, entered this is the together. second But time he actually Leo did. hides in the ये second furthest time कर रहे हैं, possible पता है? ये angle जो in the smoke के अंदर smoke. खेला है They ना, actually purposely entered ये literally from second two time कर रहे हैं different ये game में. sides.
And Zafiro Setup is change अलग just room shift one हुआ. step हाँ, नया ahead of them. bootcamp This लिया था was ना a round ऊपर that DFM had पे. calculated and planned to win to try to make नया this a bootcamp semi-final लिया था first ना ऊपर. half. नया bootcamp And so we मतलब go to the पूरा next floor ले round. लिया था ना Sheriff उसके अंदर. buys here as things are looking extremely Back, dire Killjoy. here for Detonation. वाह दो का दिया Killjoy ने यार. Right through the shoulder suggests it's already out of the round. Bro, how I is mean, that possible, Melvin was dude? spamming the Odin just What to do, kind bro? of Hashtag cover Valorant. behind. It's cheeky. We see it कुछ now नहीं and कर then, but it सकते. does work. Because, I mean, what are you going to do? Really Keep sad, against the dude. Odin that's firing 100 bullets? That pretty much guarantees your death. So, I mean, RRQ, here's the thing. मिलेगा एक और When they kill. hit their stride, मिलेगा. they look good. The reason they've always क्या looked to me- drive pick कर रहा है? Oh my Such a gosh. sick shot from EJ. In the middle of moving as well. Oh. Yeah, and this is the thing. If they hit their stride, they hit their shots, right? Their comms are good. The times that RRQ breaks किसमें down is देख when रहा the है? opponents start to pressure them, start to create a Switch, little baby. chaos, and then हम RRQ, उसमें भी देखो you know, मेरे the से whole, पहले तेरे को कैसा obviously है? they're coming in a language that's not any of their अरे first Bagus, sir. language. Things like that, the cracks start to show, but right now, DFM is actually Nah, giving bro, them same so much pattern. जैसे time. हम मारते हैं ये लोग भी ऐसे ही use करते हैं. Nasty नहीं double तू kill देख there. 3 भाई. bullets, if they miss, they spray. That's RRQ, it. the last No, one no, saved. no, you wait and Half watch, health bro. with a sheriff. Not this and all, bro. They're against. And gets another, They're but against unfortunately not pistols. again. Watch in game 9-2 round. here. Watch in like what do you call buy round, not game हम round. बोलते हैं headshot गया हो. Here, with an opportunity for Detonation to maybe get a third win, but this So is this is looking the international so scam. difficult. Really, EJ with his operator shots. We saw him fumble a little bit early on in the ये first देख डॉट half, क्रॉस but है he पूछा has था ना ये completely यूज कर and रहे थे. totally made up for that. It is getting kill after kill after Take it. kill. Yeah, I mean, EJ, you can tell. The other thing is EJ, You much think, more, bro, there is showing much no more way strength DFM today can than come he back, has dude. in certain other There is maps no that way. we've seen so far in Pacific. And, you know, at this point, DFM, I mean, I think it's more about trying to regroup and figure out why and how is RQ hitting their stride. And part of that is the fact that DFM, they're actually playing such a slow default heavy attacking side that RQ can just inch forward, you know, clear out A main and then stack everyone on C just like they are now. खाया खाया खाया. Another nice shot there into garage. Meanwhile, EJ ready. Oh, beautiful shot. Takes Suggest out again with the operator. Backup is तेरा here और एक as लिया तो well, so EJ EJ इंसेन है safe. भाई. EJ अभी भी जिंदा कैसे है? Whip around the side here, 2GE, pops off, and this is almost Bro. over. भाई खत्म है bro DFM. Oh my, रहने दे. Always sad to DFM be the खत्म है. last Sova when your team is Bro, down in this defending much. they It's took 10. 10-2 right now. RRQ is in perfect That too, it was form. not double Yeah, I mean, sentinel this lineup is also. It the was best single they've looked. sentinel Now, lineup. again, Yeah. I keep having to mention, it's not that Oh, DFM but I don't know. I is think DFM looking खत्म bro. all out Pack of up sorts or only. whatever. It's simply the fact चलो that चलो they're PRX game actually लगा. playing RQ's game. You know, जल्दी खत्म होगा तो PRX game for लगा. RQ to just sit in their comfort. Bro, I heard T1 is And then crazy. they're zoned in, right? EJ's super focused. I mean, he's Huh? hyped up. Oi. You can hear it in their voices. You can see it in their cameras. I almost got to Oi. say, if it's a 10 आवाज आ रहा है? tasteless, I'm already looking forward to map. Hello. ये नहीं नहीं. Figure out if you're Oh. if I'm I heard DFM, right? You T1 say, is crazy okay, even well, than PRX. T1 is crazier than PRX. Bro सच बताऊं? हम्म. I don't know bro. Chat बोल रहे थे इसलिए. शायद ये भी बोलते हैं तेरे को फिर जॉर्ज मजा जॉर्ज आएगा तू bro. जॉर्ज है. जरा मास्क हटा दे तो cuties. Bro, C virus is rising cases again bro. You saw on news? Oh yeah, I saw. Bro, in India में. Maharashtra 7,000 cases in one day it seems bro. Why? मैं गलती से भी मुंबई नहीं आऊंगा. एक बार एक्सपीरियंस काफी है. पूरा तू भी boot camp तेरा भी खत्म पॉजिटिव करना था? पूरा बूट कैंप खत्म करना पड़ा. अन्ना भी लग ये सीसी हेडेक हो गया यार. अरे क्या तू पॉजिटिव था? और क्या बूट कैंप फुल बंद 15 दिन. और तू अंदर था? बूट कैंप मैं और रुचि ऐसे. राज आया मिधर की 10 पीसी मेरे पास. हाँ? That pistol That's round, easy. I mean, it's just Okay, hard last to two. imagine any set आटो of के लिए एक scenarios छोटी where सी you रूम could साइड. recover. Yeah, now I गांड पड़ती थी जब भी मैं आता था नीचे. ए मता 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 मता. Lol dude. map or the next coming round. So, you know, I'm not saying that RRQ is looking the best we've Oh, ever T1, seen. you know no new bootcamp, no? Hello T1, you know no new bootcamp, no? है? ये कब हुआ यार? New bootcamp ऐसे नीचे हम थे ना. अरे वो ना. ऊपर वाला ले नया लिया. घर. हाँ नया घर ले लिया. So you are staying where now? नया घर. Oh हाँ क्या? Yeah bro. So how many rooms are there? 3 BHK. एक In one डोमा room. एक एकल्स एक No, तू. no. In one room, Eccles. In one room, Kali, DM, Tyson. In one room, me and Shubham.
Stay short and garage. Right, we're about to get into this. शुभम कौन है बे? And, तेरे को yeah, I mean, कैसे there's so इतना much कौन more है to मतलब go क्या here, but बोलो it's so exciting to see the Yeah, different yes, play yes. styles interact with each टीसी other. नहीं and है seeing he's what regions, he's working for us, he's helping us. really come out on top. Oh, nice Nice shot किया. Success, by the way. He starts it, तो ये कर. getting that beautiful headshot with the Sheriff, and it looks like it's Comeback going हो to be सकता है a भाई. push to be. Yeah, I mean, everyone's already here for DFM RQ. They have to flood this. They have to flood it fast and hard if they want to keep control of B. They're all trapped. But they do have frenzies. Whoa, is it a Oh comeback? my I God, beautiful cannot round. smell Okay, it though. starts. How मैं far सिर्फ can फ्रेंजी it खेलने वाला go? हूँ. मैं सिर्फ फ्रेंजी खेलने वाला हूँ. You know भाई what? मैं भी I mean, frenzy 3 switch frenzies, करके मैं 1 अच्छा खेलता था frenzy. यार. Why does it matter? It's a frenzy एक after सेकंड all. क्या बोला आपने? Reyna able to get मैंने क्या बोला फ्रेंजी खेलते हो उसके बाद क्या बोला आपने? अरे मैं अच्छा खेलता था फ्रेंजी. अच्छा खेलता इन था. लोगों ने बोला वो टुस्क टुस्क ले लो, उसमें ही आगरा. टुस्क टुस्क क्या है? का ग्लास मस्त है यार. टुस्क टुस्क क्या है? Let's move on and let's get our aim warmed up. Well, now it actually gives them a living chance. Hey शुभम T-Bone, डोमा का रियल नाम है. I forgot डोमा is from इधर. I forgot your this thing bro. कीबोर्ड लेके जाना था ना तेरे से भूल ही गया था भाई ऐसे ही आ गया. हाँ जी. I was supposed to take keyboard from you and go no. Oh bro, that I gave already. Whom you gave? Straight to it. Oh then GG. Hey, Eclipse, what's up, dude? Hey Eclipse, what's up dude? Most likely, if the plan did go to B, we would see DFM start to push out. What's up, Eclipse? How is it going so one-sided this match? Because I'm watching. Oh my god, dude, I'm asking. This smoke we It's the legend is Bro, उसने jump किया ना इसलिए इधर उधर हो गया. वैसे भी करते हैं. Hi Eclairs. Hi Eclairs. Hi, Batu. Yeah, but they've already done a decent amount of damage because DFM, they bought 2 Bulldogs and a Phantom. What's up Bubam? What's up Sahil? Yeah, and they've lost 1 Bulldog and Ignore a पे Phantom. कौन That ignore goes किया to भाई मेरे को? RRQ. कोई नहीं ignore RRQ किया. can definitely win this वो round. भाई कितना BT अंडर 11 में जिंदगी भर नहीं खेलूंगा भाई. कल भी बीट हुआ मेरा. भाई मैं आज से अंडर 11 नहीं खेलने वाला हूँ. डर. आप खेलो ही मत. That is a better option. नहीं मैं अंडर 11 नहीं खेलूंगा आज. भाई कल ना भाई कुछ नहीं कर सकता अंडर 11. एक तो फ्लैश होता है, डॉज नहीं कर सकते. उसके बाद We don't have a वो VNT रहता है artist strike server, की. bro. We have only Wow. we have a collaboration with Soul City now. Go to soulcity.com and you'll find all the details there for how you get whitelisted and everything like that. And it has nothing to do with you completing your studies or not. I think I don't know. Yeah, I think soulcity.com and you'll find all the details to get and everything. I think so. I'm not sure. I think so. Now, on the side of DFM, right, you bought 3 rifles because that was the only way you were going to try to make a comeback. Wow, sure, brain I lag think हो so. गया. You're back in position to just say, all right, just practice on your aim, let Haven go, right? I mean, obviously do your best, but don't fret, right? We picked our pick on map 2 for Pearl. Let's just do what we can. Let's work on our comms, right? This is where sometimes that hidden role of the IGL इतना comes in. slow रे Just बाबा. regrouping and say, well, let's focus on what we can control right now, which is our aim and our comms. And Hey, that's what Pranav. needs to show, and we're seeing that, How right? you They're making doing? the Welcome to the calls stack, stream. Good and they're morning. covering good angles for each other to trade. And I think that this gamble-ish play is a smart way to try to recover in what seems to be kind of an unwinnable situation. Let's say that we did have RRQ just rush into A. Despite having inferior weaponry, this is a moment where they can create an advantage for themselves because of the heavy stack on A. Now, it looks like we're actually going to see that opportunity present itself as we start to have more and more movement down A long and into this position. Yeah, it is interesting because RRQ is thinking because none of their utility got tripped on the other side, they can enter safely, but they're going to be met with a really bad surprise here. They don't think Raider's here. They have no क्या idea. खेले बे ये round. Oh भाई साहब. They're ready to clutching that moment. भाई साहब. And again, Bro, you stack that many how that corner was not cleared? He did aftershock, no? But hold on a No, second. aftershock How was is not on that shooting corner. this bad is what I'm wondering. Yeah. अभी तक तो सही So- खेल रही थी. It was 2 to They 1. had So to. what So happens Jet went there dashing is, not well, T-Bone. He has Raiders to able turn get right, check kills. 1 second, and No, then dash into the neither smoke. he nor his Jet teammates mistake. recover the rifles, so they couldn't actually fight back. They were still just Hey, only on their aftershock sheriffs. किया ना उसने. And now it is a 2v1, so RRQ, they should be covering each other's Miss backs. कर दिया. There we go. डॉट में हेडशॉट मारना बहुत डिफिकल्ट है यार. कुछ That भी हो. is that 12 to क्या 3. बोल रहे हो? I'd Dot say में that's, easy headshot one मारना. of the funner rounds in The some ways. bigger But crosshairs see are that used setup, for spraying actually better. work, and, it's a way to, when you probably lost the game, to try to play around वाह the मैं odds म्यूट करके is बकबक obviously करते a ही जा रहा हूँ popular अपना ओपिनियन को.
God. 11-3, bro. RRQ is back in form, bro. Flips Jader. And even keeping the Omen out there to lurk. वो कर I रहे हैं उनके love साथ. you, bro. तो ओल्ड बुट कैंप इतना का क्या है? cool 7 खेल BHK रहे हैं बे है. ये फिर लोग, भाई हाँ? ओल्ड बुट कैंप is 4 RRQ, I BHK. mean, they are by far the happiest we have seen them since VCT. As soon as I said DFM No stepped doubt up, why. Lama. This is one of their strongest showings so far in a single map. Now they're just gonna rush it down, change the tempo मर because गए. they still have मारो. threats for the next round. Now EJ does get taken out, but I don't think RRQ is gonna give up on this because they don't have a way out. They have to commit. Well, things are starting to look better and better here for Detonation. कुछ भी कर रहे हैं. As they're really just not able to get out at all. Yeah, भाई भी RRQ में. Just looping all the way around to A. भाई भी RRQ में. So RRQ, because DFM Why? doesn't like, chase them down, they Wait, actually T1. have an opportunity to rotate. The reason they're not as obvious as हाँ. they seem to तेरे को rotate पता is because RRQ का they're एनालिस्ट just भाई भी है. mid and A, right? So they're just saying तुझे just आज stay पता hard चला. committed, जल्दी हाँ. बता. wait हाँ, for after मेरे को अभी this पता event चला. RRQ. behind, and if not, if the turret क्या? let's just अभी let's पता just चला push मेरे को. forward. मेरे को अभी भी लगा वो एनिंग में ही है. Trade some kills. All right, well, They get it's, two. it's not over yet. 2 to 3 here. If they plant or get a kill, Bro, they'll get the see. Road Thunder. Never go in smoke, dude. And Never. once again, so good at the lurks. They do get another win, 12 to 4. T1 नाइट मार्केट कैसा था तेरा? It is incredible how good Huh? it is. Bro, I got some whether it's inside good one. बुड्ढा बुंडा. Good. एक्लेस मतलब तेरा? सब कुछ है तो क्या ही आएगा. एक्लेस तेरा? मेरा तो बेकार ही रहता है हमेशा. क्या आया? वैसा एक भी नहीं आया. I got Prime Bucky. नहीं रहने दो. आपका गुड वाला How's लिस्ट से yours? प्राइम माइन क्रेजी ब्रो. 4-second knife, 4-second vandal, recon phantom. Oh my god, that is so good. You got Forsaken Vandal and what else do you want, dude? 4-second vandal, 4-second knife and recon phantom bro. Sorted I am. What the हैं? तीनों मिला. Alt waste हो गया क्या? ये लोग तो ये जा रहे हैं. Bro, look at this fake, no? That's how you can fake bro when you don't want to Man, like. that's a crazy fake, dude. बट ये लोग को लेट कर दिया ना. उधर पता चल गया उधर नहीं आ रहा है. Saying, wait a minute. Yeah. ये लोग अभी आ तक गया साइड ना. के अंदर होना था. मिल गया side. And so here they come into A now. Yep. Bro, I So don't that's think the he good should lead, have but of course, sprayed smoke that. comes in and you didn't have further backup. So they're just gonna have to wait. आया shock dart. DFM, they do अरे have वन मत enough खाओ to रे get a बाबा. good retake. Nice one, baby. Nice round. OG out. Hunter's Fury triggered. But it's actually not doing much. Why did he use his ये ult round now अच्छी है. itself? To hold them off, but they actually jumped down from heaven in time. Beautifully done. Half From done. Top player है भाई इनका सोआ. Use restarts. Oh my god. Anthem, God. the last तीन मारा इसने. We're Oh. 9 to 4 is how this story ends. Yeah, it started with Zafira on the वो pistol. क्या मारा बे उसने? Zafira Man, cleaning इसका up सोआ crazy over है. here on round 17 to इनका make सोआ that crazy है. scoreline, and हाँ भाई कुछ भी बोलो RRQ crazy तो है. showing a dominant इनका सोआ performance crazy है. here on Haven. Now, even if you thought, this might be a close match or cetera, or ठीक है, you लेकिन- might have even tried to root for RRQ, after seeing DFM and especially Suggest pop off देखो, last अभी week, तक तो you अच्छा had to खेलती imagine हालत है, this अच्छी अच्छी scoreline हो we गई would है. never भाई see का again. दाढ़ी अच्छा है. ये कोच है एनालिस्ट It's है. wild. A real incredible performance. Obviously, most of that was इनका really hair just the देखो first बे. half of Haven. और एक as it आपका was hair just देखो. RRQ kill after टीबोन kill. का hair है. Able to find ओ वेट the एक्लेस वो तू नहीं recently बोल Drake- सकती. तू Drake नहीं बोल haircut सकती. करा है ना. तू हेयर का बारे में नहीं बोल सकती एक्लेस. आई एम रियली मैं सॉरी. तो बोलूंगी. हाँ बाल तो है ना जैसे हाँ भी है. पैरेट रंग वाली. बाल तो है ना. हाँ मैं भी है. पैरेट रंग वाली. It's okay, dude. I just have better taste than you do. क्या वो श्योर. Cutest mask क्यों पहन रहे हैं? Right, and then DFM would just be left without a उधर choice ब्रो in उधर the with no ये intel वायरस on वीरस the नहीं. other उसके side of the पहले से ही map. सब So मास्क पहन के रहते RRQ हैं उधर तो. playing to their strengths, हाँ they क्या? clearly हाँ. like this map, they know how to Asian play it. countries में usually Meanwhile, पहनते ही थे DFM, लोग. some of ये their देखो weaknesses चैट showed में up एक बंदा in को the लग रहा है भाई. आईएनडी मत आईडीएन I मतलब gotta say, इंडिया. DFM, they लेट्स did गो not आरआरक्यू perform इंडिया इज well, प्राउड but लिख रहे. Suggest still looks strong, had some amazing Fuck. kills in there. We saw some great बहुत खराब है. strategic ideas at play, even when they were बहुत Drinks खराब नहीं है कर रहे यार. क्या watch party? bring a Yeah, Link's just उसको बोलो playing. तो कल करेगा. as we go into Link's match just playing. I don't know Yeah, why. I mean, while RRQ was firing on all cylinders, like you said, DFM, it's not भाई उसने What's up, Ravel? 24/7 bro. But Badra, will you buy? Bro, No, bro. I'm not buying this shit. 24/7 I they're don't have so this. I can't. More you ask, the more I'll say, 24/7 the they're more I'll so. feel. But don't even ask. You know how much money I have. How much money? Fuck, sorry, bro. So what if तो है भाई? ये बंदा सच बोला. Bro, सच्ची बोला भाई. सच बोला. टीबोन भाई, ये लोग आपको पता है ये लोग सब ये सब कब चालू किया? याद है हम टीईसी बैंगलोर में ये सब कर रहे थे?
ट्रेंड सेट किया हाँ आपने, ना, ट्रेंड हमने सेट किया स्टार्ट किया हमने, भाई, हमने ट्रेंड सेट किया, समझ रहे हो? हमने स्टार्ट, अरे टी से मैंने स्काई में किया था स्टार्टिंग। हाँ मुंबई वाला स्काई में ना, हमने हाँ 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 मुंबई वाला स्काई में। भाई सोवा ने 24/7 मारा उनका। इवन भाई याद है वो ट्रेंड भी हमने स्टार्ट किया था, नीचे बैठने का। नीचे बैठने का ट्रेंड भी हमने स्टार्ट किया। हम ट्रेंड मतलब वो ट्रेंड नहीं स्टार्ट किया, हम डाउन टू अर्थ थे वैसे, बात तो है। डाउन टू अर्थ थे वैसे, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट अन्ना ऊपर अन्ना सोफा बैठ रहा, हम नीचे बैठते थे वैसा। अरे नेक्स्ट गेम कब चालू होगा बता दियो। ब्रो अभी तक CS2 नहीं मिला। ये CS2 नहीं है तेरे पास? नहीं। चाहिए क्या? तेरे पास है? हाँ। ऑफिशियल अकाउंट में मिला तेरे को? नहीं रे, दोस्त का अकाउंट से। भाई ऐसा हो सकता है क्या गाइस, मैंने अपना पूरा आइटम्स भेज दिया इसलिए वो लोग भी दुख में नहीं दिया मेरे को। नहीं तो ऐसे भी दोस्त के अकाउंट से खेल सकते हैं ना, वो CS में कैंसा स्पर्फिंग का ये वाला वो वाला सब है। लेकिन अपना अकाउंट्स में हाँ, खेलने में अलग अपना ही है अपना यार। स्किन्स में खेलने का तो हाँ है, बात तो है। तू क्या सब सारे स्किन्स भेज दिया तूने? हाँ कब का भेज दिया भाई, वो आराम से अकाउंट का 5 तो लाख, वो अकाउंट का था ना, आराम से 5 लाख। वो ट्रेड अकाउंट का, वो ट्रेड बैंड का उसमें अकाउंट मैंने का। पीसी बिल्ड किया था पता है, नया वाला जी जी। स्किन्स बेच के पीसी बिल्ड किया, कितना अच्छा बंदा। ला 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 ला। Something unto the next starts. Smoky. Last scene, last scene. Wait, Killjoy is C alone. I need your utils. I want to enter. Portal closed. I can flash it. कब होगा यार रिलीज? समर बोला, समर मतलब क्या होता है रे? अप्रैल एंड रे, अप्रैल एंड बोला तो था उन्होंने। बोले आप? समर अभी समर है क्या? They said April end. Yeah, this is summer only, bro. This is end of April. Oh, April, ah, this month end. Yeah, yeah. Lol. ये तुम लोग यही सिखाया ना, ये DFM की जर्सी में सबसे ज्यादा लोगो है ना? लोगो नहीं, लोगो। स्टिकर्स, हाँ हाँ, DFM का स्टिकर्स ही था। कितने स्टिकर्स होंगे वे? कब है मेजर्स? टीसी मीडिया सेक्शन 4K टीवी 50K लिंक डाला। करने लीव करने बाहर आ जल्दी आ गया ना, आ गया। बेंच पेंटाकिल। स्टेबल है जा ब्रो, 30 आएगा वरना। शायद सारे ऑर्गन से ऐसे ऐसे बात हो रही है, 30 आएगा वरना। शायद सारे ऑर्गन से ऐसे ऐसे बात हो रही है, टटी करनी है, टटी नहीं करनी है, नहीं मालिक स्ट्रीम कर रहे, टटी करनी है मालिक स्ट्रीम कर रहे, टटी करनी है मालिक स्ट्रीम करनी है, टटी करनी है मालिक स्ट्रीम कर रहे, टटी करनी है मालिक स्ट्रीम कर रहे। अबे कहाँ है बंदे? प्लीज अभी टटी नहीं, अभी टटी नहीं, मालिक स्ट्रीम कर रहे, मालिक स्ट्रीम कर रहे, टटी करनी है मालिक स्ट्रीम करनी है, टटी करनी है मालिक। अरे बस कर भाई, ऐसे कुछ हो रही है बातचीत अंदर। पेंटाकिल। ए यार रे, वरना मैं टटी करने के लिए जा रहा हूँ। What to something released to? What is that trailer, bro? Such a big thing and trailer like that? Where is Huh? Pushpa? That one only, no? Bro, Did you what see they could have that? done better.
हाँ, Oh. that's a teaser actually. I feel. वो डिवाइस वाला Teaser 3 मिनट का रखना ही नहीं. I haven't watched so many of these guys vlogs, right? This model comes with the 2 screens. तो अभी यहाँ क्या है कि अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन, तो आई कैन चेंज द स्क्रीन. मुझे स्क्रीन यहाँ लाने के लिए सिर्फ क्या करना है, 10 फिंगर्स को क्लिक करना है और यहाँ मेरे पास कीबोर्ड भी आ जाएगा. अब इसके अलावा इस डिवाइस में हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो ये जैसे जो डिवाइस है ये इट कम्स विद द ओलेड डिस्प्ले. दोनों ही जो डिस्प्ले है वो ओलेड है. दोनों की ब्राइटनेस को मैं खुद कस्टमाइज भी कर सकता हूँ. इट हैज़ एन 5 मेगापिक्सल ऑफ कैमरा और इसके साथ जो कीबोर्ड है वो ये तो ऐड है. Oh, Raka vlog में DJ है इसे. I thought it was vlog with spawn, bro. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत मजे आए. बट वेट, मेरा तो हेल्प करवा दो ना. लेट्स गो वाला कैसे करते हैं? लेट्स गो. व्हिच लेट्स गो ब्रो? डिवाइस वाला कैसे करते हैं? उसने मजे बांधे पूरी कैब राइड में. गुड़गांव में लेजिट बारिश नहीं, ओले नहीं, बर्फ जम गई थी भाई. ऐसा फील हो रहा था कि 2012 मूवी नहीं आई थी जिसमें बारिश होती है, फिर बर्फ जमती है, फिर धरती खत्म होती है. वैसा सा फील आ गया था मेरे. नेकलेस 413 आ रहा है. उनका ओमन तो एकदम आपके जैसे केले 650. नेवर माइंड. आज का सीन ये है कि हम आए हैं. और कुछ क्या, कल हमने कैरी किया कि नहीं? सच्ची सच्ची बोल. मैंने भी क्या. वाह, क्रूशियल किल्स मारा हमने. मैं और मेरी सर हमेशा रहने दो भाई. मैं और मेरी सर क्रूशियल किल्स मारे कल. और ये फीडबैक थी. आप और आप एक सेकंड में बियर भी. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक चीज में बोलूंगा, तो करेगी. लॉगिन कर, कल की लास्ट गेम देख लियो, पूरी जनता को दिखा. ठीक है ना. लास्ट गेम क्या, लास्ट गेम पे आप 22 किल्स थे, मैं 17 किल्स थी. तो आप वो कैरी नहीं बोलते 5 किल्स को. उसको इम्पैक्ट आपको पहली गेम में क्या था? क्या पहली 23 kills, डेथ्स भी बता दो. 7 थी मेरी बस. अभी इतना आने में को Yeah, we're trying to look for diplomatic words here. I mean, it was definitely a team role. कितना kills? पहली गेम में क्या था? Yeah, but it wasn't always like that. There were a couple rounds where, you know, we saw a bit of. उसमें ओटी तक गया जो मैं क्रूशियल किल्स लिया, वो तो भूल गया. भाई छोड़ दो भाई, फास्ट इज फास्ट. अब मैं क्या बोलूं? वाह, मैंने लाया. वाह, स्टार्ट किया उसने, मैंने लाया. वाह, really aggressive out of sewers here by himself without, you know, much support. You had the Sova there trying to get a little bit of information, but they're going to wait out this smoke. Meanwhile, space is being taken here by DFM, and there's an operator in the hands of EJ there in a sewer, and he's eventually going to peek out, and they're just waiting for him. I mean, you can see DFM, and this happened again in a couple more rounds after this. It didn't go so well for DFM, but here DFM able to find this kill as EJ starts to push really far. They're feeling comfortable. They didn't have enough information, and this is what I was kind of alluding to with EJ. Like, he likes to get kind of frisky there on the edges. But to कहाँ से stream कर रहा है बे? I'd say for someone, a lot of times they're going to be kind of floating on the flakes. Yes, they want to take contact, but ना सिगरेट फूकेगा. आजा. Yeah, I mean the drone wasn't enough to you know to garner any information. It was used so deep back on long. भाई बूंग्स वाच पार्टी नहीं कर रहा है. It just doesn't. टिबोन आपको नई जर्सी कहाँ से मिली? But fortunately for the side of RRQ, these mistakes were few and far between. That one was kind of right off the rip in round 4, and then from there everything was incredibly. जरूरी है कितना ओवररेटिंग करना? Particularly beautiful round by Flipsider. बट तू कहाँ से स्ट्रीम कर रहे हैं बे? In a second here, once we roll the clip, and this is, you know, we get the spike plant.
planted. चलो DFM, they भाई find नया themselves in bootcamp on में the C एटलीस्ट side कर here तो in है round number 8. They go for the post plant, but जगह तो immediately है blink and you miss it. I mean, Flipside was on this flank, and then he just sets up for the ए most भट्टू आवाज आ रहा है glorious हेलो flank play that we've seen in a very long time. The rolling thunder across gets damage out with the aftershock, and he's just keeping everybody busy. They get the hold on this defuse, manage to take it over to half. Takashi finally does find the straight headshot, but then they're so rattled they don't know which way to look. DFM, नया जर्सी लिमिटेड प्लेयर्स के लिए and then they just steal it all away from them. It was just perfect. ऑल गुड play. शोभित So, भाई अभी बतूरा की स्क्रीन खोली है जो कैरी करते हैं ना टीम को उनके लिए मिलता है बस अरे चुप but that did not तो last. आपकी आवाज आई ए लूना व्हाट्स अप बादशाह हेलो आई एम द बादशाह भाई स्पेनिश सीख रहा था मैं भी बैठे बैठे क्यों बिहार ऐसे में तो क्या स्पेनिश चाहिए कभी तो बिहार से निकलेंगे भाई लाइफ कैसे यार बिहार में बताओ ना यार अच्छी है भाई लाइफ एक्चुअली अच्छी है क्या सीन है ब्रेकफास्ट में क्या फेमस है बिहार में बोल सकते हो अरे बिहार हमें तो हॉस्टल में खाना मिलता है सब मिलता है भाई नहीं मतलब यूजुअली जैसे अभी साउथ में डोसा वोसा मिलता है हाँ बिहार में लिट्टी चोखा कुछ तो फेमस होगा लिट्टी चोखा वो मैंने खुद ही नहीं खाया ढंग से अभी तक ब्रेकफास्ट में क्या ब्रेकफास्ट हमारा डेली डिफरेंट रहता है भाई बहुत वैरायटी है खाना पीना सब बढ़िया है एकदम सेक्सी सच में ये तो अबे ये तो इधर भी मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं मैंने पद्दू पद्दू बोलते हैं इसको हाँ लड्डू टाइप होता है ना मैंने खुद नहीं खाया लिट्टी चोखा एक वही चीज फेमस है बिहार की और अभी रिसेंट न्यूज आई थी पटना रेलवे स्टेशन की है चटनी के साथ खाते के शायद यस just trying to react to it, but can't. Then it's perfect crosshair placement towards sewers. He's just all over the place. This is phenomenal work here, top to bottom from Xpharaoh. I mean, just utterly astounding from him. And I mean, for the side of DFM, someone shoot the dart. Seems like a good idea. Look at these stats: 4.1 KDA. The guy who's dropping so many kills. मैच हुआ नहीं है अभी चालू What's the most absurd thing for me? 243 is nuts. That's two players with half armor pretty much every single round. ये केरला का फेमस है एक लेट तुम भी सीखो स्पेनिश मजा आएगा He's going to be trading them up all the time. No, but this was just such an incredible impact. अरे शोभित भाई गेम गिफ्ट करो ना मैं गरीब हूँ नीड फॉर स्पीड अनबाउंड हाँ अक्टूबर में आया था 3-4 महीने हो गए खेलने का मैंने बट भाई गरीब इतनी अरे उसमें मिलेगा फ्री एनएफएस अनबाउंड अरे पास में मिलेगा नहीं है पास में नहीं है देख लिया मैंने भाई हर जगह देख लिया कहीं नहीं है गरीबी map draft here, but now we'll have to see how things fare as we get ready to go into Pearl for map 2. Yeah, it was 1-0 bitch. It was a lot too predictable for DFM there. I mean, you can see time and time again RRQ just like चैट तुम आते किसी को स्पेनिश अरे भाई मजा आ गया डुओलिंगो सीख रहा था ऐसे बैठे बैठे काफी सही है रोज एक कर लो यूनिट हो जाएगा आराम से अरे इजी है स्पेनिश भाई क्यूटा बोलना 2 लाइन स्पेनिश तो इजी है सेन्योरिटा और अभी स्ट्रीमिंग रूम भी नया है क्या बट्टू स्ट्रीमिंग रूम नया है क्या अभी देखा मैं तेरा स्ट्रीमिंग रूम नया है हाँ तो उधर नहीं है अभी एक्सेस इधर एक्सेस क्या बोल रहे हैं मतलब उधर से नहीं कर सकते नया मतलब नीचे से पुराना वाला से नहीं जगह ही नहीं है नीचे से क्या कर रहे हो बत्तू भाई जगह ही नहीं है जगह दलित भाई गाली दे रहा है मुझे जगह ही नहीं मचा नीचे वाले में ठीक है आपके पीसी में कौन अभी है कल से बैठ रहा है हाँ मेरा पीसी में हाँ 21 Toma, Eccles, DM, Helef and Kali and the other PC dev and अंदर जो पीसी है वो रूम में जिधर फाटू बैठता था उधर प्रणय और वैष्णव तो वो हाँ वो प्रणय और वैष्णव का हो गया क्या तो ऊपर यूफो कहाँ बैठ रहे हैं फिर यूफो उसका रूम पे ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला जो उसका रूम है ना उधर बैठ रहा है आदर्श अरे वैष्णव का कोई बोलो भाई फोटो दे दे भीख मांग लो उससे फोटो नहीं देता बहन शो मेरे को तो दे दिया उसने आपने दिल्ली में का फोटो खिंचवाया लोड़े हो क्या आप
अरे जो हमने मुंबई में खिंचवाया। तो वो तो भाई मैंने ही पोस्ट करा था टीबन भाई। अभी और खींचे उसने ब्लड लाइन और मेरे फोटो है। You bootcamp Mumbai right, but Mumbai only, bro. In Mumbai above. Same bootcamp नहीं भाई में बच्चों ऊपर वैसे वाला floor. ठीक चीज है पता है। 1500 वॉचिंग डुओलिंगो करो बच्चों, रोज थोड़ा दिमाग भी शार्प रहेगा भाई। दूसरी लैंग्वेज सीखो, कुछ करो लाइफ में 10 मिनट डेली। डुओलिंगो मैंने सुना है साला यही जर्मन होता है, सीखने यही में होता है। ये वेबसाइट में भाई 10 मिनट तक स्क्रॉल करते रहते हो, पेज 10 पे पहुंच जाते हो, क्या देखूं क्या देखूं सॉर्ट ऑफ। डुओलिंगो वही है ना जो लैंग्वेज सीखने के लिए। हाँ तो डुओलिंगो का क्या मतलब है? 2 लंड थोड़ी होते हैं। तो दूसरा लिंग होता है भाई। अरे मैंने ये डाउनलोड किया था जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नहीं मैं तो पीसी पे बैठा हूँ, तब से सीखने मैं के लिए। वेबसाइट पे कर रहा था। अच्छा है भाई, मजा पुल्लिंग आया मुझे स्त्रीलिंग करके। यही होता है टीबन हाँ भाई, दो यही लिंग। होता है आईआईएम जाके आने के बाद। आईआईएम जाने के पहले लूना कैसे अरे था नहीं देखो। भाई भाई कल भी डायमंड्स मेरे को मार रहा है, प्लैट्स मेरे को मार रहा है, अभी देखो डुओलिंगो। एक्चुअली सेन्योरिटी स्पैनिश सीखने का झूल सोच रहा रहा था हूँ पूरा। मैं। हाँ भाई। और मजे बैंड में की झूल रहा था कल नहीं स्टेज बत्तू, लेके। मजे की बात, ये तब से खेल रहे हैं, ये डायमंड्स में झूल रहे हैं, मैं असेंडेंट देख रहे हो, जो खेलता भी नहीं गेम। दिखाओ लॉगिन करके। हैशटैग आईआईएम एटीट्यूड है टीबन भाई, कुछ नहीं कर सकते हम। पर नहीं भाई अब तो लेकिन शरीफ हो गया मैं। लूना भाई यस। आप शरीफ हो ही नहीं सकते हो, बिहार वाले हरकतें तो है आपके अंदर। नहीं भाई बहुत शरीफ हो गया मैं। ये तेरे कॉलेज में बेब्स थे क्या बेब्स? बेब्स वेब्स नहीं है भाई, भाई हम पढ़े क्या लिखे बेब्स भी नहीं नहीं है, हैं। लूना का स्टोरी हेलो नहीं कर देखते लो क्या? थोड़ी, हेलो। लूना अरे का स्टोरी देख पूछ के रहा हूँ खुश हो भाई, जाता था मैं। नॉलेज कल प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ इसलिए। कॉलेज का बा, प्रोजेक्ट है, रिसर्च कर रहे हैं। भाभी को करूंगा मैसेज, अभी कह रहे बेब्स ढूंढ रहा तुम्हारा पति। पूछ रहा था भाई एजुकेशन पर्पस के लिए। हेलो हाँ एजुकेशन। मैं गया भाई। Okay, I am curious. How long does Takajay stay ओ here? भाई We're studying our ऐसे वॉल education, डालनी we'll be चाहिए, याद renovating रखो bootcamp guys। for new. So this is we've taken a new place, bro, because that place got कल भी filled तो up. वर्ल्ड ऑलरेडी देखी नहीं भाई, कल इतनी भसड़ मचाई ने इन्होंने पूरी रात, खूब आर मचा है। Sending 2 extra people to B. You've got Xfero watching B Link as well. And so now you kind of just have to let A site go, right? Just buy time with the Killjoy utility. भाई ट्यूबर में मेरे हिसाब से आइस बॉक्स नहीं निकालना था भाई, फ्रैक्चर निकालना था। पता नहीं आइस बॉक्स क्यों निकाल दिया। नहीं है ये पर्ल है। अरे Dude, बे I hate icebox. Shit, man. नया वाला ओ अपडेट में नया वाला। अरे उन्होंने Bro, बाइंड में क्यों Icebox चेंजेस करे भाई? नहीं बाइंड यार, अच्छा था कौन जैसा भी अच्छा था। है? अच्छा है, कौन भी Icebox का यार अच्छा मेरे है। लिए सारे मैप्स अच्छे हैं यार, पता नहीं क्यों। Maybe हाँ, I'm मुझे तो ये watching हाँ, the- आपके लिए पर्ल सारे नहीं मैप्स पसंद। अच्छे हैं, सिर्फ आप बुरे हो। Big utility here for BFM, right? You've got the high tide. पर्ल छोड़ के सब अच्छा लगता है। बढ़िया था तू। आप वो भाई flip ये लोग side है। क्यों बोलते मैं बुरा हूँ साला 30 किल तो रोज मारता हूँ। हाँ सारे मैच मिलके मारते हो आप, हम एक मैच में मारते हैं। वाह भाई वाह। असले कल कैरी किया तेरे को। Takajay, can he get here in time? I don't think so, because it's actually planted over for Secret. भाई नहीं हो रहा भाई यार DFM। DFM इतना चौक क्यों कर रही है? चौको कर रही है। Being killed off there. भाई मेरे हिसाब से But once more, it seems like RRQ. वो इसका मेटा नहीं आया क्या इसमें अभी तक? Yeah, I mean RRQ. गेको यूज नहीं कर सकते? नहीं अभी यूज नहीं कर सकते ये टूर्नामेंट। डीएफएम का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ईएमई में तो शायद यूज हो रहा है ना ये। Where they're going. Now हाँ क्या? I thought their plan was शायद, पक्का नहीं पता। मेरे हिसाब से नहीं यूज कर सकते इसमें। the entry itself was fine. नहीं मैंने देखा था किसी प्रो मैच में, या तो वो ये होगा अपना इंडियन वाला देखो कोई तो यूज तो कर। ये VCL सॉरी कल नहीं खेलेगा ना रोशन? पता नहीं, कल तो खेलना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम तो लगेगा ना उधर। भाई बस लंबी जर्नी है भाई। अब वो भी सीख लो भाई, कोरियन भी सीख लो। कितना है हम guys? सामने पैसे था। बोल दिया? 17 घंटा ऐसा कुछ है। पता कोरिया नहीं। आई थिंक इट्स अ 16 आवर फ्लाइट। हाँ ईएमई में हो रहा है यूज, मैंने बोला नहीं, मैंने देखा है कहीं पे। यूज कर सकते हैं। अरे हाँ किसको मैं use अरे क्यों नहीं कर रहे ये लोग? मैंने देखा था किसी मैच में, नहीं ईएमई में। नहीं इसमें पूछ रहे इसमें क्यों यूज नहीं कर रहे ये लोग, हमारे लोग। अलग अलग रूल्स है ना, अलग अलग उसके। Close quarters, you know, it doesn't benefit them. Our, you know, DFM could come in fast and strong, so they're just buying time. शोभित भाई आपने कौन कौन से के ड्रामा देखे नेटफ्लिक्स पे? और मैं हाँ ये गलती कभी भी नहीं करने। बतूरा हैव यू वॉच्ड एनी कोरियन ड्रामा? नहीं ब्रो, उतना नहीं गिरा रहे नीचे तक जिंदगी में। अरे मैं वो देखा। स्क्विड गेम्स। Squid Game। भाई दैट इज नॉट अ के ड्रामा। इग्लेट्स तुम हाँ मतलब कोरियन शो देखा है ना? हाँ स्क्विड गेम्स देखा हूँ। तुमने कितने शो देखे इग्लेट्स? पहले बहुत देखता था कोरियन शो। भाई 3 तो मैंने ही देख ली। मैं तो अलग कोरियन शोज देखता हूँ जो बता नहीं सकता हूँ इधर।
हाँ वो कोरियन वो दूसरे शो होते हैं वो हाँ, वो तो भाई वो बढ़िया होता है वो शो। क्या स्टोरी लाइन होती है उसमें से। पता नहीं जापानीज शो थोड़ा ब्लरी ब्लरी दिखता है क्वालिटी का। अरे यार चुप रहे लूरा। चुप रहे कोरियन मैंने यार। देखा है, पहले मैंने देखा था विंचेंजो, फिर विंसेंजो देखा भी था मैंने अच्छा है। स्क्विड गेम्स। विंचेंजो विंसेंजो अच्छा था, विंसेंजो काफी गुड टाइम देखो। पास था। स्क्विड गेम्स अलग वर्जन्स भी देखा है बहुत। फिर स्क्विड, और मैंने भी वो देखा फिजिकल 100। फिजिकल 100 देखा किसी ने? कोरियन भाई क्या बॉडी ऑन में लॉन्डो की, ओहो हो, हैशटैग नो होमो। How are you? I'm good, Meghna. Hello. Physical 100 is more like a reality show. And now it comes down to 2GE. I mean, I would imagine you back out of here now that you've been spotted. He's trapped. Oh, he gets the dink. ओए एक किल कैसे लिया उसने इधर? ये होती है थ्रो। क्यों जाना था पिट में जाके? भाई वो रिसेंटली चूतिया सी मूवी देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे, चोर निकल के भागा। वाह वाह वाह, 9 IMDb रेटिंग है उसकी। देखी देखी। अरे भाई मैं 9 रेटिंग में नहीं, ट्विस्ट तो चलो फिर भी ठीक था। स्टार्टिंग में इतनी लोडू मूवी 50 मिनट तक, चोर निकल के भागा। राणा चोर निकल के भागा तो भाई क्या मूवी था। अरे भाई मजा आ गया था भाई। मैं सोचा वो ये नाम ऐसा गंदा है, देखो कि हाँ नहीं मैंने सोचा। सोचा क्या ही लौड़ा नाम है भाई। चोर निकल के भागा ब्रो। आजकल ना ये फिल्म नहीं ट्विस्ट थोड़ा अच्छा है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी टट्टी है भाई। स्टार्टिंग की तो एक्टिंग इतनी जहर है ब्रो। टू बी ऑनेस्ट वो ये डायरेक्टर्स तो नाम के लिए काम करना ही, ऐसे कुछ भी रख देते रे। मैंने तो का उसने चीका, ऐसा कुछ भी रख देते हैं। ये देखा क्या बाताल नहीं पता नहीं। क्योता बोला उसने, सुना? मैंने तो आवाज बंद कर रखी है। हो गया भाई, ये तो 16-0 लग रहा है। अरे चैट कुछ बताओ नेटफ्लिक्स पे क्या देखे हैं, कोई ब्रो मूवी वॉच बता ब्लाइंड दो साइड, वॉच ढंग की। ब्लाइंड साइड बोलो लूना। सीरीज है क्या है? नहीं इट्स अ मूवी ब्रो। अबे Blind ये Side। देख रहा Very है, good इधर movie, से bro. वॉल कर रहा है। वाह मैं ठीक कितना है चुप। इंसेन मूवी ब्रो, ब्लाइंड साइड, ट्रस्ट मी। भाई, मॉडर्न फैमिली के सारे सीजन खत्म कर दिया मैंने बिहार में रह के। यस नाइक व्लॉग्स। हाँ लास्ट ऑफ अस भी नहीं देखा मैंने अभी हॉटस्टार पे। लास्ट ऑफ अस तो गेम है ना? नहीं नहीं सीरीज भी आई है उसके ऊपर। वाह इसको दिखा ही नहीं। मॉडर्न फैमिली सही था, टाइम पास वो देख ले पूरा। फिटनेस क्या करती है रे तू फ्री टाइम में? सोती रहती है। नहीं तो फ्री रहती हूँ मैं। पूरा दिन फ्री तो रहती है। दिन भर के मैं इतना देर तक स्ट्रीम करती हूँ। हम भी करते हैं भाई, इसमें क्या है? नहीं They're trading out nicely. बहुत ज्यादा ही करती हूँ। I mean, if you क्या रोज 8 मैं भी घंटे तो 3 करती घंटे है? सोई हूँ पता है। Yeah, it's at least a कहाँ start, भाई? and now it's 2-2 here. क्या भाई बताओ कितना घंटा करते हो रोज And स्ट्रीम they've been to बताओ? weapons. DFM Wow, has that's short weapons. This model. is totally doable. ये लोग क्या कर रहे हैं? Oh my god. that भाई was- All right. लास्ट टाइम Viper's तो pit इतना up. अच्छा खेले थे। 5 घंटा तो कल मैंने स्ट्रीम कर ली। To close this out, you need a win anyways, but after burning through this ulti, 10 seconds Bro, left, you could have and spammed now it, it's man, that you. spot. चैट लिख रहे बर्तन धोती है भाई, काम वाली रख रखी इसने। Drew an outline of it, and that was भाई close. कुत्ता तो तोड़ो। Oh my god, that was उसको just a लगी ना crazy पहले? closer there. What a funny moment that spray didn't connect. Not a single bullet. भाई कुत्ता घूम के आके काट के गया है। अच्छी है मैंने देखा। Just around the top of the head. और जी देखो बे बढ़िया है। अरे मैं Perfectly shaped. some इंडियन defense कंटेंट over ज्यादा it. पसंद ही नहीं आता भाई, मैं बाहर के देखता हूँ Anyways, the ideas they're very good. IIM बिहार। पहले से भाई। IIM बिहार। यही देखना था। शिकारी होने देखी। पहले तो अरे पहले तो भाई बोल रहा हूँ ना टिपुन भाई, अभी भी हम बाहर जाते ना। अभी देखो पहले 3GP अब 4K। इसका गाड़ी में वो चलता था चिक्किनी चमेली, अभी तो पूरा ड्रेक ही ड्रेक ब्रो। गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान भाई ड्रॉक तो टिपुन भाई है हेयर कट के हाँ बाद। तो ड्रॉक ही तो चल रहा है अभी भी। यार फर्जी का नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है यार? तो कुछ भी बोलो, फर्जी में विजय सेतुपति भाई का एक्टिंग भाई था। मिर्जापुर वो मिर्जापुर का मस्त चाहिए। बनाया यार उसने। उसका ही वो है ना वॉइस ओवर। वाह या हिज ओन भाई वॉइस ओवर। भाई वो तुम्हें हिंदी तभी भी हिंदी में गाली दे रहा था ना, मस्त लग रहा था मेरे को। एक बात बताओ, जब इधर ही आना था उधर भाई मेरे क्या थ्रो कर रहे हैं लोग। तो मैं भाई हिंदी सीरीज देखने तो ऑल्ट वाला जी देखो। हाँ वहाँ मिलता कंटेंट।
feel like this is wild, and I think that Oh, you should have got that kill with the. punishes that. Bro, I wanna learn this wall, dude. How do Jet diff by jet diff. What do you mean you have to learn the wall? It's so easy. कहाँ से? Comes from pillar. Straight wall है क्या? Pillar. Unfortunately, not quite enough. Nah, dude, it's not pillar. It's from pillar only, bro. Controller is so irritating. It's not pillar, bro. I'm telling you, it's not pillar. Zephyr has to peek out and Yeah. get the kills. भाई क्या राउंड है? तीन मारा उसने. Dream scenario. He peeks out. तीसरा नहीं तीसरा तीसरा मारा सिटी से मारा था. हाँ मैं तो टी1 की स्ट्रीम देख रहा था, मुझे डिले में दिख रहा है. डेथ नोट देखा हुआ है अभी. डेथ नोट अच्छा है भाई, मैंने कार्टून देखा है बस. मुंबई कोरिया. और ब्रो? ओ भाई उसने तीन मारा. 3 या 2? 12 घंटे लिखा था ना किसी ने चैट में. 12 या 17? हाँ तो ले ओवर होगा ना भाई. गूगल कर लो, कंप्यूटर पे बैठे हो आप भी. मुंबई टू कोरिया. कंट्रोल ही नहीं दे रहे बे A-Sec 10 का. हाँ 12 घंटे से लेके और बड़ी है. 17-18 घंटे भी है. अभी 4 साल रॉसी उधर ही रहेगा क्या? हाँ. भूल जा भाई रॉसी को. हाँ. आएगा यार रॉसी. अब सोचो, अब जब रॉसी भी आएगा तो वो भी ऐसी बातें करा करेगा. शोभित भाई देख. रील देखा था वो जी वालों ने अपलोड किया था इंस्टा पे. कौन सा? 4 साल गए लोग. पहले वगैरह. मैं क्या खाऊंगा भाई कोरिया में 4 साल. मेरे से ना हो पाएगा. क्या भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोरिया का खाना भी मस्त है. अरे क्या भाई कुछ भी बोलो भाई. बिरयानी तो नहीं मिलेगा. नहीं है तो भाई एक अंदर से धक-धक होता है. भाई मैं मलेशिया गया था, मेरे दो दोस्त जो साथ में थे वेजिटेरियन थे. वो उन्होंने सिर्फ पानी पिया है और ब्रेड खाए हैं पहले दिन. उन्हें कुछ नहीं मिला लिटरली खाने के लिए. रॉसी का मन हुआ बिरयानी खाने, क्या करेगा? कुछ है नहीं. इंडिया आ जाएगा, खा के वापस चले जाएगा. ऐसा थोड़ी है भाई. भाई बहुत महंगा भी होता है भाई कोरिया जाने का. ओ भाई अंतम. थाईलैंड ले ओवर था रॉसी का, बफ मिला होगा. वैसे शोभित भाई आप कहाँ घूमे हो इंटरनेशनल? जैसे कि टाइम नहीं है. कहाँ होगा? तेरे पूरी एटलस पढ़नी पड़ेगी. मैं गया कभी इंटरनेशनल टीम? किधर गया मतलब किधर गया? पेरिस, प्राग, पेरिस. एम्स्टर्डम शादी से पहले बाद में नहीं खेल सकते रोका. यार मैं दुबई नहीं आज तक. दुबई जाना है. माइंड हटर नहीं देखा था. 2 बार वो भी 3-4 महीने. क्यों 2 बार क्यों? क्या था रीजन? एक बारी में ज्यादा मजा आया क्योंकि चुल. अरे वर्क पर्पस. हाँ वर्क पर्पस 2 बार. वर्क पर्पस था कि वर्कआउट पर्पस. कितनी बार वर्क करा आपने वहाँ पे? 2. चेरनोबिल देखा हुआ है. यश मालदीव्स भी गया भाई. मालदीव तो भाभी के साथ ही गए थे. मालदीव्स में फॉरेन नहीं बोलूंगा भाई, कुछ है ही नहीं. सिर्फ एक आइलैंड है बस. आपका हनीमून को ऐसा बोले तेरे को भाभी को? I mean, they think they're gonna get in and get a nice plan, but this is all just set up by RRQ. करेंसी भी नहीं चाहिए. अच्छा टीबोन तो ऐसा बोल रहा था कि वॉल ऐसा भाई जो ये इनका खत्म कैसे मलेशिया कर का रहा आइलैंड है? है, लंकावी बहनचोद का आइलैंड है. लगी नहीं रहा आइलैंड है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा. 250 mbps स्पीड आ रही थी मेरे वाईफाई की, पता है? ओ तू गया था ना बे मलेशिया? कैसे था बे? मलेशिया इज वेरी गुड. खर्चा बताओ ताकि हम भी plan खर्चा 6 दिन का 60,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, फूड, स्टे, एवरीथिंग. शॉपिंग थोड़ी बहुत करी, ज्यादा नहीं. और स्टे हॉस्टल्स में था, डॉर्म्स में. तो भाई हम लौंडे में क्या करता, बिस्तर पे भी खुद ही रहता अकेला. हॉस्टल मजा आता है भाई. एम्स्टर्डम में हॉस्टल में था. हाँ हॉस्टल वो था, क्या बोलते हैं, एम्स्टर्डम में अगर जाओगे अंग्रेजों के साथ. होटल बोरिंग है. अरे साहब भाई पढ़ ले कमेंट. RRQ भाई खत्म कर दो, हमको कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं टीबोन की चैट. जापान जाओ. तू कहाँ गया बे? मलेशिया, श्रीलंका कहाँ? श्रीलंका नहीं भाई, मलेशिया और बाकी यूरोप में 5 कंट्रीज.
अरे मैं बता रहा हूँ रिसेंटली कहाँ गया मलेशिया गया था ना अभी तो। हाँ सिर्फ मलेशिया। कितना दिन के लिए? 6 दिन। 6 दिन के लिए सिर्फ 70,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट। 60,000 यस। हॉस्टल था ना guys। वही तो बहुत सस्ता है भाई मलेशिया, इतना तो हमारा गोवा मुंबई में खर्च हो जाता है। मुंबई में 60,000 सितंबर में आया था रेड बुल क्लच के लिए 30,000 खर्च हुआ था मेरा तब 2 दिन का 3 दिन का। वो था आपका। सस्ता हो गया मलेशिया फिर। अरे 7 दिन के लिए। दिल्ली से बैंगलोर की फ्लाइट ज्यादा महंगी, क्लियर्स पता है मलेशिया की सस्ती है। ये कहती है बैंगलोर आ जाओ बहन चोद, मैं मलेशिया ना चला जाऊं। कितने 6,500 टिकट थी भाई। क्या? हाँ मलेशिया से दिल्ली, एक 8,000 की थी, एक 6,500 की थी। कोलकाता से मलेशिया में गया था और आया था दिल्ली वापस। वीजा का क्या सीन है? 1,500 रुपए का वीजा, 2 दिन में। मतलब कितना? 1500 मिल के बन के मिल जाता है। नहीं नहीं ऑनलाइन अप्लाई करता ई वीजा, 2 दिन में मिल गया था बन के। ये टिबन सब स्प्रे कर रहे हैं। और कंट्री भी अच्छी है मलेशिया, ऐसे नहीं कि लाइक इट्स गुड, घूमने लायक है। नाइस शॉट। मलेशिया में होता है ना गाइस ट्विन टावर? हाँ बढ़िया है क्या वो? हाँ सही है। कुछ गैजेट्स वैजेट्स मिलता है उधर? नहीं नहीं गैजेट्स कुछ नहीं है। बहुत कम हो गया भाई, 6,000 तो साला बैंगलोर का भी फ्लाइट। जुना भाई वही तो क्या जुगाड़ करके गए? कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट टिकट। जुना भाई अभी दिखाऊं मैं, अभी बताऊं मलेशिया की कितने की हो रही है। मलेशिया जाओ क्या फिर? चेक करना बैंगलोर से मलेशिया कितना है। हाँ मैं देख रहा हूँ, 1 मई का देख रहा हूँ। दिल्ली से मलेशिया देखते हैं पहले कितने का टिकट। आज आधा चैट मलेशिया है। अगर मैं हॉस्टल में ना होटल में रहूं तो 1 लाख तो चाहिए पर हेड। तो मेरा हॉस्टल था 1,000 रुपीज पर नाइट, होटल तो मैं मिल जाएगा 2,500-3,000 पर नाइट। अभी चीपेस्ट दिखा रहा है 13,500 फ्रॉम दिस दिल्ली। 1300 मतलब क्या 1300? नहीं 13,500 मतलब 30,500। 1 मई का। हाँ 13, अगर 31 मई का देखें। अरे ऑब्वियसली स्टार्ट होगा ना। अरे समर हॉलिडे स्टार्ट होता है ना अप्रैल के बाद, ऑब्वियसली प्राइसेस तो इंक्रीज ही होगा। थोड़े बढ़ गए हाँ। 31 मई का भी 13,000 है। जुना भाई यस। सर आपने वर्कआउट किया मलेशिया में? नहीं बस नाचे कूदे। नाचने कूदने के बाद ही तो वर्कआउट चालू होता है। नहीं तो आपका तो बड़ी एक्सपीरियंस है इस चीज में। Flash over here, and it doesn't even matter. Jefferson's just gonna kill him off before they can even get started. Counter lockdown set up here. Taka J. हॉस्टल्स में ये फायदा है भाई, अंग्रेजों से दोस्ती हो जाती है यूं ही, इंटरेक्शन। एक बंदे ने मुझे फेसबुक पे ऐड करा, वो फेसबुक पे फोटो डालता रहता है। वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, वो कह रहा आई यूज फेसबुक दो। नहीं क्या तो फेसबुक मैंने चलाना छोड़ दिया भाई। ये बोलो कि गर्ल्स थी या बॉयज जो ऐड किए? बॉयज थे भाई। हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज साथ में भी रह सकते हैं। ये भाई फ्रेंच लड़कियां थी हमारे हॉस्टल में, अच्छी थी। मैं जा रहा हूँ टिपोन भाई, मेरे को 60,000 लोन दो प्लीज। डांस सिखा रहे थे, मुझे पता रात को दारू पी के भाई वो भंगड़ा कर रहे हो, वो खुद ही लड़की आ रही करिए मैं भी सिखाऊं। टिपोन भाई 7 दिन किया क्या भाई तूने? डांस किया फ्रेंच लड़की के साथ, भंगड़ा पहली तो रहा। घूमा है भाई, घूमे कूदे। टिपोन भाई सच में मेरे को 60,000 लोन दो। वो देख कौन सा माउस यूज कर रहे, कौन सा माउस पैड यूज कर रहे टिपोन? सीएस को हाउल वाला। वैसे 6 दिन भी कम थे पता है, थोड़ा और 1-2 दिन और चाहिए थे। हमने काफी चीजें मिस कर दी, घूम नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। भाई इनकी कितनी स्टिकर्स है भाई डीएफएम की, पूरा चिपका दिया क्या? आरआरक्यू एनालिस्ट तो भाई भी था, अभी इधर कोई और बैठ रहा है। ये कोच है। वो एनालिस्ट है क्या? तेरा चैट के साथ प्लान बना ले, बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो फकिंग नोटिफिकेशन गाइस, नो ऑफेंस बट आई डोंट थिंक। तो ऐसे तो है मेरे पे मॉनिटर आर्म, मेरी वॉल माउंटेड है मॉनिटर। Let's see if they can make those adjustments as we now go into round 10. Yeah, DFM, I like that you called that out because DFM's stuck between a rock and a hard place, right?
they ideally would not want to invest too much to get in, but because they keep losing so many rounds, they're kind of feeling like they have to play on. एक्लियर्स करनी बात कर रही है भाई। बोल किया इसने? आयुष डियर हमसे बात कर लो। एक्लियर्स गेम एनालाइज कर रही होगी, एक ही बात बोलती है। DFM क्यों चौक कर रही है? What do you do for a living? पढ़ाई लिखाई करता हूँ भाई, मैं स्टूडेंट हूँ। हमें वहाँ पे एक मिले थे, कपल भी नहीं था, वो बंदा यूके का था और वो औरत स्वीडन की थी। वो 1.5 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पता है? तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा What do you do for a living? Yes. मतलब खर्चा के लिए घर से तो आना चाहिए पैसा। नहीं नहीं, क्यों घर से नहीं लेता मैं पैसे। तो कहाँ से लेते हैं भाई? बुंड से? हाँ, बुंड देता हूँ मैं अपनी। नहीं बता ना यार, खर्चा There तो होगा sources भाई, of बिहार में income. ऐसा नहीं कि भाई खर्चा अच्छा गैस करो, मैंने 6 महीने में कितना खर्चा कर लिया होगा बिहार में? 1 लाख तो चाहिए भाई। 3 लाख हिसाब करा था मैंने जब मलेशिया गया था तब। मैंने देखा भाई अकाउंट में पैसे नहीं, मैंने कहा पैसे कहाँ गए? हाँ तो बताया तो, बुंड सेलिंग। स्टूडेंट लोन तो है ही भाई, 18 लाख का स्टूडेंट लोन है एक्चुअल अमाउंट। जर्मनी में कर सकता था भाई आराम से। नहीं, मेरा स्टूडेंट लोन 19.68 लाख का है, बट 18 लाख ही उसमें से वो होगा यूज। खेलना फिर भी गेम है। वेलकम टू वैलोरेंट लाइव इंडिया, थैंक यू फॉर द 40। अब रिकवरी कर रहे स्ट्रीम करके। भाई जिंदगी निकल जाएगा T1 भाई। 40 के सुपर चैट में 3 लाख। अरे भाई खाने पीने का, वही तो बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ रहने का वहाँ पे है भाई उधर हॉस्टल बोला तूने। हाँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। समझा। शोभित भाई आपको भी तो दिखती है स्टोरीज। हाँ शोभित भाई को भी दिखती है भाई। 3 लाख मैं डर गया था देख के, मैंने कहा इतना। अरे उसमें खैर मेरा ये भी है, जिम का भी है, न्यूट्रिशन का भाई 5,000 का प्रोटीन और ये और वो सब भी है। सब कुछ मिला के, पूरा खर्चा मिला के 3 लाख। हाँ तो प्रोटीन ही महंगी होती है भाई, महीने का 8,000 तो चाहिए। यस। और मेरा मेस का जाता है अराउंड 14,500 फॉर 3 मंथ्स। उसमें नॉनवेज है? नॉनवेज हफ्ते में 3 दिन चिकन, 4 दिन एग्स। अरे अच्छा है भाई, मेस का खाना बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है भाई। बहुत से बच्चे रोते रहते कि ऐसा खाना वैसा खाना, मैंने कहा जब खाओगे ना खुद खर्चा करोगे। हाँ लेकिन इतना महंगा क्यों है इंडिया में एजुकेशन? मतलब अरे एमबीए महंगा होता है, बाकी कोर्सेज इतने महंगे नहीं होते भाई। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे रे DFM। कितनी दीवार लाइन से ला रहे हैं वो। नहीं होगा भाई, ये एंड है। नीचे भी तालाब बना रखा उसने अल्ट करके, हार्बर ने वॉल पे वॉल। पीटी है भाई इसमें हार्बर पूरा। ये देखो बीटेक में बच्चे 20 लाख का लोन लेके बैठे हैं। ओए इजी क्लास ब्रो, बोला मैं तेरे, मैं बोला था इजी क्लास। ओ भाई साहब हाँ जी, प्लांट नहीं करा उसने। 9-3 का कल हुआ था, बट तू पता 9-3 था, 9-3 लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ। सोचो फाइनल स्कोर क्या था। ये मत बोल के हार गए भाई। जीत गए, बट कब जीते होंगे गैस? क्या 30-11? 18-16। 18-16? हाँ यस। पूछो, दोबारा बोलो। बहुत दिमाग खराब किया भाई इन्होंने मिलकर हमारा। पूजा कीबोन और फाटू खराब होगा भाई। कहाँ से भाई? हाँ क्या क्या बोल रहे थे शोभित भाई? भाई हाइडलबर्ग में मेरा हुआ था एप्लीकेशन एक्सेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट। जर्मनी में मेरा फीस था 10 लाख, उसमें हॉस्टल भी आया था पता है जर्मनी में। अरे जर्मनी में ये ट्यूशन फीस नहीं लेते, डिस्काउंटेड है, ये नहीं पता तुम्हें? तो 10 लाख किस चीज का? हॉस्टल का? हाँ मतलब बाकी सब का जो ट्यूशन फीस होते हैं ना जर्मनी में, वो फ्री है, एजुकेशन फ्री है। 2 साल के लिए 10 लाख का। हाँ एजुकेशन फ्री है जर्मनी में। 17 की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन इज फ्री इन जर्मनी में फ्री है भाई एजुकेशन। मेरा एक व्यूअर जर्मनी का ही है,
आई थिंक वो टी1 का भी व्यूअर था, उस जर्मनी में ही है। वो लॉजिटेक का लाया था G7 अपने मेरे लिए। 12 लाख लगे। IIT मतलब बड़ा IIM IIT बोल रहे हैं। नहीं, ये अनंत गोस्वामी, IIT दिल्ली। हाँ तो बीटेक के लिए बेस्ट IIT है, MBA के लिए बेस्ट IIM है इंडिया में। हाँ क्या? यस। Hey Luna, yes soon. Education in Germany is only free if you learn the subject in German language. In English, you have to pay a fee. हाँ तो अरे तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज टेस्ट दे के जाते हैं सब। अरे बाकी नहीं, पता नहीं भाई इतना। ऐसा सीन है कि तो मैथमेटिक्स, अरे तू हिस्ट्री पढ़ रहे हाँ तो हाँ जर्मन समझ गया मैं। जर्मनी का लैंग्वेज में पढ़ेगा। अभी इसलिए तो स्पेनिश सीख रहा था। स्पेनिश जाएंगे T1 भाई, लतीना। टीवन भाई मतलब पढ़ाई लिखाई करने। आप वो वर्ड रिपीट किया तो भी घर जाएंगे आपका टीवन भाई, सोच के बोलो। वर्ड नहीं रे बाबा। राघव भाई चिल्ला रहा है चैट में, फुल कैप्स में लिख रहा है। भाई सबसे महंगी जितना मेरे को पता है हायर स्टडीज यूएस है भाई, जितना मेरे को पता है। करोड़ों में भाई, 1 करोड़ आराम से लग जाता है। क्या बोल रहे, करोड़? हाँ 1 करोड़ आराम से। 1 करोड़ 1.5 CR लग जाता है भाई 4 साल में। तो कब तक वापस देगा वो? जिंदगी भर। अच्छा वैसे तो पढ़ाई नहीं करना है भाई, भाई लाइफ लॉन्ग तो उसका जिंदगी इसमें ही जाएगा फिर। लाइफ लॉन्ग तो जिंदगी उसमें ही जाएगा। पढ़ाई जब इसका लोन कंप्लीट होगा दूसरी लोन आएगा गाड़ी का, जब गाड़ी का कंप्लीट होगा तीसरी लोन आएगा घर का, जब घर का कंप्लीट होगा चौथा लोन होगा शादी का। ऐसे ही लाइफ इज ऑल अबाउट लोन्स। लोन रिपेमेंट्स, यस। अभी तुम लोग का जो टाइम है ना कॉलेज, मस्ती करो। जब आओगे ना जॉब मिलते लोन भी ऑटोमेटिक आता है। बात सही बोला। मैंने कल ही फाटू को एक वो भेजी थी, पता है लिंक, हाउ टू सेव मनी वाइल शॉपिंग, क्योंकि वो भी अमित भाई लौड़े जैसे शॉपिंग करता रहता है। नहीं है भाई, सब कुछ क्लियर फाटू भाई। हाँ तो जेब भी तो क्लियर है। क्या जेब क्लियर है भाई? बैंक बैलेंस भी क्लियर है भाई। वो भी क्लियर हो रहे हैं क्या? हाँ, जीरो सेविंग्स। भाई 35 लाख की लोन। एंड्री भाई घर जाएगा और एजुकेशन, फिर नौकरी मिलेगी 40,000 की। इवन भाई कम बैक हो सकता है? नहीं होगा भाई कमबैक, ये हो गया। मेरा इंजीनियरिंग एक साल का सिर्फ 14,000। ब्रो my college fees my college fees was 8. गंदा रैंकिंग आने के बावजूद my college fees was $800 a year bro, please. अरे इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ मैं। I did BA economics. I finished college in 2,400 rupees. मुझे लगा 2,400 ईयर बोल दिया। हो गया नहीं 2,400 rupees plus 30,000 for 2 papers. क्या ब्राइब करा था? हाँ भाई तमिल क्लियर ही नहीं हो रहा है, पढ़ना लिखना तो नहीं आता है तमिल। ये देखो doing MBBS 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ भाई। उसके बाद क्लिनिक खोलेंगे, 200 रुपये कंसल्टेशन फीस, 40 रुपए की दवाई। स्कीम बताओ, एक 4 BHK घर लेते इधर बैंगलोर में, रेंट में देते इससे बड़ी। अरे वहीं पे क्लिनिक खोल लेते हैं। 1.5 करोड़ भाई एजुकेशन के लिए। हेलो सबको पैरासीटामोल खिला दो भाई। बात भाई करता बोल रहा एक्चुअली आप घर ले सकते थे। इतना बन गया डॉक्टर भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट सीन ऐसा है कि ऐसा लोन भी लेके तो बकचोदी भी नहीं कर सकते भाई, पढ़ना तो सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं है भाई, लोग हैं कुछ जो MBBS कर पढ़ाई नहीं करते। भाई मैं तो अगले मेरा नेक्स्ट जनरेशन वाला डॉक्टर, जो मेरा जनरेशन वाला डॉक्टर, अरे वो ChatGPT से पूछेंगे। हाँ मानूंगा ही नहीं मैं तो। पहले कहेंगे सिम्टम्स क्या है, फिर वो बताएगा, फिर चुपके से ChatGPT में टाइप करेंगे, फिर जो भी दवाई आएगी कह देंगे ले जाओ।
I know it feels bad, especially because you're so far देख रहे हो behind. लिटरली घर जाएंगा भाई 1.5 करोड़ I don't think so, Rasai. I don't This think mid so. got played. However, the problem being, Yes. you have no controller info of mid either. Education is the best business in the world. इंडिया में तो 40-50 लाख है And look at RRQ. अच्छे कॉलेज का तो मतलब सरकारी कॉलेज का तो आई थिंक 35 लाख का है एक तो मुझे पता है 40-50 अरे रशिया मेरा दोस्त भाई रशिया गया था एमबीबीएस करने 12th के बाद उसकी थी 40 लाख फीस हमारा ही जमाना तो सही था भाई और सोचा उसे फ्री में रशियन मिली होगी A lot of people go to China and Russia for MBBS also. भाई अभी फ्यूचर अगर बच्चा हो गया तो बच्चे का खर्चा भी बहुत है इंजीनियरिंग कराना है तो बच्चे का खर्चा ज्यादा नहीं है भाई मैं स्ट्रीमर ही बना देता हूँ कोई खर्चा नहीं और डॉटर बिकम स्ट्रीमर थैंक यू फॉर द 40 ट्यूशन मैं ही दूंगा घर पे आ जाओ आज सिखाएंगे ओबीएस सेटिंग्स क्या खर्चा होगा भाई 5 लाख खर्चा होगा एक गेमिंग पीसी बनाने में बस बस अच्छी है ना गाइस भाभी का चप्पल है क्या अभी देख They did everything correctly, right? They stacked, and then they said, okay, let's just try to get a pick and die to the spike. And then Flips just says, not in my book. Man, that was such a crazy round there. Flip, out of control, getting those kills there. So close. To be honest, ये लोग जो भी बोल रहे हैं ना इतना बड़ा लोन है उतना बड़ा लोन है वो सब उन लोग को अन्ना का रूम जाना है कुछ चीज चुराना है उतना ही जो चीज देखा अभी हैदराबाद उनका घर अरे एमबीबीएस के अलावा अन्ना की एक घड़ी ले लो 3-4 बंदे का लोन उतर जाएगा बुरा लगेगा भाई ब्रो शुभम ब्रो डे करो लोन में मतलब कितना भाई कुछ खाने लेके आना भाई बहुत एजुकेशन लोन का कितना होता है साल कुछ भी जो मिले है ऊपर लेकर एजुकेशन लोन अलग अलग उस पर डिपेंड करता है क्या मैंने कभी ना कितना साल होता है यूजुअली मेरा आई थिंक 7 साल है 7 साल मतलब डे करो लोन का कितना हो गया इंटरेस्ट पता नहीं भाई मैंने वो सब नहीं देखा वो बाद में देखेंगे अभी तो बस बुंड दे दी बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है रे कम होता है क्या 6.75 था मेरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट है तो 7% हाँ फ्लोटिंग ही मिलता है 6.75 था वो आई थिंक अभी 7 हो गया है क्या हर एक लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट में मिलता है क्या एजुकेशन लोन What I find interesting is the previous times that DFM has played on Pearl suggests seem to भाई बीटेक भी मेरी लोन पे ही थी पता 4.5 लाख वो भी मैं नहीं भरा था लोन फिर बाद में ब्रो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1.5 करोड़ की लोन घर जाएगा 7 साल कितना साल 7 साल अरे जिन्होंने लोन ले रखा है वो बता देंगे भाई कितना है अरे वो कैसे बताएगा उसका अभी पूरा पैसा गया उधर एक ने लिखा है 18 लाख इंटरेस्ट साल का व्योम चोपड़ा उतनी तो फीस है भाई मेरी 2 साल की But 18 lakhs of interest so you're taking 1 crore loan means technically you're paying 1.5 or 1.6 back हाँ तो 1.5 का उसका लोन है तो उसने 2 करोड़ देगा वापस राका भाई का घर देगा वो रिपेमेंट में 24 lakhs monthly बे RRQ gets this read without a क्या 24 lakhs monthly बुरा लगेगा इतने की तो भाई हम वर्थ नहीं है की लोन महीने में दिया और बेटा फेक भाई सच में बोल रहा हूँ अगर 2 करोड़ में मैं बिक रहा तो मैं बिक जाऊंगा मैं खुद बिक जाऊंगा नहीं मैं मार्केट में जाऊंगा मेरी गांड के लिए कोई 1 लाख नहीं देगा सोचो 1.5 करोड़ लगा के कोई खरीदने को राजी नहीं भाई आधा टाइम तो हाइबर की ये हार्बर की वॉल दिख रही है बस स्क्रीन पे बंदे नहीं दिख रहे ओ भाई मुझे तो पहला गेम में समझ में आएगा ये लोग हारेंगे क्या मार रहे बे फ्लिप्स भी 12-4 भी हो गया ध्यान भी नहीं दिया मैंने तो टिपन भाई तेरे को पता है ये लोग क्यों हार रहे DFM का नाम की वजह से भाई इनका नाम में 3 वर्ड्स ऐसे रैंडमली चूज हुआ रे अरे बट्टू देखना अभी डे करो MBBS के लिए ठीक है अच्छा और 10-15 साल में तो 7 करोड़ तो हो जाएगा कम से कम मैं बच्चा ही पैदा ही नहीं करूंगा मेरा शादी होगा नहीं डाउट है
मैं तो फ्रैंक वाला बंदा हूँ भाई, मेरा शादी होगा कि नहीं डाउट है। कभी देखा को मेरे कोई लड़की के साथ बात करते हुए? हाँ देखा अस होगा, मोमेंट बत्तू भाई, पूज अस मोमेंट। पूजा दी ध्वनि दी बोलते हुए बात करता हूँ, उतर रही है। 10 करोड़ तो कम से कम होगा भाई। मैं बोल रहा हूँ, मेरा मेरा बच्चा बोलेगा ना डॉक्टर बनना है, मैं बोल दूंगा तेरे को भेज सब दूंगा। तो डॉक्टर इंजीनियर में क्या आउट ऑफ द बॉक्स कोई नहीं सोचता है भाई। भाई मैं बोल अब रहा हूँ, इतने मैं सारे डॉक्टर इंजीनियर आ गए तो आउट कहाँ जाएंगे भाई? आउट आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना, तो फिर थैंक यू फॉर द 40 बोलना पड़ता है। भाई स्ट्रीमर बनो, कुछ और करो भाई, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। हाँ साइंटिस्ट का भाई उससे भी ज्यादा खर्चा है टिबोन। हाँ क्या? हाँ सबको डॉक्टर इंजीनियर है, उसका बेटा डॉक्टर, आप भी बनो डॉक्टर, उसका बेटा इंजीनियर, आप भी बनो इंजीनियर। मैं सीए बनूंगा, गांड फटेगी जब सीए बनोगे, तब पता चलेगा 5 साल सीए पढ़ना भाई कुछ पड़ेगा। और बनो भाई, ट्राई करो सीए, आपको पता चलेगा। फार्मेसी भी तो है। अरे हाँ, अपनी सैलरी के बारे में बताओ शोभित भाई, अब तो नौकरी छोड़ दी। 15,010, उसमें मेरा 12,000 तो रेंट ही था भाई, फर्स्ट सैलरी। नहीं, एंड में कितना हो गया था जब नौकरी छोड़ी? अरे वो बोल नहीं सकते यार। 1.5 लाख रुपए महीना। क्या 1.5 लाख भाई, 15,000 में था मैं पूरा। 1 0 कम कर दिया। भाई स्टार्टिंग में भाई 15,000 था सैलरी, उसमें 12,000 रूम रेंट, वेरी रियलिस्टिक। स्टार्टिंग में होता है भाई, लेकिन दो भाई बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन दो। 2,500 बच्चे देख रहे आई हैं गेस स्ट्रीम। पूरा देश में मैं ही एक बेटा हूँ जो जॉब के बावजूद पैसा लेता था घर से। DFM does collapse back. Spike has still not been planted. मेरी साइड RRQ, इनकम by कुछ the way, नहीं has है पे। control both sides as the attackers right now. Xfera already through B. He's going to get the flank, and he's going to be much quicker than DFM would expect. They have no idea that he's already here. Oh, drops before he can get the lockdown. Oh, and they've already surrounded them. Suggest is out of the भाई picture. लेकिन मैंने एक अच्छी चीज किया भाई, जीवन भाई कम पैसा में मैंने एजुकेशन किया भाई, वो मेरी अच्छी बात। 2v1, yeah, you gotta use ना Zotac. एजुकेशन करते Whatever हैं you तो can भी get थैंक this यू फॉर round द back, 40 but बोल Clips देते gets माइक rid of पे। it instantly. Oh no. देखो एक्लेस को देखो, बिना एजुकेशन का बोल रही है। Oh my god. Crazy. तो क्या बोली भी नहीं कुछ। एमबीए कर रखे भाई क्लेयर्स हमारा ने। घर जाएगा मेरी पता है, एजुकेशन में, छोड़ूं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी छोमू छोमू एजुकेशन देखते भी तो क्या कर रहे हो, बैंड वही तो कर रहे हो इधर आके। भाई सीए सब डिफिकल्ट है भाई, इतना इजी नहीं है भाई। ये वेरी सीए हार्ड, में गांड फिट जाएगी भाई। ये वेरी हार्ड। They gotta get the paddles out just to get me back into the We've game. got the pulsing lights above To be honest, us. you know what's the saddest part? पकड़ लो आप, एक ग्रुप लिख रहे हो, वो ग्रुप में 3 पेपर पास हो गया, एक फेल हुआ, तो भी वापस पूरा ग्रुप लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस किस चीज की कर रहा है आदित्य? Doing अरे part-time practice in Mumbai, 80K mon. ये डॉक्टर है ना शायद, पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। अरे मुझे कंपाउंडर रख ले भाई, 10,000 रुपए महीना दे दियो। कंपाउंडर मतलब 1.5 करोड़ कहाँ से आया भाई? जो डॉक्टर का चला रहता है। 1.5 करोड़ का लोन नहीं लिया इसने, ऐसे ही मतलब एजुकेशन में 1.5 करोड़ डाल दिया इन्वेस्टमेंट्स। I do feel like plays like this, they have a certain number of times they can be used like this, right? I mean, I feel like especially when you're 80K मंडे मतलब क्या है? back like this, again, not a bad idea, but just pointing out they've done it. गवर्नमेंट में 5 लाख की नहीं, एमबीबीएस दिनेश 30-35 लाख की है। 1 करोड़ एजुकेशन में डाला मतलब कैसे होगा यार? Where anyone you have from no RQ is. information. Yeah, you have zero And, information. it's almost like, well, you know, if you get dropped in the first भाई मुझे तो एमबीए का पैसा भी खुद देना है। now they've got एक पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम प्रैक्टिस क्या होता है बे? ओ भाई क्यों क्या? बीबीएस में? अरे वही होता है, वो जो नर्स खड़े होते ना, क्लिनिक जनरल मेडिसिन। अच्छा नर्स नहीं है। पार्ट टाइम 80,000 मिल रहा है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं इंडिया में। spots that and then retreats. हैं? They imagine it's the majority Nurse of है। here now. EJ just watching to see if there's another कितना होता है singular सैलरी? plant, but a great ओ setup. भाई Oh my God, Flip is so good with a great rotation. 2 versus 2 now. Knives drawn, EJ ready. And Reckoning's available as well. Yeah. So और पता है खाली एमबीबीएस करके Getting more तुम्हें stuns here. अच्छी वो भी नहीं मिलेगी, डॉक्टर वाली नौकरी, फिर इसके लिए तुम्हें एमडी भी करनी पड़ेगी। और एमडी की फीस 1 करोड़ है, एमबीबीएस की फीस अराउंड 35-40 लाख है, तो 1.5 करोड़ ही हो गया। लेकिन एमडी तो चाहिए ही भाई, एमबीबीएस से कुछ नहीं होता है। एमबीबीएस से भाई 20-25 हजार मिलते हैं बस। एमडी एमडी और मैंने कहा 35 लाख दे के 20-25 हजार महीने के कमाओगे, जिंदगी जाएगा पूरा। MD is costlier than MBBS also in terms of you doing it. Cove is there.
लूना भाई ने एमबीबीएस नहीं करा भाई, लूना भाई के दोस्त हैं थे एमबीबीएस वाले, इसलिए पता है। But you know, we've seen this in both map 1 as well as और map कुछ भी 2. बोलो, ये डीएफएम वाला हारते तो भी हंसते हुए हारते थे। They have to pay for it. हाँ कसम, देखना ऐसा लगता है वो लोग इम्यून हो गए अभी, हार मेरे को झुका नहीं सकते, वैसा सीन है। वो अच्छा बात भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ I like that you mentioned it, right? This time, sure, in that singular round, DFM, you trade your ult for theirs, and it's fair, but then RRQ's like, well, we've actually got 2 more ultimates, so, no big deal. And it was the eco. गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम है एमबीबीएस फीस। हाँ तो उस सेमी गवर्नमेंट होगा। भाई पढ़ाई करने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ाई करेगा, कुछ भी हो जाए। यूट्यूब से कर लो भाई एमबीबीएस। तो ये कॉलेज डालो, सबसे महंगी डालो या सबसे बुरे, एक ना एक कॉलेज में एक टॉपर तो रहता ही है भाई, हर एक कॉलेज में। सोचो जिस कॉलेज में एक ही बच्चा हो। भाई यार डीएफएम वाले और एक राउंड जीत गए। ओ भाई 12-6 से ही वीएलटी ओटी पहुंची थी फाटू की गुस्से वेन्यू पे। भाई अमर 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 हो गया क्या? अमर मूवमेंट था क्या? हाँ आर्किटेक्ट में भी फ्यूचर है भाई। मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, उसने आर्किटेक्ट करा था, बाद में करी थी 20,000 सैलरी मिलेगी। मैंने कहा वाओ ब्रो, आर्किटेक्ट में फ्यूचर विचर नहीं है ब्रो, आर्किटेक्ट में 14 लाख कुछ फीस थी उसकी। तब मिलता है आर्किटेक्ट में फ्यूचर, तभी 3 साल गर्लफ्रेंड गांड घिसाओ। नहीं यार, उसने बोला कि 15-20 हजार सैलरी मिलेगी। मैं तो एकदम ऐसा रह गया, मैंने कहा भाई इतनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी लड़की थी, इसे क्यों आर्किटेक्ट बनना था। After you graduate, you'll have to work under another architect for 2-3 years, bro. Architects don't get paid a lot, bro. I have so many friends who are an architect too. हाँ, और टीबन भाई ये कह रहे हैं 12,000 मेरा रूम का रेंट था। मेरे कॉलेज में लौंडे जिनका 10,000 महीने का खर्चा है फूफू का। सोचो, हाँ लेजिट भाई 10,000 रुपये फूफू महीने का खर्चा। मैंने कहा वाह भाई, आग लगा दी पैसे में। एनडीए मर्चेंट नेवी बेस्ट जॉब है, मर्चेंट नेवी बेस्ट जॉब कुछ नहीं है भाई। ऐसा देखा जाए तो बहुत कुछ है ब्रो, जो कम पैसा में करके ज्यादा पैसा में ये कर सकते। अरे फैंस खोलो मस्त अपना, वरना टिकटॉक बनाओ माँ की आंख में। देखा कितने लोग कितना पैसा कमा रहे इंडिया में बंधन, लेकिन टिकटॉक रील्स का भी चालू है ब्रो। रील्स एक्चुअली पे यू अ लॉट मोर मनी ब्रो than what your YouTube views do. Hey, but what you did in पढ़ाई? हाँ, BA economics. तो मतलब like graduate, UG. Yeah. Undergraduate in BA economics. तूने क्या पढ़ाई किया यार? MBA bro. मैंने MBA किया ना। फीस था 4 लाख, ब्राइब दिया 40 लाख। MBA हाथ में। बीकॉम किया मार्केटिंग में। कहाँ पे? डिप्लोमा किया नहीं, बैंगलोर। और फिर मैंने MBA किया फाइनेंस में। हेलो, इतने लोग कैसे इधर मर गए चैनल? कहाँ है ना मैच? Increase your mic volume. क्या पढ़ाई किया? साइन का कॉस्ट सेटअप बेंच नहीं, मेरे को मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन I think notifications are not going bro. I don't know. और सारे बैठ के थैंक यू फॉर द 40 बोल रहे हैं, और यहाँ तो 40 भी नहीं आते। यहाँ तो 40 भी नहीं आते। I'm trying to make sure I keep all of you happy. My father earns 9 lakhs a month. He's a captain. Oh, then okay. But it does have work, bro. It's not easy. It's not an easy job. That's what I'm telling you. It's not an easy job. Every job has the hardships. जॉब कर ले छोड़ दे, क्या ही है। हाँ ना, मेरी मम्मी तो छोड़ दे बोल। उसको पता है मैं सुनता ही नहीं। क्या फायदा बोलने का? 9 to 5 तो भाई मुझसे भी नहीं होने की। मेरी मम्मी ने तो जब मैंने डिसीजन लिया ना तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसको कितना बोल, बेस्ट कितना भी बोलो, बेस्ट टाइगर तो नहीं बनेगा। क्या कहावत है? बेस्ट तो कुछ बोलो, बेस्ट वो नहीं होगा। तो कुछ नहीं है। आपकी मम्मी ये बोलती होगी मेरा बेटा भैंस है। भाई कमबैक तो हो रहा है भाई इनका। आई बूंद ऐसे देके डिफ्यूज करो हो जाएगा।
So many seconds on this retake. ओ भाई Suggest of all Doing weapons. part time for experience salary to 5,000 फूफू में जा रहे हैं आदित्य भाई के इतना फ्लेक्स करा देते हैं भाई, एक लाल सुपर चैट, ये नहीं कि लाल सुपर चैट करूं। हो गया खत्म। चलो PRX भाई आ जाओ। RRQ wins 2-0 in this best of 3. RRQ, they endured 2 5,000 weeks डॉक्टर साहब की फूफू of में जा रहे हैं। being almost laughed अगर हम at गए by तो so बोलेंगे many आप fans फूफू around the क्यों? world saying RRQ. नहीं वो डॉक्टर भाई वही भाई अर्जुन रेड्डी आके बिगाड़ दिया भाई सब डॉक्टर को। अरे एक रील तो मैंने देखी थी ऐसी, वो एक्सरे दिखा रहा था आपके लंग्स खराब है ये वो, और बाहर जाकर सुट्टा फूकने लग जाता डॉक्टर। देखा था चलो मैंने। T1 और PRX में फटाफट खाना खा के आए रे। बाय। तो अभी नेक्स्ट तो 5:30 को है ना? नो नहीं मैच रे। गेट्स एंडेड हम ये फर्स्ट। इतनी जल्दी हो इनको थोड़ी पता था। नहीं No, रे। नेक्स्ट मैच 5:30 को था ना? 5:30 तक वेट करना पड़ेगा क्या? जल्दी हो इनको थोड़ी ऐसे नहीं है रे। अभी आएगा ना। नेक्स्ट मैच 5:30 ओ को था। 5:30 तक वेट करना पड़ेगा क्या? वही तो मैं बोल रही हूँ। ऐसे नहीं है रे। अभी आएगा ना कि। समथिंग आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? PRP बस आ जाओ खेल लेते हैं तब तक। क्या खेलना है मेरे को? हाँ रे। भाई ऐसा मुझे होता इंस्टा पे क्या? मैसेज टाइम कर पे दो होता है जिसे क्या? ज्ञान चाहिए, दे दूंगा रिप्लाई। हाँ रे। भाई मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो जिसे ज्ञान चाहिए, दे दूंगा रिप्लाई। टीबोन भाई यूएस में मिनिमम पैकेज आफ्टर पासिंग इज 80k USD। टीबोन भाई यूएस में मिनिमम पैकेज आफ्टर पासिंग इज 80k USD। Declare loan within 5 years. 80k USD में तो कितना हो गया सैलरी में? This industry since last 5 years. हाँ के जिमी भाई। अब पब्लिक गांड तो फटी रहती है बच्चों की यूएस में स्टूडेंट डेट में। The average federal student loan debt balance is $37,338. अरे मिलता है ना जॉब तो मिलता है। Debt balance is $37,338. Guys 80k USD मतलब कितना हो गया? Costly online private donations. AIIMS is mostly free and MBBS is most costly online private donations. 6 करोड़ 54 लाख mostly free and any other उसके लिए रैंकिंग भी नहीं, colleges रैंकिंग भी तो चाहिए। 65 लाख 47 मेरी लाख। मम्मी बोलती थी मेरी दीदी की पढ़ाई ज्यादा कॉस्टली थी मेरे से। और यार मेरे को रिमेम्बर है अभी भी मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी दीदी की पढ़ाई ज्यादा कॉस्टली थी मेरे से, मतलब वो मेडिकल कर रही थी ना। लेकिन मिसलेनियस खर्चा मेरा ज्यादा स्मार्ट है तो उसी पे इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी मिसलेनियस खर्चा मेरा ज्यादा किया तूने कि हर हफ्ता 5,000 लेता था। मम्मी पूछते यार ऐसे मुझे क्या प्रोजेक्ट किया तूने कि हर हफ्ता 5,000 लेता था। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं कर 80k पर एनम हुआ। पता रहता है हाँ क्या? अरे मम्मी प्रोजेक्ट करता है यार। अरे लक्ष्मण पुजारी तू बीटेक और सीए को कंपेयर कैसे कर रहा है? 5,000 में 3,000 तो कैफे में ही जाता था। अरे लक्ष्मण पुजारी तू बीटेक और सीए को कंपेयर कैसे कर रहा है? 5,000 में 3,000 तो कैफे में ही जाता था। Sad reality but 80% students do फूफू lot of stress. गाइस मजाक से हटके फूफू सब मत करो। नहीं खेलना है क्या तब तक? तो अरे 5:30 को अरे बनता है तो 1 घंटा ही नहीं खेलना है क्या? अरे एक बार टाइमर देख लेते हैं ना। 5:30 को अरे बनता है। पता है इनके आज मूड डिफरेंट हो। अब देखो हमने एक बार टाइमर देख लेते हैं ना। गेम स्टार्टेड इसको पता है इनके आज मूड डिफरेंट हो। अब देखो हमने गेम चालू की, ये लोग स्पैम करेंगे गेम स्टार्टेड। कोई नहीं भाई, तब क्या होगा? बोल देना मेरा भी गेम स्टार्टेड बैंच हो। देखो हेल रेंजर कर रहा था वॉच पार्टी, वो भी खेलने लग गया, मॉर्टल 2 है। बोल देना मेरा भी गेम स्टार्टेड बैंच हो। देखो हेल रेंजर पर एक बात जो मन करे वो फॉलो करने का। आई एम डूइंग जॉब एंड साइमल्टेनियसली डूइंग म्यूजिक। ऐसे बैठा रहेगा सब। also hope क्लिक कर जाए ऑल गॉड्स प्लान। ब्रो हो जाएगा यार। हम भी 5 साल पहले जब स्टार्ट किया था हमें ऐसे थोड़ी पता था कि आज हम बेंच फुल टाइम बनेंगे। देख आओ शोभित भाई 3 मैन हो जाए। सोचा ही नहीं था यार। 5 मैन में ज्यादा भसड़ होती है। पूछा था एक बार कि क्या तू फुल टाइम 0 वार्म अप बेबी। इतनी अच्छी जॉब छोड़ के बोल रहा हूं सारे मेरे जो पब्लिक इधर देख रहे हैं लाइव फिश 0 वार्म अप बेबी। तुम लोग आज जो भाई मैं इनको बोल रहा हूं सारे मेरे जो पब्लिक इधर देख रहे हैं लाइव आज है कल नहीं है। आज जो सोचेंगे कल कुछ और बन मेरे को तो पता भी नहीं था ये स्ट्रीमर करके कोई चीज होती है। बाय। और आज देखो सबको बड़े से बड़े स्ट्रीमर को गाली देते हैं बेंच मादर से। कोई चीज होती है भाई सीरियसली।
और आज देखो सबको बड़े से बड़े स्ट्रीमर पे गाली देते हैं बहनचोद मादरचोद। स्ट्रीमर हो, पुराने स्ट्रीमर को इज्जत दो। मेरा बॉयफ्रेंड के दोस्त है मेरे वो लोग। परसों मेरे से आया था। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग कल की सोचो काफी। ओके इफ यू थिंक सो ज्यादा आओ भाई गेम चालू करो। आप तो चूतिए हो एक नंबर के। आओ गेम चालू करो। लाइफ में ऐसा ट्विस्ट बोलते हैं ना। आओ भाई गेम चालू करो। ये हो आ जाता है तो मैं कैसे बैठ के सोच के क्या बोलते हैं लूना लाइफ में यस जैसे उस मूवी में आया था शोभित भाई बैठ के सोच के साले चोर निकल के भागा। एकदम से लाखों लोग मर गए थे भाई। जैसे उस मूवी में आया था शोभित भाई तो सब छोड़ना कोरोना चोर से कहते स्क्वाड वाइप। लाखों लोग मर गए थे भाई ओवरनाइट लाइक पीपल थाउजेंड स्क्वाड वाइप कर देता भाई कोविड में। स्क्वाड वाइप लाइफ यार। पर उसके वाले से आदत हो गया ना बाहर जाने का मन भी नहीं करता। पागल हो गए भाई सब कमरे में रह के। किसी ने पर उसके वाले से आदत हो गया ना बाहर जाने का मन भी नहीं करता। पागल हो गए भाई सब कमरे में रह के। मैं और स्कॉट ऑलमोस्ट 7 महीना। नाउ गेम चालू करो भाई। रुको ना एक बार देख लेते इनका टाइमर क्या है। अरे गांड में डाला भाई टाइमर। गेम चालू करो भाई। रुको ना एक बार देख लेते इनका टाइमर क्या है। 25 मिनट्स दिखाया गया गांड में डाला भाई टाइमर। 25 मिनट्स दिखाया गया इन लोगों ने। घर पे बस मुठ मारो कैसे भाई पूरी फैमिली घर पे थी कोविड में। अच्छी है भाई अब मेरा एक्सपीरियंस जगह कहाँ पे मुठ मारो कैसे भाई पूरी फैमिली घर पे थी कोविड में। हाँ अब से डंडा मारते थे कि यहाँ कर रहा चल अंदर बाहर जाके मुठ मारता था भाई कुछ नहीं हो पाता था कोविड में। सॉरी कर रहा चल अंदर भाई कुछ नहीं हो पाता था कोविड में। क्या बोलते MBBS गवर्नमेंट सीट है 52,000 स्टूडेंट अप्लाइड 18 लाख भाई क्या है ना पे MBBS गवर्नमेंट सीट है 52,000 स्टूडेंट तभी तो उनके 5 लाख फीस है। क्या है ना पे भाई गवर्नमेंट सीट के लिए बाकी सब प्राइवेट में जाते हैं वो 18 लाख के 17.5 लाख बचे हुए। बाकी सब प्राइवेट में जाते हैं वो 18 लाख। भाई आई मीन थर्ड सेम सारे नशेड़ी थर्ड सेम इंजीनियरिंग 15 के लाइम जूस एंड ग्रीन्स सारे नशेड़ी हैं जो चैट में क्या खेलनी है और क्या आधा घंटा सारे नशेड़ी क्या खेलनी है चैट खुद ही बोलेगी कि लौड़े कब तक बात करेगा। चैट खुद ही बोलेगी। कल तो भाई चैट ने 30 मिनट में बोल दिया था कि गेम दिखाओ। अच्छा चैट बताओ जस्ट सेटिंग करनी है। कल तो भाई चैट ने बोल दिया था खेल रहा है। चैट बताओ जस्ट सेटिंग करनी है। दर्द और पीड़ा विद आवर सब्सक्राइबर्स क्या गेम भाई जस्ट सेटिंग करो ना दर्द और पीड़ा इन गेम भी बात कर रही है भाई ये। क्या करते हैं मैं से मैं मानता नहीं नहीं चलो चलो जस्ट सेटिंग करते हैं टॉपिक उठाओ कोई चैट बताएगी। आरआर कर वही आरआर इससे बड़े आज तो बहन चैट भी जस्ट सेटिंग लिख रही है। लोग भी थक गए और ये लोड को रोज देख के क्या सीख आज तो बहन अभी भी गेम ही देख रहे थे भाई बैठ के लॉन्डे उनसे अच्छा तो हम ही खेलते हैं डीएफएम से। अभी भी गेम ही देख रहे थे भाई बैठ के। मैं तो गेम में नहीं मैं तो मेरी बातचीत किया यार कम्युनिटी से। मैं तो इन लोगों से कल भी 1 घंटा जस्ट सेटिंग करी थी। बात भाई आज काफी टाइम बाद बातचीत किया यार कम्युनिटी से। राघव ऐसे नहीं बोलते कम्युनिटी से जोड़ो। राघव ऐसे नहीं बोलते कम्युनिटी से जोड़ो। बताओ चैट टॉपिक दो हम पॉडकास्ट करते आ जाओ। हाँ ना बे बताओ चैट टॉपिक दो हम पॉडकास्ट करते आ जाओ। हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन औजार काट दो भाई। नो औजार नो मास्टरबेशन। करोगे कैसे जब हो गई नहीं क्या हिलाओगे। काट दो भाई नो जॉयस्टिक नो जॉय। करोगे कैसे जब हो गई नहीं क्या हिलाओगे। अगर लाइफ में जॉयस्टिक ही नहीं होगी तो जॉय कहाँ से आएगा भाई। अगर लाइफ में जॉयस्टिक ही नहीं होगी तो जॉय कहाँ से आएगा भाई। जो करना करो संकेत ले लो एडमिशन। करियर ऑप्शंस क्या करे करियर ऑप्शन क्या बोलती है रे जो करना करो। लूना को देखो 4 साल घर में बुंड मरा रहा था अचानक एमबीए बन गया। लूना को और बिहार में बुंड मरा रहा एमबीए बन रहा था बराबर अचानक से एमबीए नहीं नहीं अरे मेरा लास्ट ईयर आईएम अमृतसर हुआ था क्लियर मैंने पता होगा कि एमबीए बनेगा बराबर आरपी फुल आ रहा है। नहीं अरे मेरा लास्ट ईयर आईएम अमृतसर हुआ था क्लियर मैंने जस्ट चैटिंग विद आरपी एंड ऑस्ट्रेलिया आरपी फुल आ रहा है। अभी कैसे आ रहा होगा सर्वर ये लूना रोज गेम करता था अभी देखो एमबीए भाई अचानक से बे भाग गया बे ये लूना रोज गेम करता था अभी देखो एमबीए भाई नहीं सोचा था। अरे लास्ट ईयर हुआ था मेरा आईएम अमृतसर में एडमिशन बता तो रहा हूँ गया नहीं था मैं तब। सोचा था अरे अमृतसर पंजाब आईएम अमृतसर में हुआ था गया नहीं था मैं तब। कहाँ पे अब मैं बिहार में हूँ देख लो दैट्स लाइफ। आई एम द टॉप कॉलेज
अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता। आईएम के टॉप कॉलेज का है रे। आईएम के टॉप कॉलेज। नहीं, आईएम बैंगलोर है काफी अच्छा। बैंगलोर आईएम कहाँ होते रहे हैं बैंगलोर? चेन्नई में भी एमएलए सुना। बैंगलोर में ही होगा कहीं पे। अरे वो तो मेरे को बैंगलोर है काफी अच्छा। बैंगलोर आईएम कहाँ होते रहे हैं बैंगलोर? देखता है बैंगलोर में ही होगा कहीं पे। अरे वो तो मेरे को ही पता है। आईएम बैंगलोर। अबे एरिया का है ये तो इधर ही है, जेपी नगर के आसपास ही है रे। अबे जाओ तुम दोनों जाओ एक दिन, इधर ही है, देख क्या हुआ है बैंगलोर। आसपास ही है रे। तो आईआईएम तो ये आईएम है, एक स्टूडेंट्स में नहीं दिखता इधर। आपको पता नहीं है कि घर के बाजू में तो आईआईएम। हाँ पे जो फोर्टिस के सामने एक स्टूडेंट्स में नहीं दिखता इधर। हाय क्लियर्स, हाँ ये जो फोर्टिस के सामने यही है, यही है आईएम। हाय क्लियर्स, बहुत बड़ा सा फोर्टिस के सामने ये जो फोर्टिस के सामने यही है आईएम। हाँ वही है, बहुत बड़ा सा फोर्टिस के सामने। अरे श्रवंत ने भी तो ये दे रखे हैं आईएम बैंगलोर में गेस्ट लेक्चर। भाई मुझे सच्ची में, अरे श्रवंत ने भी मुझे तो लगा ये क्या दे है रखे पता हैं, है, मुझे लगा ये IIM कुछ बैंगलोर में अपार्टमेंट guest है। lecture। भाई मुझे सच्ची में, गॉड मुझे लगा ये क्या है पता है, मुझे लगा ये कुछ देख लो। अपार्टमेंट है। तो ये जब सबसे पूरे मैंने दिन कभी देखा, जब पूरे दिन थैंक यू फॉर 40 बोलो ना, समझ ही नहीं आता कि आसपास क्या है। तो ये सबसे महंगी होती है क्या? जब पूरे दिन थैंक यू फॉर 40 बोलो ना, समझ ही नहीं आता कि आसपास क्या है। थैंक यू। पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, एमडी वाला सीन, मास्टर्स। हाँ भाई अखिलेश को भाई यूट्यूब चैनल में डॉक्टर डाला, एमडी वाला सीन कहना चाहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। भाई अखिलेश को भाई यूट्यूब चैनल में डॉक्टर डाले, मतलब तो हम क्यों कहना चाहता है कि अरे मैं करूंगा भाई पीएचडी, फिर डॉक्टर लुनाटिक कहलाऊंगा। क्यों नहीं डालते भाई ईआर, हम डॉक्टर डाले। मैं करूंगा भाई पीएचडी, फिर डॉक्टर लुनाटिक। मैं भी चेंज करूंगा भाई ईआर टी फोन क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई एटलीस्ट लॉन्डे जब देखेंगे ये तो कुछ पढ़ाई करके स्ट्रीम कर रहे तो सोचेंगे ना क्या बोलते हैं, डाले क्या मैंने ईआर टी फोन डॉक्टर वाले ना, इंजीनियर तेरा घर जाएगा डॉक्टर, लेकिन इंजीनियर वाले शो ऑफ नहीं करते। मैंने एक चीज नोटिस किया, डॉक्टर वाले ना, मेरी सिस्टर भी ऐसी है, डॉक्टर, लेकिन इंजीनियर वाले कोई नहीं डालता भाई यार, कहीं नहीं डालते, मैंने देखा। हमारा भी है भाई अगर चाहिए ना, कोई नहीं डालता भाई यार। ईटी नहीं बोलते यार, हमारा भी है भाई अगर चाहिए बराबर। यस, ईटी नहीं बोलते यार, बोलते हैं ना इंजीनियर को, बराबर। यस, कितना बजट है लाइन लाइसेंस वो भी लिख देता। अब दोबारा 40 रुपए दे। अच्छी चैनल पे आया, कितना बजट है लाइन लाइसेंस वो भी लिख देता। मेरे मास्टर जी है भाई लाइसेंस, उसके बाद हाँ अरे अब तो खास कर, अब तो ग्राफिक कार्ड कितने सस्ते हो गए भाई। भाई मेरे हिसाब से 1.2 लाख में हो जाता है। अब तो खास कर, अब तो ग्राफिक कार्ड कितने सस्ते 1.2 लाख में तुम स्ट्रीमिंग पीसी बना सकते हो। खाली पीसी की बात हो रही है, स्ट्रीमिंग गेमिंग दोनों। स्ट्रीमिंग वो नहीं कि स्ट्रीम ओनली, हाँ तो 1.2 में मतलब गेम प्लस स्ट्रीम दोनों कर सकते हो। स्ट्रीमिंग वो नहीं कि स्ट्रीम आराम से, हाँ तो 1.2 में मतलब गेम प्लस स्ट्रीम दोनों कर सकते हो। 80K में गेमिंग हो जाता है। मैंने ही तो बिल्ड किया भाई अभी जो होम टाउन से करता हूँ भाई, 80K में गेमिंग हो जाता है। मैंने ही तो बिल्ड गुड लक कुणाल। अरे विपुल भाई दोनों में पैसा है, कॉर्पोरेट में भी स्ट्रीमिंग में भी है। सारे जहाँ चल जाओ वो चीज कर लो भाई, दोनों में पैसा है। कॉर्पोरेट में भी बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा ग्राइंड लगता है। कॉर्पोरेट में उतना नहीं है, कॉर्पोरेट में तुम्हें पता है एक फिक्स रहता है भाई। अगर कॉर्पोरेट तुम नीचे से चालू कर रहे हो तो भाई गांड किसते रह जाओगे। तुम्हारा एक फिक्स तो वो रहता है ना, यूट्यूब का नहीं है ये। अरे क्यों, स्टार्टअप में जाओ भाई, स्टार्टअप में जाओ। मंथ्स और अ ईयर मोर और सो लेस तुम्हारा नहीं, रहेगा भी नहीं इनकम। सैलरी बेस्ड नहीं, स्टार्टअप। मैनेजर के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए बस। गांड दो, महीने में 2 बार मैनेजर खुश। इजी स्ट्रीमिंग भाई ऐसा ही है जैसे मुंबई में लोग एक्टर बनने जाते हैं। एटीट्यूड वाले कभी नहीं तिल पाएंगे भाई इसमें। ऐसा टारगेट नको करो। एटीट्यूड ईगो वगैरह है मैनेजर के सामने तो फिर मैनेजर बोलेगा घर जा। क्या टारगेट बत्तू भाई? टारगेट नको करो, मुंबई एक्टर बनने के लिए जाते हैं वैसे ही है तो। नहीं अरे तो आप क्या बोलती है, आप अपने मैनेजर को गांड दो महीने में 2 बार बत्तू। आईटी फील्ड में मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं तो कुछ ग्रोथ नहीं होगा ना, क्या बोलते हो? आईटी फील्ड में अगर मैनेजर के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर होता ही नहीं है भाई ग्रोथ। वो कभी रिकमेंड ही नहीं करेगा बड़ों वालों को। वो तो pretty much कोई भी फील्ड में, सिर्फ आईटी नहीं रे, आईटी में ज्यादा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आईटी में ज्यादा है। मेडिकल में क्या, मेडिकल में इंडिपेंडेंट है ना, अपना खुद का क्लिनिक चलाओ। कनाडा में बीबीए फिर सीए सोच रहा हूँ भाई, क्या ही थॉट्स दूं मैं उस पे। कनाडा तो अपना यही है, छोटा पंजाब।
मेरी कोटा अच्छी पंजाब। थी भाई, मेरे सारे मैनेजर्स एकदम टॉप नंबर थे भाई। एक मैनेजर तो डेली लाइम जूस। अरे डुओलिंगो दिखाओ, आओ स्पेनिश सीखते हैं, आओ शोभित भाई डुओलिंगो खोलो और चैट को भी भाई दिखाओ, ये आओ क्या है, अमेजोन लाइव? करो बहनचो करो, आओ जस्ट कीबोर्ड चैटिंग। अमेजोन ले अमेजोन में एक बंदा स्ट्रीम कर रहा है। अमेजोन प्राइम, नहीं गेमिंग है क्या, गेमिंग? नहीं पता नहीं अब क्या आएगी कर रहा कब है। काम आएगी, अमेजोन डॉट बट इन। काम आ वो सकती है, नॉर्मल मतलब है इसके रे, अंदर जो हार्डवेयर है प्रोडक्ट रिव्यू तो वो वगैरह करते केपेबल। हैं उसमें की। अच्छा वो अमेजोन में स्ट्रीम कर सकते हैं। हाँ भाई, अब सब कुछ में है भाई स्ट्रीमिंग, सिर्फ ट्विटर में नहीं आया। जागृत शर्मा ऑन यूट्यूब, भाई ट्विटर में भी आया शायद, पॉडकास्ट कर सकते हैं ऐसे। चैट भी आ रही है, व्यूअर और काउंट नहीं इसके आ रहा साथ ना। साथ आपको 120 आ हर्ट्ज तो की रहा है सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को जी मिलती है। 915। अब स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस जो है वो अभी एक्चुअली मैं आईटी बहुत में ज्यादा होता ना, अच्छा, आज मैं बहुत मैनेजर बन जाता, पक्की चलो बात। अब जिसे भी क्या पीसी बोलते बिल्ड हो? चाहिए ना, मेरी अमेजोन लाइव स्ट्रीम पे आना, समझे? यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, अमेजोन लाइव पे वो 5G फोन से दिखा रहा है, हम पीसी बिल्ड बनाएंगे। यार अभी मैं अगर आईटी में होता, मैं आज मैनेजर, सीनियर मैनेजर होता भाई। मेरा कॉलेज है, आई एम अच्छा बोध बच्चों, गया। काम करो बच्चों। क्या छुट्टी छुट्टी कुछ नहीं मिलने वाला है, छुट्टी काम होनी चाहिए आज। अरे भाई मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मुझसे बीबीए के बारे में क्यों पूछ मैनेज रहे हो? मैनेज। लेकिन अभी मैं पुणे में होता, पता है बैंगलोर में तो ऑफिस है ही नहीं हमारा। भाई मैं अभी पुणे में होता तो क्या पुणे होता है। अच्छा है भाई, फूड पुणे तो इज औसम गुड। है पुणे का, कुछ भी बोलो तुम लोग, कुछ भी बोलो, फूड तो है। पुणे का वेदर भी और ट्रैफिक भी कम है कंपेरेटिवली। भाई पुणे में फूड अच्छा है भाई, मानो या ना मानो। भाई प्रतीक सिंह ने अपनी पहली सुपर सेट करी है, लिखा आ रहा है। भाई मैं शायद आज मैं अगर मैनेजर होता, शायद मैं इसराइल में होता, शायद। हाँ ज्यूस। शायद मैं इसराइल में होता, शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद होता। इसराइल से मैं स्ट्रीम करूंगा भाई, क्या मजा आ जाता। वो पुणे में बिरयानी भी मिलता है मस्त। पर कुछ भी बोलो भाई, बैंगलोर का मैगनास बिरयानी बेस्ट। क्या भाई 1 केजी देते हैं भाई 100 रुपए। तो क्या भाई, मैं तो ब्रो आई कैन ईट 1.5 पैकेट ओ ऑफ भाई मैगनास राइस ब्रो। इतना देते, पीस दो बस। आई कैन ईट स्पेनिश सीखो आई कैन ना ईट 1.5। शोभित भाई। क्यों भाई स्पेनिश? लेकिन इसमें एक बेटे था पता है मेरा मास्टर्स में, वो मैंडेटरी था। B1 G1 क्या होता है, जर्मन L1 क्या है? लैंग्वेज वो होता है ना, एग्जाम अलग अलग लेवल होते हैं। वो भाई इतना बीटी था, वही एक हमें बीटी था, में बाकी बारिश आई सब क्या? क्लियर नो किया ब्रो, था मैंने। कॉपीराइट आ सकते हैं। अब नहीं बैठ नहीं, के हाँ वो तभी नहीं गए पंडित बेस्ट जर्मनी है, पे। मोर देन भाई। लेकिन भाई सच कहा है बंदा ने, तो लेकिन बोलता है भाई पंडित जी बनना इजी है, पंडित जी तो बहुत सारा पैसे कमाते हैं भाई। अरे परसोत्तम भाई मुंह से भी बोल दिया, चैट में भी लिख दिया गांडू, फिर पूछ रहा है आपका एमबीए कॉलेज। 3 बार बता दिया। IIM बड़ों को दिया। आपके लिए दूसरी सुपर चैट लो ना भाई, लो भाई मैं तेरे को भेज रहा हूँ यार। प्रतीक, प्रतीक का सुपर चैट में तेरे को भेज रहा अरे हूँ, ठीक है? प्रतीक ब्रो मेरे यूपीआई ऑफिस दूं में तो कल क्या? आपको आई थी, मेरे को ही भेजो। यूपीआई दूं क्या अरे प्रतीक वो भाई? केवाईसी नहीं किया ना। प्रतीक भाई की सुपर चैट ठीक है, 40-50% यूट्यूब का है, ठीक है, मतलब 50 रुपया, 50 रुपए कंसेशन फी, 30 रुपया मेरा कंसेशन फी, 10 रुपए, चलो 10 रुपए भेज दो। ब्रो ये देखा तो टिबोन निकमल है ना, वो प्लास्टिक चेयर वाला कंपनी। हाँ उन्होंने खुद नीलकमल। का, इट्स नॉट नीलकमल ब्रो, इट्स निकमल ऑलवेज ब्रो, और नीलकमल आई डोंट नो ब्रो। कमल ब्रो। हाँ सॉरी दैट ओनली ब्रो, दे लॉन्च देयर ओन गेमिंग चेयर्स। हो गया। वाह। आई एम नॉट इवन आज किडिंग। जा रहे यूएसए, कुछ लाना है कब आ यार। रहा है वापस विशाल? क्या टाइमिंग है, सब लोग जा रहे हैं, अन्ना भी जा रहे हैं, तुम भी जा रहे यस हो, ब्रो। गोल्डे भाई भी मैंने सुना है। सब लोग, सम बिग प्लान इज हैपनिंग और व्हाट? डीटीयू कैसा रहा था याद भी नहीं भाई, 4 साल बीटेक कैसे सच्ची जा निकलता रहे है। हो क्या? नीलकमल लेना है फायरबोर्ड ए, वेडेन गेमिंग हमारा चेयर। वो जुगाड़ नहीं है क्या अभी? इधर का लूना, मुझे नो एक वो आइडिया। चाहिए यार, क्या बोलते हैं उसको, जो राका ने लगवाया पीछे, इंडिया नैनो में। लीफ। लेकिन इंडिया नीलकमल में का बहुत गेमिंग महंगी है चेयर। बे, अरे उधर अली थोड़ा। एक्सप्रेस से लो भाई, चाइनीज माल ओपी पैंचो। अबे इधर अच्छा नहीं है अच्छा लॉर्ड, अच्छा। अभी अच्छा इधर नहीं। तो मैं पता शोभित भाई, तेरे को पता है ना अभी बंद हो गया अली। अरे तुम्हें ये पता है चाइना से बिहार में सामान इंपोर्ट कराया था मैंने डायरेक्ट। कैसे भाई? चाइना से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर बिहार, मेरे कॉलेज में आया था, गार्ड ने कॉल करा, कह रहा सामान आया ले जाओ। और सिंगापुर में सामान क्या कौन था वो? रहता है भाई?
अटैचमेंट मंगाई थी मैंने, अटैचमेंट। डिलीवरी कैसे चल रही है पूछो से, एक्सक्यूज मी। सिंगापुर में कैसे भाई? तो क्या चाइ क्या चाइना से सिंगापुर गया, वहां से फिर बिहार, लिटरली भाई बिहार साहब, आया मेरा सिंगापुर गया सामान। मतलब सिंगापुर कहाँ गया? सिंगापुर में कहीं गया होगा, पोस्ट ऑफिस, इंडिया बहुत पोस्ट के वैसे थ्रू आया था। तुमने कहाँ से अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया? नहीं, चल बट बे, अली एक्सप्रेस नहीं है अभी इंडिया में। अली एक्सप्रेस नहीं, लेकिन चाइनीज वेबसाइट ही थी भाई। अरे वैसे तो बहुत है भाई चाइनीज वेबसाइट, लेकिन कोई अटैचमेंट भरोसा मंगाई नहीं थी रख मैंने। सकते भाई। आली तो एटलीस्ट वो ट्रस्टेड था। हाँ, आली बाबा नहीं है अभी इंडिया में, अलाउड नहीं है अभी वो। ला ला ला, लेकिन वो है यार, वो वेबसाइट वो बहुत महंगी है। यू बाई है ना, क्या है? हाँ हमने वो तो उधर से अलग ऑर्डर है किया, वो। लेकिन महंगी है, लेकिन आ जाता है ना। क्लीनिंग का wait, Icue has a gaming chair also. अरे बस स्पार्टन भाई ने भी पहले से ऊपर चढ़ कर अलर्ट्स को। नया साइड है ना हसल अभी? कुछ नहीं है भाई, बुंड दो अपनी। टेस्ट करो। तो भाई साइड हसल कुछ नहीं है ना। साइड हसल क्या है अच्छा भाई? अच्छा, स्टूडेंट के लिए नहीं नहीं क्या नहीं है? नहीं, अब मैं भाई लेजिट, बाहर है बे, बाहर है। मैं लेजिट साइड हसल बताता हूँ बच्चों के लिए। तुम क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एसेज लिख सकते हो, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हो, फाइवर पे या कहीं पे भी कमीशन ढूंढो। अगर तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट्स अच्छा है तो कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, छोटी मोटी एडिटर बन जाओ किसी के। यूट्यूबर से दे देंगे भाई 500 रुपये पर वीडियो। लेजिट साइड हसल यही है। कंटेंट राइटिंग काफ़ी चलता है वैसे, कॉपी राइटिंग, भाई हमारे कंटेंट टाइम में राइटिंग। साइड हसल टाइम ही नहीं था, हम तो कैफे में ही थे। जियो 4S पे आज की मैंने आठ आज की हजार पब्लिक कमाया ऐसी था। है कि भाई चैट में कोई जाते गेमिंग करने के लिए कैफे, मुझे नहीं लगता आज के जमाने में है कुछ। घर से मुंबई में हाय जाते स्टूडेंट काफ़ी, मोस्ट क्या हाल है? नाइस नेल आर्ट, थैंक मुंबई यू। में जाते तो काफ़ी। ये लोग गेमिंग कहाँ करते हैं बे? गेमिंग करते हैं नहीं, जो हमारे जैसा लोग, मतलब हमारे जैसा गेमिंग तो होता ही नहीं रहा अभी। ये फ़ोन पे देखता है। हाँ क्या? Really? Really? Your head looks big because I do have a big head. नहीं पता भाई, Best beaches, गोवा Indonesia and Thailand. इंस्टीट्यूट I ऑफ don't know मैनेजमेंट के anything बारे about में। them. I just need your lat long of your location. Said the creepy but scientific person. ये भी ठीक है. Hey, take Kalyani. What is that? I know. कैसे हैं? अच्छा बैठो बैठो फाइबर इंडिया से बैन है? नहीं, फाइबर तो चलता है। नहीं फाइवर इंडिया में चलता है। अरे अर्जुन बैठ। खुल रही है भाई वेबसाइट, कौन कह रहा है बैन है? सर हम भी यही मे यही बी तुम सोचते कुछ साल मुझे। वो वी नहीं, डोंट प्ले मुंबई सर्विसेज सो प्रोवाइड प्रो नहीं कर सकते, प्लेयर्स। बट ओ खुल तो रही हर्ष है। भाई मस्त है, वो हर्ष भाई मस्त है। अब मैं सोचूं स्टाइल की यस, आवाज कैसे है, चार्ट एनालिस्ट। देखता हूँ। बट इंडियन पेरेंट्स ब्रो, आई फील यू। Please see, bro, Indian parents are not wrong at a point of time, bro. I will be very frank with you. I haven't told this to a lot of people, but India is इसी such a महीने आ country रहे हो? where they're अरे accustomed वो to, मिलते हैं ना, and कूल they टेक अंडर resemble 50 टीम ऑन, वो मंगा लो कुछ security. बकचोदी। Huh? No. क्या बोल रहे हो? Where they're कूल टेक accustomed अंडर to $50, safety देखो and यूट्यूब पे वीडियो security. मिलेगी, ऐसा That's कुछ मंगा since लो। the older days of culture, bro. I'm not coming, bro. रैंडम Style. फ्रैंक पी की I'm not अभी playing now. अप्रैल वाली आई है। And to be honest, whatever they tell, even I feel they're right भाई at दुबई times, से bro. इधर इंपोर्ट Even करने के though लिए भी टैक्स passion तो and all लगती of है। that shit to come, bro, the क्या हाँ, कर रहे हो? hardships are सामान really लाने hard के to लिए? tackle. यस। And yeah, once you have the mindset to tackle ये इंडिया के सारे all वेप the वहीं से तो आते हैं, दुबई से। and tackle all the hardships that are there with following your passion, then go for it, bro. Because multiple times I've sat and I've thought, saying I should have just done a job instead. Cut me the raga, because I come to a point where I myself think I'm not entertaining anymore. I don't know why. My YouTube notifications are में not एक going, चीज and तो है, क्या I बोलते हो? mean, technically, I'm here. I didn't crib about watching. I didn't तुम do लोग को anything समझ about it. में आया I'm कि happy तुम about लोग what I अच्छे कर have रहे right हो now. I'm और grateful ढूंढ that रहे at least 11, 10 people are choosing to watch me from today. Watch me today. हर But at 2 the end of साल the में day, when जॉब you're taking चेंज this करो, as a इजी career, all of these, and पैकेज हाँ इंक्रीज। when you're inside भाई and all, मेरे हिसाब से and you're getting इंजीनियरिंग में अगर salaried आईटी for doing फील्ड what you में do, all of फर्स्ट these numbers कंपनी come into शुड बी matter. जो भी मैक्सिमम लोग 3 बोलते इयर्स, हैं सेकंड numbers, कंपनी शुड बी मैक्सिमम 5 numbers इयर्स, not, थर्ड कंपनी numbers don't 6 matter and all that, bro. They do matter after a point of time. इधर उधर ऐसे ग्रोथ होता मैं बताता हूँ, To be बीटेक honest, में they're मेरे not wrong, दोस्त bro. ने ओयो ज्वाइन करा डायरेक्ट, ठीक है। कॉलेज से प्लेसमेंट लगा 8 लाख में। Yeah, that's the
फिर उसने बेन एंड कंपनी में करा कंसल्टिंग में अराउंड 10-12 लाख का पैकेज था। क्या कंपनी? बेन एंड कंपनी। I don't know. I have no idea what I'm gonna do now. बेन Bro. I've just seen BAIN again. बेन। No negative vibes, only positive. I'm still तो positive, bro. ओयो Not में वो really, 1 साल रहा, I used to 8 crib लाख about का था everything. I उसका used to cry Archie when I like CTC। फिर वो बेन में गया अराउंड 12 लाख में। फिर वो No, I'm गया not, bro. लखनऊ I'm not की कोई quitting. कंपनी थी, प्राइवेट But I'm कंपनी, just लेकिन telling वो you, लखनऊ सरकार के लिए काम just telling करती you, थी। you'll have to go through. You'll have 1 साल to वहाँ काम fight करा, through फिर all वो the वापस hardships. But बेन to में be गया, honest, 25 लाख का पैकेज। there's a lot of people who helped me on और this, bro. अभी To वो be honest, मतलब there 25 लाख there have इन been हैंड से so-called a lot of 1.5 लाख friends and रुपए all महीना that, कमा रहा है वो। but without Eclairs, I don't think 1.5 लाख I'll be 1.6। where I am right now, bro. That's like a huge part of my life right now. I mean, legit, bro. I love her so much. I'm just so grateful that she's there. बीटेक करा Like DTU job से support. अमन। Lower DCs. How he did it though. मैं कौन सा कैफे जाता था भाई, होम टाउन में जो भी कैफे है भाई वही तो होता था। तब तो क्या था, 1.6 लैन खेलते थे मजेदार रोज। क्या बात। Yeah. कोई स्ट्रीमिंग गेमिंग There are a lot of hardships that you 5 राउंड है उधर deal 5 with though. चाकू करो और भजो। Your voice has too much ए pain because it's true, bro. रोज I जाता told था you guys only know if I don't tell to you guys, how 12 will I tell? बजे You तक guys have यही been होता था, family घर since जाते like 1 बजे 3 years for this. फ्रॉम विच मंथ वी So शुड these स्टार्ट, शुड were वी going स्टार्ट super कैट great. प्रिपरेशन? अभी कर लो मई से चालू। These were going super great. वो बहुत ही सीरियस होता, अभी And I चालू कर thought दो after अप्रैल this से the भी। channel has been एक clipped हफ्ता up हुआ a bit, अप्रैल but का। after that, when I was very नवंबर के लास्ट संडे inconsistent, को I एग्जाम was very होगा, कर लो inconsistent, मेहनत but तब तक। since पढ़ाई like लिखाई। a year अरे आओ ना एक it मैच has been खेलते हैं low. I haven't शोभित भाई। seen. अरे क्या मैच I've tried खेलते हैं everything, बोलते हैं। क्या but भाई बोर हो रहा है बैठे yeah, बैठे बेंच। I don't know why. एक घंटा है I've क्या, just पक्की बात है? come to तो फिर this 5:30 को ही solemn देखनी thing है क्या that मैच? people have stopped liking who I चल am रहे and ना people जा have just stopped liking. एक्लेस आओ हम I mean, लॉबी में still I'm भाई not लोडू। giving up. मूवी में ही I है तब still से have a मैं lot of क्या stuff to do. पट्टू आजा खेलते हैं Yeah. भाई। भाई 1 घंटा Bro, क्या match will होता start है? off. Bro, match will start off, पट्टू bro, भाई in आ some जाओ। time. It is क्या? not. क्या It is not wake gunta and all. It's literally starting now. What are you guys saying? पक्का क्या? Bro, no अरे भाई tournament delays their matches for 1 hour, bro. Whoever has second match is previously informed that पहला match आ खत्म जल्दी गए खत्म हो PRX गया। वाले। हाँ वही तो बोल वाह रहा हूँ ना। वाह एक्लेस वाह। बोल रही है अभी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। So that's the scene. So it's been so much time स्टार्ट since हो I've गया seen a इधर तो। 1K stream. भाई मुझे देखने ये मैच में बहुत मजा है, क्या बोलते I'm muted or no? Hate this Discord sound, bro. Yeah, it's been so much time since I've seen like a 1K like stream and all of that shit. But to be honest, I'm done cribbing about it. I know cribbing about it is not gonna help me with anything, and I'm at this point where if I sit and cry, I'm just gonna make you all sad, and which is not the thing that I need to do. So I'm gonna keep trying everything until I die. Maybe I don't earn more money, maybe my parents don't like me and all that shit, but it doesn't matter. Won't like me if I continue doing this and not go to a job. Maybe all of that shit, but yeah, I mean, I think it's better that we look ahead than we look behind. And every day I get the opportunity to still sit with 13 people. So 13 people means technically there's no. So I'm making the whole room laugh and I'm keeping the whole room happy. So that's the way I'm looking at myself now. But yeah, now my inspiration not gonna have with it. I can play a sports team, but now I will be the doctor. Yeah. So your voice has too much pain. I mean, I'm just the honest guy at this point, bro. That's why a lot of upcoming streamers, they come and tell me that I'm quitting studies for this. I'm like, don't quit studies, bro. Don't. I'm very curious how this is gonna play out. What do you think? I mean, he's a crazy good player. I don't know, bro. I'm planning to send a mail also to YouTube because a lot of them have been telling they've not been getting notifications at all. He went plus 69 in I don't know. I think consistency is the key, and let's just start being consistent without ever giving up, and we'll get there back again. We fucking got this, bro. I'm Lord Bathura for a reason. in a Bro. match they Get won back there. 3-1 against Exist. और I mean, लौड़े he's चैट पड़ेगा यहाँ से स्क्रीन पे Yeah, जाके क्योंकि ऐसा भी सीन है कि I can't just blame it on YouTube. I can't blame it on external factors, but there's a lot of stuff inside me also, right? I haven't been consistent, and to me, not being consistent, there were X number of factors that I can't tell on stream. It's like if 50% is my fault for not being consistent, 50% is not. He is an incredibly gifted player. Like 50% is not in my hands, but 50% was external factors that I controlled. I couldn't be consistent even if I wanted to. take that and then ham-fist it into a roster, into a lineup that has stayed consistent
for so very long? I don't know. Where like something is coming. Yes, sir. Hi, Nanda. For a 3 Always love games you, friend. call. Thank you, Ashid. Hello, They now. might, today Hello. might be the day. They really might. I'm having depression in code and now gym. I'm a doctor. That's the plan to work with CSK. That's good for Harsh. I'm Who super the hell is proud. the puppet master of Super this? proud, Who is right? the one Right. who says, okay, I'm going to now be shot calling? Is it going to be Mind Freak as the controller player? Is it Oh, going to be Defy? I really don't know. PRX. Or are they going to be leading Talk to from the team, eh? front lines and suddenly it's Jing and Forsaken who are going to be Just, calling? yeah. But yeah, I'm Like, sorry I if I have bored you so all many telling all this. questions that won't really be answered until we have a post-game interview, and we won't even have one with PaperX unless they can win this thing. So I might have to go hound somebody down in the back rooms at the end of today and be like, okay, who was calling during these moments? Because I need to know who to point Fan to. of you on 90. I really don't know. I'm Oh. excited. I know I'm freaking out about this, but it's just because this is such an incredulous thing to have happening at this point. But I am extremely curious to see what's going to transpire. For context, he was. Don't be the sad. last Nah, dude, I'm not player sad. I'm legit not sad, Back bro. I'm legit down. not sad. I'm grateful. Like I told you, my mindset has changed. before we kicked off VCT Pacific. Even if I'm sad, I'm Now, let's talk grateful. about two I'm legit players, grateful. both sides besides something. Something's obviously the. Let's say it you doesn't know, matter even if I'm getting 12 watching, even if I'm getting 13 watching, even if I'm getting 1 watching. I'm still there in one of the biggest organizations in the country, so I'm pretty happy. Was saying intro kind of ekes out just a little Great. bit I ahead need as to far buy as the stats are the concerned, but skins that's today. one fewer map played as a sample size as I drop my pen. But he's looked good, and they have been fairly interchangeable. We've seen both of them play Omen as well as Viper, so it really does just straight up come down to their map strength. Now, these guys we want to highlight because on the opposite side, for the side of PaperX, is somebody that we expect a lot more of. It's their controller in Mind Freak, and unfortunately, we have not been seeing the same impact plays that we've been seeing from Mind Freak at previous events here in Pacific. Yeah, I mean, Mind Freak only had a 90 average damage per round in their previous match. That's not up to snuff. That's just not going to. No, my mom. I mean, The fuck to watch and love people play games. It Yeah. would Oh, suggest previously, he said that. You know, that's an abysmal performance, and Mind Freak, especially on that split, was really absent. He was left on his own a lot on split to kind of hold down the anchors and stuff like that, and he just couldn't get it done. He wasn't able to really hold down the flanks for his team. So for Mind Freak, I mean, frankly, against Team Secret, the Fracture and the Haven went fine for Mind Freak. He was only like -1 or something, or -2 on both of these maps, but the split was really not good. So I need to see him be a little bit more effective. He did have some, good moments here. When and you there. come in Pune, I will give you a bit. Done, bro. Tough Service. positions and Done, wasn't bro. able to, Service, have you joined you see with some of the really the good Discord controllers group, like WhatsApp group? Like Mako, he isn't quite there as one of our our controllers that start with M. Yeah, he's just one of those guys that we expect a lot more from, and we expect a lot from all of PaperX at this point, just given the highs that they have achieved. Still the highest placing APAC team that we've had so far. But we're looking for that consistency. We're looking for that return to form. And unfortunately, it does feel like he's been a little bit more out of sorts compared to the others. So we're hoping that that is going to be fixed and that we continue to see, strong impact plays from this guy. Because like you mentioned, you throw in Mako's name out there and whatnot. That is a role where you can absolutely take over a game. We've seen it time and time again from so many people. Munyet now setting a new LAN record for kills. Then I played gold. ఒక్కుంటా పోలే నువ్వు ఇట్లా అయితే ఎట్లా రా కష్టమే కదా బ్రో ఎంతైనా ఇక్కడ అమ్మ నాన్న కూర్చోన్నారు పిల్లాడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అని ఏం చేయకుండా వెనకాలకుంటే got 15 kills and he got 5 in like kind of the controller versus sentinel or controller versus controller matchup. So that's like on the I'm back side of things. that's He good. went 0-7 in first kills. When you will come to Delhi, Rohini, do I do a Twitch stream? Depends on you, bro, Sahil. I've told you openly. Well, he did okay versus Envy and Jeremy. You're not planning. You don't do your end goal and your career is not to become a streamer. You know it. I know it. Don't waste time. Legit, don't waste time. He couldn't get it done. Yeah, so I do. That's sad, bro. Harsh. When you come to Delhi, Rohini, I'll give you my sister, girlfriend, sister. Today. Bye. Sorry, I'm just gonna make these things. I heard that's what casters do. My parents say what's gonna happen by playing games. I'm not sure. I mean, it's changing, bro. I'm good that I'm I here. was also a bit surprised. I didn't think it would be this soon. I knew it was coming, but I didn't think it would be this soon. Now, with the addition of something on the roster, how does that change your predictions? Do you think this heightens their chances of winning today, or lowers? There's a lot of things that can happen. I mean, we're both going for, it's he and I together, and you're split away from us here, and that's understandable. But yeah, because they're gonna. I really don't even know at this point. Know. I feel like this makes. Oh, wait, did I show you the mouse that Adam gave me? Unexpected curve. What Adam gave? Maybe it also Adam gave me this mouse. He got it from. Once they get into the game. I mean, maybe he
does. He got it They from have London. भाई सब लोग PRX हेलो performance that T1 can't keep up. I really हाँ don't बटू know until I see it. हाँ I think और based मचा on what we've seen, PRX बोल रहे हैं सब लोग T1 का कोई सपोर्ट ही नहीं है आज अरे क्योंकि समथिंग खेल रहे हैं ना समथिंग is playing today. No Benkai? I think so, no Benkai only, but I don't know who is. Hard bro, he's a crazy Igil dude. But I don't know who they benched. No, this is the Death Adder V2 Pro. Death Adder V2 Pro. Igil को ही bench किया बे? So what? Something is Igil or what? I think so. I don't know who they benched though, but he's playing. That's how much we came to know. Like Benkai basically has. Are they going to run triple duelist? I don't know. We're going to see Jet, Raze, and Yoru all on the same map. I have no idea. Yeah, I think that this just adds so much confusion into the gameplay that it's really hard to get a solid read on what the hell we're about to witness. Now, I know you guys are the experts at the University This of is VCT the Pacific, but Death Adder V2 I Pro. think this increases the chances of PaperX winning. Because if there's anything that PaperX does well, it's unpredictability, and they just threw I need to that cut in. my nails too. With that, the stage is ready to go. We're ready to open the show, and I'm so excited to see what's going to happen. Let's go check it out. What, bro? Igil का PRX कौन है? Benkai only, bro. Igil कौन है? Benkai. Maybe since something is playing now, maybe Dava is Igiling. I don't know. टीमों ने एक बार जॉर्ड बोलना जरा टाइम्स Anteva Harshit. Bro, Adi, I shouldn't technically be looking at others' growth and feel jealous, bro. అది జరుగుతుందన్నమాట నాకు అందరూ పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు भाई कुछ भी बोलो माँ कसम जिंग क्यूट तो है भाई स्टार्ट हो गया जिंग क्यूट तो है भाई कुछ You have my seal of approval on that. My dad joke seal of approval. I made it. क्या हाँ जिंग भाई Debut. Nice stylish pants as well. ये है क्या something भाई यार? हाँ यही है something हाँ यार ये तो I am 17 साल so incredibly curious as to what this means for the in-game plan. oh shit wait hers for real that's crazy He looks like Ruchi dude. congratulations Harsh Bro something कितने साल ये देखा PRX Bathura Whether or not that works. Yeah. Bro why did they change the jersey dude? ये जर्सी भी अच्छा है भाई डायनासोर से No, जर्सी the old jersey was far better dude. I have the old jersey do you want it it doesn't fit me 3XL है मेरे पास क्या PRX की जर्सी? हाँ तेरे को भी तो चाहिए क्या पूछ रहे हो तेरे को देने के लिए ही देना यार देना हाँ बुंड दोगे हाँ देंगे ना एक दिन शी नहीं रे कितना हाइट बहुत कम है रे हाँ छोटू है मिला ना उसको GXR में हाँ क्या हाँ Bro they dropped Benkai dude तेरे को ये एलेक्स है ना वो PRX का कोच वो DM टीममेट्स था तेरे को पता है तेरे को ये पता है DM PRX में खेला है CS को पता है भाई जो अगेन एट सम गर्ल्स प्लेस नहीं रे नया बूट कैम्प में हो रहे टीबोन भाई आपने फ्लैग देखा ना लेके आ गया मैं बेसिकली वो फ्लैंस जो बनाया था वॉच बट जर्सी वाज रियली गुड कुछ भी बोल मानो या ना मानो ब्रो हाउ ओल्ड इज समथिंग रे फुल कर रहा हूं Bro, were you here when Hershey got a haircut? No, after I left he got a haircut. Check my stream. I know, I've seen him. I saw him after the haircut, if that's what you meant. 21 का है भाई PRX समथिंग है किस साल का भाई 21 का है रशियन है
on paper. Rex, okay. T1 have looked very clean on Haven, so this makes sense. Solo with 2 wins. भाई इसका आज वो है क्या? इसको क्या बोलते हैं जो बंदा पहली बार खेलता है? Certainly. Debut. I think makes a lot of sense to me. इसका debut है आज? It's been a fairly steady pick and his very So Murthy one said don't compare. Wow, something rank 1 नहीं में दिखा सारे solo. इनका टीम में सब लोग रैंक 1 to 10 पर ही है। देखा सो उनको बोला हर्ष लव्स हिम ब्रो। अरे मेरे को बहुत लम्बे बहुत अजीब लगता है। जीवन भाई कुछ भी बोलो, पीआरएक्स के पास भी रशियन मिल गया। T1 भी अच्छा खेलता है रे। सारे जी प्रो यूज कर रहे सारे। Look at their monitor arm, dude. मस्त है ना? साला हमारा अच्छा आता ही नहीं है इतना। अरे क्या बोला है वो, एक है ना 6K का लिंक भेजो तेरे को। मुझे भेज दे यार। अमेज़न में ही देखा मैं, मस्त मस्त है उसका रिव्यूज भी। जो भी मुझे ये रिकमेंड करता मैं वो लेता हूँ। राइट टू एस के पास भी अच्छा मॉनिटर है। हाँ वो वाला लिया तो? हाँ जो उसने बोला मैंने वही लिया। PRX का सुना है समथिंग? हाँ क्या? I kind of figured it might be something since he was the one coming in, but that also leads me to believe that is it Forsaken who's going to be calling the shots for this game. I don't know. It scares me. Again, we might not know until it's all over, but as soon as we find out, I'm very curious to see who it's going to be. But I'm just as curious to see LG का watch party in Pune. I know, bro. The side of PRX, can it work? Yeah, our curiosities are super peaked right now. These are two different teams with two very different styles of gameplay. So let's get straight into it. We're going to join our casters, William. ये वो देख fan लेके आया था भाई। I'm glad we don't have triple duels today, William. Well, I am not glad because I would have loved to see triple duelist. You know what I want? I want triple duelist. Yoru has to be one of them, and then Gecko. And then Viper. That's my dream. William wants 3 Euros. I'll get right to the हाँ point. गेको है भाई तो बोल रहा हूँ। We've got an incredible match coming up here. T1, obviously the most storied esports team in the region, South Korea. पूरा grinder लग रहा है मेरे को something हाँ। Perform at this event. So far they look very strong overall. है भाई इन लोगों ने नाम ही नहीं यूज किया। Bro, EMEA में allowed है तो इधर भी allowed है bro. They are all playing on the same patch there in Korea. It is not allowed for us, I think. Bro, no Gecko bro, कहाँ है Gecko? अरे Gecko allowed है, ये लोग pick नहीं किया। Over in Challengers Japan. Now he's on the big stage Yeah, I don't know, bro. with an amazing PRX who's had such strong colors around them. ये player तो बहुत मारता है भाई, घर पे याद है किसी को? Now he's at the forefront. हाँ कार पे नहीं। भाई वो साया player भी मस्त मारता है। साया भी मारता है भाई। साया player भी मारता है बहुत। Actually extra clean whenever they've played the Harbor Sky comp on some of these maps, right? Carpe kind of double team ये उसका क्या बोल रहा हूँ? टिबन तो पूछ रहा था ना डॉट क्रॉसर इसमें देख कितने लोग डॉट क्रॉसर यूज करते हैं। For being explosive, for being aggressive, but is that going to cause any overextensions? T1 has really tightened up their gameplay overall as we go here into map 1 on Pearl. The wall, and this is Munchkin just trying to bait out everything just for Saya. Saya wants one kill, he's greeting it, he's got to dash out. And a lot of missed shots there on both sides. A little bit of a shaky start here. Some damage dealt. Carpe is already out of the picture. Yeah, so there was a quick rotate from T1, right? And we saw it on the minimap at the start of the round. They instantly used the high tide on top of the रेड मिल गया ना वरना भी। no one on A. Let's rotate to उनका B. स्काई कार पे तो मर गया। Carpe does get caught right at the end, trying to just cover for Saya's exit. Bro, मेरा Corsair है। And this means T1 now actually is lacking a lot of info. Munchkin gets a spot. They are still planning on coming now over into B, and they're going to have to push in here pretty quickly. They should be able to secure the site relatively safely. Oh, Jing wins that duel with a nice jiggle. All right, we see Zeta with a double kill there. He's taken out by Jing, leaving only Intro right now in a 1 versus 3. समथिंग आने के बाद Intro does drop 1. Jing 4 सेकंड को किलजॉय खेलना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे समथिंग कौन है? Shot is fired. He takes out 2. Only 5 HP though.
हाँ He needs to get a head. Oh. Yeah. Before I could even finish my set. A lot. Sounded like you got shot back कच्चा there. है में भाई मेरे He's gonna Great round there. Actually came down to the wire. Intro looking very good, but unfortunately not enough to take out that final player with only 5 HP here. Yeah, now I will say, I mean, just off of the pistol, PaperX, they seem quite more composed, right? They even sent Forsaken through mid to cover those flanks, to get information on the rotates. And now, of course, a lot of us curious. I gotta imagine that Dubai now has a bigger role in the calling for this team. Of course, like the Deska said, we'll have to confirm after the games are over on who exactly is IGLing now that Benkai is out of this map. We did have a technical pause here. Well, now we're going to have more time to speculate about who's we're IGLing on gonna- PaperX without solid information. So let's hopefully we can find out soon what exactly the issue is going to be. The But, casters abroad, bro. great How they try starting to build round a here. story, how they try to have a good chat. That's all about They good came casting. into They देख हमारे लोगों को छे. this season, a lot of people regarding them is maybe one of the strongest teams. They haven't looked bad so far. They are sticking with that तूने देखा उसके लिए special? aggressive and explosive kind of style. ये Getting कैसा in, टेबल डाला है getting उसके into लिए? देख positions, रहे हो? trying to lock the opponents in, sometimes then going around and circumventing those positions. Notice किया किसी ने? But obviously one round, there's not a whole lot more to talk about in regards to that. वैसे ही T1, खेलता होगा वो बंदा. in the last 2 weeks, they've looked very clean. They seem to continuously bring a better iteration of themselves each time they're here on the stage. Hopefully they get this pause resolved and whatever the tech issue is, so we can get back into this. Yeah. We've got fans all ready for something here on his debut match of VCT Pacific. And देख भाई ऐसा he's chill है a little बंदा. relaxed, right? I mean, listen, he's used to putting up great numbers. The question, of course, has always been, can he live up to the Generally, bro. ये उसका mouse pad देख लड़की है. stage like this and a team like PaperX you just तो mentioned? mouse pad देख. Something का mouse pad anime का लड़की है. Perhaps one of the strongest teams in VCT Pacific, because technically they do have the best record of any Asian or भाई Pacific. वो साया player G102 यूज कर रहे हैं. भाई 2000 का माउस है. अभी कोई चैट में नहीं बोलेगा मेरे पास जी प्रो नहीं एसी नहीं मैं जाता है. वो देखो 2000 का माउस लेके वो देखो किधर खेल रहे कौन से स्टेज में. भाई साहब. Hey cuties. As well. Hey So, cuties. fans for Dubai as well. Thank you. Writing their signs in both Korean and English. So Yeah, very cool. This Hey, Clash, don't get jealous, okay? No photos. No photos, no photos, it's please. amazing to come watch these matches in person. I think we have just such an incredibly cool stage. And yeah, definitely if you can come down to the players, cheer them on. now the question becomes, you mentioned Thank you, T1, Clash. and मैं the पैदा Desk होने से mentioned ऐसे as well, पैदा right? हुआ. मैं भी ऐसा कुछ रखूं क्या यार? काश मेरा भी एम इंप्रूव भाई तू श्री हनुमान जी को रखा तो भी तेरे एम वैसे रहेगा. मिल गया भाई मुझे गेम मिल गया Pacific and $3 में. started to play a much more utility info heavy, Download very हो रहा kind है. of कौन सा? traditional textbook Valorant. Need right? for Get Speed info Unbound. through a utility, the ones that come back with a cooldown, then rotate, right? Take थोड़ा car space racing one करने का step मन है. at a time, and तेरे that's पास been wheel है working क्या लो ना? well for them so far. नहीं. Now T1, one of the 4 teams still अरे undefeated टीवी में here in खेलेंगे VCT टाइम पास. Pacific. Of course, you know, PaperX already took a loss last week to Team Secret. भाई They have an 3,500 का upset गेम risk है. now, घर but जाएगा है ही नहीं scratch पैसे. जुगाड़ ढूंढ रहा था मैं. ठीक है. यस. Within the weeks that we've had here of VCT Pacific is the ये fact देखो that ये they कोरिया में लिखा है T-Bone बड़वा. very dominant. Yeah, and part of it is again just that play style, right? They play much सारे फैंस safer, कोरिया much में. वो भी कोरियन में नहीं लिखा, कोरिया में लिखा है. ठीक. team like PaperX, that can sometimes be your downfall. So that's kind of the focal point for today. T1, how do they अरे ये potentially बंदा. have to maneuver around the style of PaperX? Okay, while PaperX, you know, to have they change G1 anything, or is 02 this use just कर रहे हैं extra भाई. firepower on top of their original speed and power? Well, can happen with me also, bro. So whenever you're using the mouse, whenever you feel that scroll down हो रहा है, scroll wheel को पकड़ के ऐसे थोड़ा ऊपर खींचो, वापस यूज करने लगो, वापस ठीक हो जाएगा. अभी भी ऐसा हो रहा है, ऊपर खींच के ये करो, ठीक हो.
that gun advantage being so strong. क्या बोला? And so we've got a spike plant right away over here at B. Forsaken. Oh, he's trying to greet for this kill. 4 but he's second already buy. done so much damage. Much 4 can actually second buy. win with a Bings जैसा क्यों खेल रहे हो? Crazy. It was like he just had the right pattern to move out and then move back in. And the shots were never really synced. The crosshairs could never really quite center again. Something takes out Carpe, leaving only चलो Intro and Munch जा in रहा हूँ मैं, round. बाद में मिलते हैं। बाय लूना। रात को खेलते हैं, ठीक है? हाँ बुला ना मेरे अरे को, तो लूना अगर स्लॉट है मैं तो मेरे को कॉल करके बुला। मैच चल रहा है यार अभी। मैं बिस्तर पे लेट के देखूंगा, मैं बैठा बैठा थक गया कुर्सी पे। चेयर को ऐसे पीछे करिए। हाँ जी, तब से चेयर पीछे है भाई, ये टट्टी सा मैप है बहनचोद। चलो एक मैप देख के जाते हैं। देखते हैं भाई एक मैप। वैसे 2-0 होगा पेयर। अरे जिंग और फोरसेकन दोनों क्यूटीज हैं भाई। जिंग ज्यादा क्यूट है। ये देख स्प्रे ही कर रहे टिपॉन। Bro, this guy is not using stretched ray. He is using stretched only. नहीं, I'm talking about something. Something is not playing stretched. I am playing on stretched only nowadays. भाई मैं YouTube ब्लैक पे हूँ। बैंक का इन्होंने पूरा बेंच कर दिया या मतलब हटा भाई भाई या? I think rotating roster. तो सही तो खेला तो लास्ट मैच। Rotating roster, bro. Maybe they're trying him out. सीक्रेट के अगेंस्ट था ना इनका लास्ट मैच, हार गए थे पेपर एक्स। हाँ शायद। हाँ अरे देखा था मैंने पूरा भाई, टीम सीक्रेट बढ़िया खेली थी। अपेरेंटली इनका वेल क्लासिको था वो VLTG वाला। क्या वैसा है क्या सीक्रेट और पेपर एक्स का? हाँ वैसे ही था, और लाइक सीक्रेट ने काफी टाइम बाद हराया था पेपर एक्स को। अच्छा था मैच भाई, देखा था मैंने पूरा। दो भाई वो लोग पूरा एक्सपेक्ट करके पीछे ही खेल रहे। ओ भाई साहब। ओ भाई फोरसेकन और जिंग पता जब इनकी टीम चोक कर रही थी एकदम तभी भाई 3-3 4-4 मारने लग गए। वो कास्टर भी बोल रहे थे। कि जैसे ही टीम हटने लग जाती है ना, ये फोरसेकन बहुत स्टेप अप करता है भाई अपना गेम। हाँ हाँ वो तो बात तो है भाई। आउट ऑफ नोवेयर एकदम से। वो देख एंट्री क्लच किंग है भाई। एंट्री क्लच किंग है भाई। इन्होंने क्या क्या बकचोदी हुई बड़ी स्क्रीन पे। A huge win, even if he can't get alive. I mean, these were all recycled weapons on the side of Paper Rex. Bro, I can well, okay, so you can one with visit after the PRX dead. They can't. I mean, yeah, they could try to भाई हार्बर कितना स्पैम हो रहा है आज। 3-3 4-4 दीवार बना के। सामने वाले यूज नहीं कर रहे। PRX नहीं यूज कर रहे। तो अभी डिफ्यूज पे नहीं देखा तो फोरसेकन ने जब पीक लिया, वॉल दिख रही है, बंदा ही नहीं दिख रहा। अरे वो हाँ उसका गोल भी था, उसका वॉल भी था। हाँ एस्ट्रा का भी पुल है, वॉल भी दो हैं, कर्व वाली सीधी। Unless they get like 2 picks early, this is not the round to use it. They're more concerned about just securing one of our ult doors. We just saw the mini map. Yeah, there's a lot of utilities. आया प्लेयर भाई एक क्लासिक लेके आके ऐसे पिक कर रहा हूं। Like B's going to be the target unless they do try to U-turn around this. I mean, T1's just gonna they secured the orb on A main, and now they rotate heavy shift over to B because they hear noise. They bought enough time with the Viper toxic screen. Now the only difference is Munchkin still remaining on A with his utility. स्क्रीन टीयरिंग क्यों हो रही है इनकी स्क्रीन पे? Try to scout layers upon layers of walls over here onto the B side. It looks like PRX continues to move. Oh boy. Something done takes Carpe out. आज नर्फ होगी देख। Carpe had one job to try to hold on to backside, but he can't. And Paper X are starting to turn things up to 11. Oh, Munchkin so nimble, but there's just. Oh, knife कर रहे। Knife, let's go. Let's go. मैं तुम कहाँ देख रहे हो बहनचोद? 4 बंदे जिंदा है मेरी स्क्रीन पे तो। क्या? 4 बंदे कैसे जिंदा है? तू ट्विच पे ही देख रहे ना? पेपर एक्स के 4 जिंदा है। अब हुआ है नाइफ। मैं YouTube पे देख रहा था। आई समथिंग का आयन बडी कैसा है बे? एक्ट 1 में आयन था क्या वो? वो जी प्रो हीरो है। जी प्रो हीरो क्या है? ब्रो आयन बडी कैसा है भाई इसके पास? PRX so far just forcing their way in. Something आयन बडी है। Round 5. Can T1 try to bounce back, or is the pressure just going to continue to mount? We saw the birds high five past each other now. We're going to see some movement over here to A.
Adriana Chechik. Oh भाई चेस खेल रही है ये. This is the style they play defensively. They will always get early इसलिए मैं touch information नहीं खोलता. and then force a hard rotate to shift their weight. And this time they're doing it. ये T-Bone वो G102 नहीं है. And Paper Rex, because of the pit, they weren't prepared Hello? to jump on it right away. ओए T-Bone All they wanted as well. वो G102 नहीं है वो. They'll happily rotate. But the problem वो G Pro Hero करके एक माउस है. they don't actually have control of मैंने भी पहली बार सुना अभी. so they cannot shift entirely over to the B site. Okay, they begin to creep over here into B on the far end. तू पूछा आयन तू पूछा आयन बड़ी कैसे है क्या? Nice shot. Bro, you know, only thing that can create that spot is Cypher Scan, nothing else. He's always good with these scopes. Earlier he whiffed on the Marshall, but he gets ये हार्बर के वॉल के थ्रू गोलियां जाती है नहीं? जाती है. Lockdown used just to try to clear out. मैंने आज तक हार्बर नहीं खेला. Yeah, they're not into B yet. Less than 30 seconds now on the board here. They don't have an option. They have to run. They're going to have to try to force. It's possible that T1 may have iced them out enough that now they're going to be almost like walking into that house at home alone here. Oh, beautifully done. Carpe gets the kill. Down B. Paper X has to. They can't. I don't think they get the plan. No, they have to save. They cannot try to. भाई हाँ का इसने. Okay. Or Mind Freak can kill him. Yeah, सबसे I hate this angle. Like, well, I'm not greeting if I'm just killing them right away. So. Okay, so the first win there for T1, a narrow victory as the spike was marooned over to B, and not enough time in that round. तू ही पिक करना है जाके छुल के आया सेव कर लो चुपचाप. भाई इसने ऑफ लिया, चलो इसकी ऑफ देखते हैं. चल तो गलती है भाई. 4v1 हारे थे. पार्ट 2 पूजा पीक लेके मरे, फिर मैं मरा, फिर क्लियर्स में नहीं खत्म. यही मैप था. Also because they have the blade storm on something. So ये शॉट है लेकिन इसके पास आएगा. But the importance here is something buying the operator is purely to duel against Saya player. He just wants to win that opening duel, and then he's going to have to बात कर रहे हैं? English. He's checking where else would that operator come from. Saya player has. तो आपका तो फास्ट इंग्लिश का आदत ही नहीं है. So now he's checking that because surely. बोलो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा भाई. Bro, टरेट मारने के लिए उसने वो ऑन किया, पता है? No connections just yet. देखा तूने वो? नहीं क्या हुआ? हाँ वो मॉली हाँ. स्वाम पता नहीं रे कुछ तो रहला छोड़. केजे का स्वारम. ओ भाई साहब. दवाई भाई को दवाई दे दी इसने. दवाई एक टाइम पे ऑफर था, अभी क्या खेल रहे? स्काई खेल रहे भाई. सीएसगो में ऑफर था ना वो दवाई. और क्या? खेलना पड़ रहा है यार. वेलो की ऑफ भी तो डिफरेंट है. भाई तू तो दवाई के लिए बुरा लग रहा है. मैं तो 4 सेकंड. क्या था वो चेंबर में जो मारता था भाई वो. अरे शोभित भाई आपने ये खेला CS2? नहीं मिला. राघव भाई को मिला, हमें नहीं मिला. मैंने तो चेक भी नहीं करा. मैंने 2022 से ही नहीं खेला CS. क्या फेक था भाई. देख फेक देख. मई 2022 से. मुझे पता है क्या? Something versus Sai player. Let's go bro. Low, let's go. अरे कर गया. क्लियर नहीं किया उसने. He's actually going to push in. Unusual angle here. This मैं. अरे? Yeah, Sai players just trying to make sure no one's pushing into T1 का IGL. right? Just make sure that backup can. मेरा IGL now I think is दवाई. हर बार स्काई होता है IGL याद है. No. I think is हर बार नहीं होता है. Haga. Intro takes him out. He might not need it. Zeta's just going to get a free kill onto something. Zeta मर गया. क्यूट लगता है. And now they know main is clear. They have to be stuck in art. Shot spam through here, and he has almost 4 सेकंड ने लिए दोनों. Oh! 4 सेकंड. 4 सेकंड for you baby. देख रहे हो? भाई कुछ भी बोलो. इजी. कुछ भी बोलो. कभी भी टीम को जरूरत पड़े यहाँ ऊपर आता है भाई ये बंदा. 4 सेकंड में स्टेप अप. सारे एमर्स भी है भाई. हाँ? PRX में? हाँ भाई. लेफ्ट हैंड गाइस मेरे दे. और ये 18 19 साल के बहन शो. Oh, let's listen to this. Yep, everyone's just quiet for him. They have faith. It was that perfect spray transfer, just letting the gun glide right up to that second target, getting that kill. Pump the brakes here. T1 calls for a timeout. They need. एक चीज नोटिस की लेफ्ट हैंड खेलता है वो.
लेफ्ट हैंड तो मैं भी खेलता हूँ बट गेम नहीं। लेफ्ट हैंड में करता है। लेफ्ट हैंडर है गिनीज रिकॉर्ड में। मैं एम्बिट एक्सट्रेस हूँ भाई, बहुत ग्रिप्स। मतलब बिहार तो है। एम्बिडेक्स से क्या तू? इनकी कोच तो पूरा कोट वोट पहन के आया भाई। नहीं, मैं जो वैसे समझ राइट रहा हूँ वही हैंडेड ना। हूँ मैं। अच्छा भाई, हाँ नहीं भाई वही पूछ रहा था, मैं जो समझ रहा मैं हूँ उसी माउस लेना और वैसे कर। पेन राइट हैंड से पकड़ता हूँ, बाकी सब चीजें लेफ्ट हैंड से। जरूरत पड़े तो दोनों हाथ से। हाँ समझा only। समझा। कभी कभी ग्रिप चेंज करनी पड़ती है ना। अरे यार रहने दो यार, तुम लोग डिटेल्स क्या तुम बच्चा साले। नहीं भाई, ग्रिप मैटर्स बता भाई। क्या ही तो। सारे बस इतना हिम्मत चाहिए ड्राइव पिक लेने के लिए। साया प्लेयर ऊपर है, वो देख भाई कैसे खड़ा है वो साया प्लेयर ऊपर। कहाँ पे? ये अच्छी एंगल है वैसे यार। अरे स्पॉट हो गया, स्पॉट हो गया साला। ए अच्छा एंगल ही है वो, सो गया वो। ब्रो ये लोग हर एक पिक्सल बाय पिक्सल क्लियर करते हैं बे। बेस्ट माउसपैड अंडर 2K Amazon Basics। बीटी है भाई। Not even kidding bro, Amazon Basics। रीच से ज्यादा बीटी फिनिक्स का फ्लैश है। Remember how breach was when the initial days? यार नो अभी तो ब्रीच वेस्ट हो गया। डॉज कोई भी अभी फ्लैश डॉज भी कर सकते, टाइम भी इंक्रीज कर दिया ना ब्रीच का। रेस के तो भाई दोनों नेट्स थे पहले। क्या रेस का दो नेट्स था? दो नेट्स और रेना के 4 आंखें वो तो रहते थे, 4 चूसने का रहता था। अल्ट भी बहुत वो होता था। ब्रो ऐसे पीएक्स के लिए ना Fnatic को भी आ रहा है पक्की बात। हरा तो देगी भाई, टैलेंटेड। और ये नहीं कि एक या दो बंदे अच्छे, इनके सारे ही अच्छे खेलते हैं। सारे के सारे मतलब डुअलिस्ट दोनों ज्यादा फेमस है बट स्टिल। हाँ ये फोर्सेकन और जिंग का डुओ ज्यादा फेमस है। बेटा में 2 नेट्स था। अरे वो डुअलिस्ट तो थोड़े फेमस रहते हैं बट सारे अच्छा खेलता है। ये नहीं कि कोई भी इनमें बॉटल लेके चोक करवाता है टीम हाँ को, वैसे सब तो अच्छा है। खेलता है। Okay, so this time the setup seems to be to just push जिंग को out भी of बिल्ली the पसंद main है, मुझे भी forcing on बिल्ली the पसंद mini है। map as the observers just cover मेरे को भी PaperX to set up पसंद है। PRB. It's an all-in on the Yes, beat. and I'm Now not that they've talking about actually pushed cats. out on A main, they'll keep side clear there, and then they don't have to shift entirely. Right now they're keeping. Harpe checks out R. That allows Zeta to complete his rotation to B. It's a step-by-step process for T1. This time the timing actually working out. Where These T1 abuses will at be minus ready 5 plan for you the run. read. Yeah, It's true. actually baiting out these ultimates for PaperX because no further movement has been spotted. Bro, from where evolved this? Arbor ने गया। इनको तो पता है। ओए क्या मेरा लोडिंग पे क्यों चला गया? क्या escape था ये? उसने किल कैसे लिया उधर? Bro, they could have just spammed, bro. Bro! Nobody gets the kill off of the blind. What is Bro! अरे भैंचो। भाई क्या मार रहे हैं? ओ भाई। not right on the stage right now? हेलो? हेलो? भाई ये जेट प्लेयर्स में डर ही नहीं होता किसी चीज का जिंदगी का। मुंह पे चढ़ के मारते हैं। That was like it was 5 minutes just flying around, taking out henchmen. Oh, he gets it right before his flash. But yeah, I mean, that's the best स्काई way to भी मरी describe जाती है it. अगर उसे गोली ना पड़ती तो। People are dying from all angles, but it's actually all something. It's crazy. आज पैच नोट्स आएगा। I mean, हाँ। T1 shaking. नहीं डैश स्लो होगा, स्लो मोशन में डैश करेगी जेट। दूसरों के लिए इजी होगा मारना। Wanted to see again in 2023, and we just didn't get it at Lock-In. We didn't get it in weeks 1 and 2 here in Pacific. Now they're back under a new name with something. They just move so quickly, and they're so clean with how they clear every angle. ये समथिंग पहले कौन सी टीम में था? नावी? नहीं जापान का टीम में खेलता था। You know, they just start to lose control of the round itself so quickly. Zeta finds more. चाटा ज़ेटा चौको दिया। भिंडी लगा है। Bro, मुझे तो डोमिनेशन लग रहा है पूरा।
so he knows he picked up the भाई ये देख साला मोटा है रे वो तू सेट मोटा है रे तू मामा भाई सिर्फ बी सेट का अब्यूज कर रहे रे सिर्फ बी ये रशियन प्लेयर है क्या ये सब? हाँ रशियन वो ओए रशियन का परफॉर्मेंस हर जगह ओपी। फ्लैंक आ गया तो फ्लैंक नहीं ब्रो वन ऑफ ले उसका अरे सालो ऑफ ले रहे उसका तेरे पैसा बहुत है Well, and here's the other thing. I mean, ults are being used on both sides. 8700 है माइंड फ्रीक पे बहुत पैसा है Doing what they can. But such crazy rounds, man. I mean, I can't help but imagine that this T1 probably also thinking, okay, this was not the type of Paper Rex we prepared against, right? If you look at their movement, they are relying on the fact that, yeah, Paper Rex, they like to all in. बट कुछ भी बोलो 4 सेकंड को जेट दो ना दो बंदा मारे गए भाई वो भी 11 किल्स के साथ बैठा है कच्चा है ये इसलिए भाई किल जो से ओए Bro, how did he dodge that thing, dude? he dodged when you crouch and go down he can't see you भाई काउंटर किया उसने क्योंकि पहला राउंड ऐसा मारा था ना वापस वही एंगल लगाया है करके इसको पता था आउटप्लेड अरे कर्दिस्तान पे एम पे आ रहे वो लोग एम्पायर और एम पे हार भी गए रहने तो वो भी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं अब इनके लोग तो मुझे को मस्त है क्या Oh, absolutely. I mean, I think if you're Paper Rex, you kind of fish for information until the 40-second mark. Bro, but this guy is crazy, dude. Bro, that one round itself. अरे इसका क्लिप्स दिखाता तेरे को रुक टीमोन इसके बाद ओए क्या भाई मैं बोल रहा हूं वो सो रहा है क्या वो नाइट्रो वो एंगल खेलना ही नहीं मेरे को वो सो गया भाई वो सो गया क्या वो इंट्रो है क्या मैं नाइट्रो बोला उसका नाम दिख रहा था वो एंगल बहुत चोंटे एंगल है मैं बता रहा हूं मैं भी वो सो गया वो बंदा भाई T-Bone, Adam got me mouse and game now. Adam got me mouse and game. There's a Death Adder V2 Pro. मैं वही यूज कर रहा हूँ हाँ थोड़ा heavy है लेकिन G Pro से Sad about it. If you don't want it, give it to me. I'm not even happy about it, Eclairs. भाई See, I mean, I'm not sad about it. हाँ wireless है अरे मैं वही यूज करता हूँ V2 Pro थोड़ा heavy है G Pro से लेकिन अच्छा है नहीं आदत हो जाएगी भाई हाँ भाई आदत तो लगना पड़ेगा ना भाई बोल ग्रिप बेटर है ना G Pro पूरा ऑयल हाँ I feel वो साइड में रबर का मस्त है बे हाँ इसकी ग्रिप अच्छी है बहुत कौन सा तेरे पास भी ब्लैक ही है क्या यस ब्लैक ही है ये अच्छा सिर्फ ब्लैक का ही है डोमिनेशन बे टू बी ऑनेस्ट ये अच्छा चीज नहीं है बढ़िया बैंकाई के लिए ऐसा ऐसे दिखता तो बैंकाई को बेंच पे रख सकते हो और बैंकाई अच्छा बंदा है भाई दवाई दो मार दिए अरे एस दो एस अरे बेंचो My God, what the fuck? भाई मैं भी ऐसे ही खेलता यार बात कर रहे होंगे ना समथिंग एक मैं मारू केस नहीं एक तू मार जो हार्बर को उसने वन टैप दिया फॉर सेकंड में मैं बोला भाई क्लोज गेम होने वाले इधर चैट हो गया क्लोज हो गया हाय विजय भाई 2 एस मारा मतलब 10 किल तो इसका ही हो गया ब्रो आईजीएल दवाई भाई है हाँ भाई तो बोला दवाई है आईजीएल दवाई भाई है आईजीएल दवाई कर रहे हैं आई कैन फ्लैश फॉर यू मतलब कौन स्काई है ए वो कोई भी बोलता है फ्लैश कर सकता है भाई क्या पागल है रे तू फ्लैश करेगा वो शॉट है समथिंग पर कुछ भी बोला ऐसा स्किन्स विन्स का कुछ नहीं है समथिंग भाई देखो डिफॉल्ट ऑफ में खेल रहा है किल फॉर सेकंड ले चुका उतने टीम के पूरे मैच में होती है बेल्ट मारेगा ये मेरे जैसा खेलना है रे स्किन्स मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेने का ओ प्रदीप भाई थैंक यू सो मच फॉर द एसजीडी दैट इज द रोलिंग इन हां प्रदीप भाई का गाना सुना होगा समथिंग मेरी जान आप जाओ इधर से समथिंग मेरी जहां कल्याण से एक बार इसकी गर्लफ्रेंड गाती होगी गाना ये है ना हां भाई ब्रो ये कोई टीम में था ही नहीं ना समथिंग इज मैरिड ब्रो क्या बीवी गाती होगी इसके गाना समथिंग इज मैरिड 21 इयर्स
They don't know if Device moved yet or not. Now they know. Oh my god. In the blink मैं of an फोर eye, से नहीं ले जाएगा ये it's तो over. क्या ले जाएगा? 1 to 11. राउंड T1 is दी एंड getting भाई cooked. फिर 3 किल ले लिए उसने They're in a pot of stew. It's heating या up. तो वो इसलिए कर रहा है ताकि अगली बार जेट से खेलने को मिले 19 रिबन भाई। भाई Boiled. रिबन भाई 3 का केडी लेके बैठा है ये दोनों मैच इतना जल्दी खत्म हो गया, मेरे को लगता है आप वापस लाइव आ सकते हो 8 बजे वैलोरेंट लाइव इंडिया करके। अगर स्लॉट है तो बता दियो। वाह कसम। Eclairs. I'm buying all the 3 bro. One guy is giving ये it. उसकी मॉम है ना? जिंका मम्मा है। जिनका मम्मी है ने? जिंका मम्मा है। What are you buying? The 4-second knife, Vandal and the Phantom. Yeah, dude, they're worth it. Yup. I was skeptical about the Just not knife. the knife, but the Vandal. Yeah, I'm is still one of the skeptical best about the Vandals. knife, but the Vandal and the Phantom We to can do pakka. without the knife. It's not like it's such a great knife, but the Vandal is the best Vandal. Yup. Bro, इस लीग में G वर्सेस PRX भी होगा क्या एक दिन? होगा। राउंड रॉबिन है ना? हाँ होगा। भाई तेरे को पता है टिबोन टॉप 10 फास्टेस्ट गेम फिनिशेस सब PRX का गेम्स है। हाँ तो क्या कर रहे भाई? मैं स्नैक्स। अरे क्या है? वाह सबके साथ होगा। अरे क्या कर रहे हैं? क्या मुंह में ले रहे हो शोभित भाई? अरे कुछ खा रहा। अरे भाई क्या? हम पूछ रहे क्या खा रहा है, कह रहा कुछ खा रहा हूँ। क्या लोडो है क्या तू? क्या बोला? Jinka mom command and Mixture. Concord player T saluting face. जिनका भाई जिनका मम्मा कॉन्करर थी भाई BGMI में। अवरादीप भाई आप जो भी बोल रहे हो मैं सच बोल के सबको बोल रहा हूँ। बोलो जिनका मम्मा Ferrari Q6K ये है। अगर आपको ट्विटर में फॉलो करना हो तो सर वेलकम। अवरादीप भाई आप मत करो, भाभी गाली देगी। इतनी गंदा आ रहा है, मैंने नहीं सोचा था भाई भाई। मैं भी बोल रहा था T1 को अच्छा खेल रही करके। Wait to see if PaperX commits to it. They did hear the ult orb getting taken, so if PaperX doesn't push out forward, T1's just gonna wait. And then they surely go back and check A main to see if anyone's remaining. Because if you don't do that, you don't actually have any information yourself. भाई बंदा ही Hey, Moise, I'm good. Mind Freak just playing. He's just playing for info. He's gonna back out as soon as he spots someone. Carpe here, ready with the flash. And you know, it is a very T1 start here, right? A little bit more methodical, a little bit more careful, a little bit more patient, but so far that hasn't worked. Obviously, the dimensions of being on the attacker side are entirely different, but we're now down to 45 seconds. The spike is not that close to B just yet. Yeah, and now, I mean, PaperX will know for a fact that they're coming, and something is just trying ए, to इसको देख कितना आगे आगे खेल रहे हैं। हाँ बड़ा इजी है। Momentum है। No no, that is wrong position है Eclairs। I know it is. ओए ब्रो आप लोग को पता है गेको का फ्लैश डॉज कर सकते हैं? हाँ, how? Bro, so basically just before, as soon as it spits at you just move. Oh. You don't jump, you don't crouch. No, you move. 11 मैंने कर भाई। हाँ AD and it hits the wall behind you. I'm not even kidding. और ये पता है तेरे को कि हार्बर का वॉल you can stop it with a right click. क्या? हार्बर तभी वो बड़ा वाला लंबा वॉल बनाता है ना, तो तभी वो बना रहे राइट क्लिक किया तो स्टॉप हो जाएगा उधर ही, पूरा नहीं खींचना पड़ता तेरे को। भाई अभी पता चला मेरे को। नहीं मतलब when you are playing as harbor या एनिमे बंदा? No, when you are playing as harbor bro। क्या रे लूना, भाई IIM बदगांव में पढ़ रहे तू? नहीं वो तो पता ही है भाई, बॉल रोक सकता है। हाँ मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी पता चला। मैं खेला भी नहीं ऐसा हार्बर, तब भी पता है नॉलेज। नहीं क्राउच से नहीं होता है, क्राउच से नहीं होता है। अवरादी पर ट्राई करके देख, सिर्फ एट टाइम्स क्राउच में होता है, वरना क्राउच के नहीं होता है। जिनकी मम्मी टकेश कैसे उन्होंने यहाँ क्या टिबोन, जिनका मम्मी टकेशी कैशल्स का विनर है, पता है तेरे को? क्या? जिनका मम्मा
टकेशी कैशल्स का विनर है। हाँ, इसका मतलब क्या है? टकेशी कैसल नहीं अरे पता? टाकेशिस कासल पोगो पे क्या आता बोल था। रहे हो? अरे उस टाइम पे अंकल बन गया ये साहब। निकलोडियन पे भी तो आता था शायद। निकलोडियन पोगो पे तो आता था टाकेशिस पोगो पे कासल। था। टीवी नहीं था घर पे, ये सब बोल रहे। तू क्या कार्टून देखता था टिमोन? Now they've stacked on to B, and they're going to try to capture T1 here. Man, T1 though, Nice handling try. it with grace. अरे भाई हो गया PRX फुल 11 वन कर भाई 11 वन कर T1 covering each other's angles despite the फुल flashes ब्लाइंड में coming मारा out. उसने Very मंच well में। timed from Jing. But again, you know, it's another eco for PERIPHERALS because they lost. ये मंच की लड़का है लड़की है? Not the end of the world. They would have liked to take down maybe one or two more people. क्या कुछ गेम है क्या टकेशी कैसल? हाँ। अरे टीवी शो था एक। टीवी शो था। रोडे जैसा? नहीं भाई तू रहने दे यार। थोड़ा और कैजुअल देखो यूट्यूब पे देखो वीडियो मिल जाएगी। एक दिन में खत्म हो जाता है वो मतलब। सुबह जाओ शाम रात तक खेलो पूरा अंधेरे तक। Good games but one days. मैं कुछ भी बोलो टकेशी कैसल इंसान तो था भाई। Really not overextended at all. Thank you, Moyes. Pretty conservative. Really allowing T1 to kind of run the clock a bit here. They are going to be able to leapfrog up into the पूरा attacking में दिखा रहे हैं। excuse me, at least make it look like that's what they want to do, but in fact that's not the case at all. They're going to do a loop around all the way to the back. This is a long walk from the A south all the way through the spawn. In this case, they will wrap up into mid. Killjoy utility is sprinkled throughout here. So T1 just trying to bait out as much utility off of the other side, right? Because then if they rush in as 5, they might be able to recover a weapon or so and try to even the fight out. Otherwise, PERIPHERALS has too much of an advantage. Good flash. You gotta imagine, you cover one side, they should push the left side all together. Oh! मेरे को लगा स्टिक ले लिया। Yeah, he doubles up. Something ले लेगा। उसने। Something ले लेगा। कहाँ जाएगा भाई? ओ भाई। इधर काई तो उधर कुआ। फिर भी मारा एक। कहाँ जाएगा भाई? अरे इवन भाई आपका फेयर में भी वैसे ही फंसते हैं लोग आपका नजरों की वजह से। पता है सोचो ना उधर एक वो एक ये और एक शॉक डॉट भी आया। कुछ जगह ही नहीं है। तड़पते ही मर जाएगा। ये देख वापस मोटा है ये बंदा भाई। अरे बेचारा। अरे क्यों ये बेट अटक के क्यों खड़ा अरे रहता भाई है वो इंट्रो ने बेट किया भाई सच में बोल रहा हूँ बेट किया उसने। ये गलत एंगल क्यों खड़ा रहता है हमेशा? भाई मांगा था वो भी देखा था कैसे भरा था वो छेद में से। हाँ अभी भी इसका गंदा दिख रहा है। हाँ भाई वापस उधर जाके भी ये सब मोटा था। नहीं मोटा तो जेटा था। हाँ वो बैठा हुआ था जब क्रॉस करके। Buys enough time where T1 has to start rushing. Divide with a great decision making here. Okay, well, Intro's 2 किल definitely बढ़िया not लिया back फिर out with that कोने much में जाके away अटक जाता है from वो himself. He इंट्रो। just jumps right down. और तो होते रहते हैं। You're up against the wall. You gotta throw रहने दो आप everything, रदी पर क्या every single round. Starting with a reckoning here on this one from Zeta's Harbor. Time around, PRX with heavy rotations from A. One into mid, a flash to peek. Sound cue will be there from the attacker's side, but they know at least nobody was in mid just yet. And they seem to suspect that it's actually going to be a hop onto B. It's not. There are 2 players lurking in the back. It's Intro and Saya Playa. So PERIPHERALS, yeah, they're doing what T1's been doing as well. ओ भाई Which is हो गया trying भाई to जीजी। shift your weight over हो on गया B. भाई Now, चलो। while PERIPHERALS, because of that, they do win the fights over on B. T1, what they did very well this चलो time. टीबोन भाई मैं मिलता हूँ आपको 8 बजे वैलोरेंट लीडिया लाइव में। अरे नेक्स्ट गेम तो देख लेते हैं। एक और मैप है अभी तो। Mindfreak had nowhere to go. भाई एक मैप कभी-कभी ऐसा होता है कभी-कभी एक मैप उल्टा भी होता है। समझ रहे? Plant here for T1 without having to use Harbor's Reckoning. They can use अगला it as a फ्रैक्चर retake मैप now. है। मैं तो जा रहा भाई बिस्तर पे लेटने थकान हो रही है आज फुल। अरे यार बेट हो गया यार बेचारा। 1v2 करेगा ये क्लच करेगा। क्लच हो सकता है तो ऑनेस्ट। पक्का क्लच करेगा। नहीं रहने दे। अबे यार ये भी है। भाई क्या रीड किया इसने समथिंग ने। आगा। कोई नहीं ब्रो फेयर स्पॉट होने में क्योंकि प्लांट होता ना इसलिए।
Hardcore, very funny, bro. Hardcore. क्या मारा Yeah, I believe this map ended in T-Bone. टाइगर दी 30 भाई minutes. ओए टिबोन एक बार मेरा स्ट्रीम पे So, ये देख, तूने देखा नहीं ना? speed running here with a हेलो, very one-side तू है? surprise. क्या Flag दिखाता हुआ. Eclairs, you also haven't seen the flag, no come. Comes up दिखा? with a big stage, right? Playing. अरे अकल ये से कौन है बैठे रे पीछे? कौन? अरे पीछे वाला एडम बाम। है, शुभम है, अरे ये तो शुभम है। एनिग्मा का है। अब इनके साथ है। So good. Feel the velocity, baby. ये थोड़ा गोल्डन कलर नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादा ब्राउन नहीं हो गया? शुभम भाई, अरे no bro, we gave them golden, but तभी आया था ऐसे ही आया. It looks good though. थोड़ा ब्राउनिश हो गया। It's a copper color है. हाँ, ब्रॉन्ज, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बे। हाँ. मुझे एक मिल जाता है, लूंगी मत बना भाई उसको। भाई टाइसन, मेरी जान टाइसन, इधर आ ब्रो। लव यू टाइसन। टाइसन गिरा जाने लौड़े भाई। मेरी जान है भाई टाइसन। आराम से बट्टू भाई, भाई आराम से, अटैक होगा उधर। भाई बहुत स्वीट है यार ये बंदा। Hey, thank you. तू नहीं भाई टाइसन। तू रूम भी नहीं, याद हो ब्रो? तू रूम भी नहीं देखा ना? कैमरा, तू रूम भी नहीं देखा ना? रूम नहीं देखा तो रूम टूर हो जाए। 2 लॉन्ड्री बैग हैं, 2 बेड हैं, खत्म रूम। मुंबई थिंग्स। कितना आराम से दे भाई. दिखाना रूम। दिखा दे उतना ही रूम. इसमें 2 सेटअप है। हाँ, मेरा सेटअप ये है. हैशटैग शुभम भाई के लिए गेमिंग चेयर। हैशटैग शुभम भाई के लिए गेमिंग चेयर. अन्ना उधर 15 लाख गेमिंग चेयर रखा है रूम पे, एक बेच दो इधर। ओए टिबोन, तेरे को ये भी नहीं मिला ना? क्या चीज? प्लीज एक दिन टाइसन को बिठा दे यार चेयर पे, सच्ची बता। हाँ. ये No, क्या है? I also want बट्टू. क्या है ये ठीक बता है भाई। भाई। डर्टी तो है भाई मर्च है. क्या मर्च लग रहा है. है? तुम्हारे पास कुछ तो है, हम just वीएलटी का saying- सपोर्ट करते हैं, हमें लौड़ा मिलता है। जस्ट सेइंग, मेरा जर्सी किसी के पास नहीं है, जस्ट सेइंग। जस्ट सेइंग मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जर्सी देख लियो। अरे अबे टिबोन साले. कौन भाई ये लो, ये लो, ये लो टिबोन भाई, ये ले लियो. मैं कस्टम जर्सी बनाऊंगा ये मेरे। ले लो टिबोन भाई, ये ले लो. नाम भी लो, ले लो. ले लो, फुल ले लो. ठीक है, क्यों बज रहे हो? Why didn't we get it, बट्टू? जस्ट सेइंग, हाँ? सबसे फर्स्ट Why मुझे didn't we मिला। get it? This one even I thought only the players got it. I didn't know even T-Bone had it. अरे वो अन्ना का साइज में मैं एक और स्कैम किया बस। हाँ वो भी, वो फील्ड, वो अंदर का टी-शर्ट जो है ना वेलोसिटी गेमिंग, वो भी मुझे किसी भी के. चाहिए भाई मर्च। That also bro, that merch is not released only bro. So अन्ना के लिए, अन्ना यूएस जा रहे करके 10 वो अन्ना ने रिलीज नहीं किया, इसने लीक कर दिया। नहीं, अरे रिलीज नहीं रे, सुनना. अन्ना यूएस जाने के लिए 10 लिया. अन्ना बोला किधर भी जाऊंगा वही पहन के जाऊंगा. लेकिन प्रणय भाई ने गलती किया, हैदराबाद पहला मेरा रूम आया, मैं 2 लेके रख के अन्ना को बोला, अन्ना गाली देके ठीक है रख दो, बोला अभी क्या देखे. हाँ क्या? हाँ भाई मुझे भी मर्च चाहिए, मर्च और जो लोग। पर जर्सी तो सबका आ रहा है, नया जर्सी भाई, नया जर्सी तो मस्त लगा मेरे को. मस्त है, मेरे को चाहिए. तेरे पास नहीं है क्या अभी? कैसे नहीं? नहीं England है. has the old jersey. ओल्ड Yeah. जर्सी तो है ना। हाँ, नया नहीं है. चलो जा रहा हूँ मैं। अबे रुक भाई, एक और गेम तो देख ले। अरे लौड़ा भाई, मैं नहीं, रात को खेलेंगे, थक गया मैं। देख ना भाई, एक गेम देख ले यार। बतुरा ब्रो, शुभम यार, क्या एक करता गेम है? देख ले यार, लूना मार मेरे का। पीछे बैठ के मेरा आन रात करता को है. रेजमैन गेम प्ले रात को 9:30 या रेजमेंट 10 सो रहा PM। हूँ मैं आज। मैं जा रहा हूँ भाई, लेटने, थक गया मैं। ओके बाय। देख ए रहे ब्लू ना यार. साला ये इंडिया का ऑरेंज नहीं लग रहा है, बाहर का ऑरेंज है क्या? मतलब कौन सा? मैं जो ऑरेंज जूस पिया अभी। Every drop. Hey T-Bone, I'm actually thinking to start swimming bro.
Bro, क्या demotivated है तू लोग? Bro, recklessly how is laughing at me, dude. एक काम करो, स्विमिंग पूल में सारा पानी बाहर आएगा, आप सीधे जू बीच में ना ये करो स्विमिंग. Hello, will you defend me or not, Ayushi? Are you also laughing, Ayushi? यार आप लोग कितने फैट शेमर्स हो यार. वाह, आप मेरे को बुंड बुंड बोलते हो तब तो फैट शेमिंग नहीं क्या दिखता. बुंड बोला भाई? मैं बुंड आपको गेम प्ले को बोलता हूँ और आपको शक्ल को बोलता हूँ. कभी आपका मोटापन की वजह से मैं कुछ नहीं बोला आपको. और जो ऊपर वो बिरयानी वाला बाउल रख के एक हेयर कट बना के आ गया, वो नहीं है बुंड. बोलते हैं ड्रेक जैसे लग रहा है. हाँ ड्रेक, ड्रेक वाह. लग रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ. अलीबाबा एक्सप्रेस. ड्रेक जैसा लग रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा. उधर मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखो, Bro, सब लोगों ने ड्रेक T-Bone, बोला. tell me honestly, T-Bone. Tell me honestly, what did Bobby tell as soon as he came back with that haircut? Tell me honestly. हाँ? God's plan. भाई मेरे को माँ का सब बोल रहा है. भाई बहुत हैंडसम दिख रहा है मेरा बेटा. अब भाई हर एक मम्मी बोलती है. मेरे को भी ऐसा ग्रीन शर्ट, ऑरेंज पैंट, रेड शूज पहन के गए तो भी मेरा बच्चा करके मेरा मम्मी वैसे बोलेगी. टग भाई ने भी बोला ड्रोक भाई. ड्रोक है वो, ड्रेक नहीं. फायर इमोट्स डाला है, मतलब हॉट बराबर. देख लो भाई. T-Bone भाई सच बताऊं, जो बाबी कमेंट देखो, उफ ऐसे ही तो उफ नहीं बोला होगा. अरे तो हम लोग का कमेंट क्या है? ये कंप्लेन गुनुगुनु पुज्जी क्या है? क्या? पुज्जी. I have no idea what language that is, bro. भाई गूगल करो एक बार. सुनना T-Bone, ड्रेक का इंस्टाग्राम आईडी है. T-Bone भाई सुनना. हाँ. सच में बताओ, भाभी गेम्स वगैरह नहीं खेलती है ना? नहीं. भाभी तेरा यार देख के बोला होगा ना, नाइस ट्राई रे बाबा करके. अरे भाई शैंपेन पप्पी जी क्या T-Bone क्या बोला? What was written? शैंपेन पप्पी जी. इन्होंने क्या बोला? शप्पी पप्पी जी ऐसा कुछ बोला इसने. इसका मतलब क्या है? Bro, champagne bro, champagne is what those people pop bro. F1 में वो पॉप करते ना champagne. भाई ये ते बड़ा इंग्लिश मत लिखो भाई. अरे नहीं, शैंपेन पोएट्री उसका गाना था ना ड्रेक का. हाँ देखो ये ड्रेक को देख लो. नीचे हैटर्स देखो. गॉड्स नीड डॉग्स प्लान. ठीक है. क्या बोलती कुर्ला का ड्रेक. ड्रेक तो बोला ना एटलीस्ट. भाई रेप्टाइल्स ऑफ कुर्ला है वो. गोल्डी भाई 2.0 कहाँ से भाई? किस एंगल से मैं गोल्डी भाई दिख रहा हूँ? ड्रोक भाई वो ऑटो. मैं तक भाई को फोन किया था. ड्रोक भाई इसलिए बोले क्योंकि ऑटो वो था, स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें. ऑटो क्या है वो भी नहीं पता. ऑटो करेक्ट भी ऑटो करेक्ट वर्ड भी नहीं पता. हेटर्स देखो, अब लग रहे हो वेरीफाइड चपरी. बॉइल्ड ड्रेक, सस्ता ड्रोक. This haters just keeps me motivated, nothing else. हेटर्स नहीं, इनको दोस्त बोलते हैं जो सच बोलते हैं ना मुंह पे. हाँ वो सब हेटर्स लगते हैं इनको. मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन लव यू यार. You look like सस्ता ड्रेक फ्रॉम अलीबाबा एक्सप्रेस. Bro, not even that much bro. Bro, वो बाउल आता है ना जिसमें कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं हम. वो बाउल सर के ऊपर रखा, पूरा साइड में ट्रिमर मार डाला. तेरा घर जाएगा. टोनी एंड गाय में किया ये. टोनी एंड गाय में करके भी ऐसे ही दिख रहे हो. मेरा देखो केरला हेयर ड्रेसर से. इस बार कुछ यूनिक करते हैं ब्रो. क्या करनी है? Actually, T-Bone, tell me honestly, how much did your cut cost? 1800 bro. Bro, you should have gone below your house. One banyan tree will be there. Under that, one guy blade will be sitting there. 80 रुपए दिया तो हेयर कट भी करता, आर्मपिट्स भी से. हाँ? This is called bus cut. ये देखो स्टाइल ऐसे. बस कट है यार. Bro, बस कट. अयो. बस कट बेबी. भाई बस काट देना ऐसा बोला होगा तुमने जाके भाई. ऐसा बच्चे. ये बढ़िया था. थैंक यू. कौन सी कट करना है ब्रो? बस काट. बस काट ले भाई. उसने सोचा होगा बस कट डाल दिया. बस काट रहे हैं. ओके सर जी. तो निकालो एक बार कैप निकालो तो अपना. ओह माय गुडनेस, वापस पहन लो. तो यही है. वापस पहन लो. बस काट. भाई एक क्लास ने नेक्स्ट सेकंड बोला वापस पहन लो यार. ये क्या है रे? इसे क्या दिखा रहे हैं? Oh wait dude, that's a cool necklace bro. What the fuck, I just saw it. T-Bone baby. Oh, yeah, that's actually really nice. That's a SWAT cat. It's T-Bone.
कहाँ से लाते हो इतनी ब्लिंगी ब्लिंगी चीजें? ब्लेंगे ब्लेंगे चीजें हमारा कस्टम लिंगी तो इसका टकला भी है। गॉड्स प्लान है। अरे ये क्या है इसकी इधर ऐसा आईक्यू डाला है इन लोगों ने। ब्रो दिस राउंड वाज क्रेजी ड्यूड दिस राउंड। ये देखो कीबोर्ड ऐसे ही पड़ा है, वो कीबोर्ड मेरे को देता तो एटलीस्ट प्रे करके look at लेता this था। round fast. लुकिंग एट योर स्ट्रीम ऑन योर स्ट्रीम। हाँ ये देखा। I became fan after watching this dude. That's crazy dude. ये किसका सेटअप है? मेरा सेटअप। Hey T-Bone, you sleep also here only, yeah? This room, ah? Bro, simply waste one bed. You don't mind खाना बनाऊंगा, कपड़ा सुखा सकता और पीसी यूज करूंगा 2 घंटे। ओके तो बोल डील मेरे को, क्या आ जाऊंगा। नहीं पूरा कंसिडरेशन एटलीस्ट लेता 10 सेकंड तो सोचता, अच्छा तो लगता। You can apply. Let me check. खाना ये पकाएगा और ये खुद खाएगा। एक्सक्यूज मी, आप टेस्टिंग खाना के लिए क्या है? अरे टेस्टिंग जरूरी है ब्रो। टेस्टिंग के नाम पे पूरा खाएगा ये। टेस्टिंग जरूरी है ब्रो। मैं आज तक आधा केजी चिकन आता था, अब 10 केजी लाना पड़ेगा उसके लिए भी। Bro, what? Bro, Eclipse is fat shaming me, bro. How are you, my mother, dude? Hello? एक गधा दूसरे गधे को बोल रहा है तुम गधे हो। अबे सांड की गांड तू मत बोल। भाई तुम्हें कहाँ बोल रही हूँ मैं? टीबोन को बोल रही थी बेवकूफ लड़के चूतिए। अच्छा सॉरी मैं खुद को बोला। So I take it back, I take it back, I take it back, I take it back, I take it back. Sorry. आपको सांड के गांड बोले इसने। Sorry, I take it back. Eclipse, I'm sorry, I take it back. मैं सुन नहीं सकता, सच्ची बता रहा हूँ। Eclipse, I take it back. Eclipse, I said I'll take it back. I take it back. भाई अभी और आधा घंटा होगा क्या इनका? Sorry, Eclipse. आयुषी? मेरे को म्यूट कर दिया। हेलो? अबे हेलो आयुषी। भाई लेकिन आज एक चीज तो मेरे को सच्ची में शॉकिंग हुआ यार एक्लेयर्स। हाँ साला क्या? आईआईएम मेरे घर के बाजू में, तो मेरे को पता I ही नहीं can't believe it. इतना बड़ा Dude, वो बिल्डिंग I'm है, इतना बड़ा seriously- बोर्ड लगा रहता है बाहर IIM का। I can't believe that you didn't know that. Oh, what? Wait, don't tell me this guy didn't know I am was close by to your place. Oh, he didn't. उनको लगा वो अपार्टमेंट है कोई। कोई बात नहीं टिबोन भाई, आप तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हुए पैदा हो बड़ा हुआ। भाई अगर मेरे घर के बाजू में ही है तो मेरे को उधर सीट मिल सकता है। हाँ मतलब मेरा घर के बाजू में सेक्रेटरीट है तो मैं सीएम बन जाऊं, क्या बोलते हो रे? नहीं सच्ची में यार, मुझे साला आज सच्ची में dude, बुरा लगा था, नॉलेज ही नहीं। एरिया बहुत फेमस है, क्राइस्ट भी तो इधर ही है एक्लेयर्स। क्राइस्ट कोरमंगलम है। क्राइस्ट इज फार अवे। क्या क्राइस्ट कोरमंगलम? मेरे सामने क्राइस्ट ही तो है। अच्छा दूसरे क्राइस्ट की बात कर रहे हो आप? जो बट मेन जो क्राइस्ट है अबे वो तो कोरमंगलम में है ना बराबर, लेकिन इधर भी तो है क्राइस्ट। बट दिस इज IIM बैंगलोर इतना फेमस है भाई। Wait, are there two Christs in Bangalore? More than 2 Christs. Oh. इंजीनियरिंग का वहाँ पे है किंगेरी में। तो टिबोन एक दिन चलते हैं यार किंगेरी साइड, वहाँ पे गो कार्टिंग वगैरह करते हैं, पेंट बॉल वगैरह सब है। पेंट बॉल में जो दर्द होता है भाई। हाँ के बाजू में रशियन मसाज पार्लर तो सब पता है तुझे। आओ भाभी को बुलाओ, भाभी को मैं अभी है गोल्डी भाई का जनरेशन का शौक चढ़ रहा है। नहीं गोल्डी भाई ने बोला, कमेंट देखो। गोल्डी भाई ने बोला वो घर के बाजू में रशियन मसाज पार्लर तो आपको सब पता है। अरे नहीं रे, ये सच में है क्या टिबोन? जी भाई नहीं भाई, क्या कर टिबोन भाई व्हाट्सएप करियो जरा लोकेशन। एक मिनट तुम्हें वो भी भाव नहीं देगी, तुम क्या पूछ रहे हो? हे एक्लेयर्स टिबोन का पीछे 0 देख रहे हो? दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ फक्स आई गिव अबाउट योर ओपिनियन प्लीज। 0 का है भाई, ओ है ओ। अरे भाई इसका तो रहने दे भाई, दोनों मिलके मेरे को ही मारो। 0 बना दिया इसने, इतनी बढ़िया लाइटिंग शेटिंग डाल के हमने इंटीरियर्स बनाया है, इसने 0 डाल दिया। 3 इडियट्स का शूट उधर ही हुआ है। हाँ क्या? हाँ यार पहले बोल देते यार। Seriously not know all this? 3 इडियट्स का कौन सा शूट? I'm not even from Bangalore and I know all this. 3 इडियट्स का कौन सा शूट क्या? वो पूरा कॉलेज घर बुला लेते हैं हम।
IIM बैंगलोर सबसे महंगी हो गई ना अंदर सीट वगैरह एक्सपेंसिव है। कितना होता है रे तू मैनेजमेंट सीट वगैरह नहीं ले सकता आईआईएम में। उधर का स्टूडेंट्स वगैरह फुल यो बे गाड़ी वाड़ी सब अभी समझ में आ गया। क्या बोल रहे हो लोग भाई? 20 लाख? हाँ 20 लाख 20-25 लाख। Wait, Ekla, how much did your MBA cost you? The whole 10 fees for 2 years? It's a 2 years 10 thing, lakh. no? हाँ, 10 10 lakhs, lakh. ah? हाँ Oh yeah, you guys are telling me that. including I one forgot. Singapore trip. क्या सिंगापुर क्या? सिंगापुर ले गए थे ना हमें फर्स्ट सेमेस्टर। भाई इनका कॉलेज इनको सिंगापुर लेके गया था। सिंगापुर में क्या क्या हुआ टिपुर हम ऑफ स्ट्रीम बताएंगे। एक क्लास मेरे को कहानी बताई। सिंगापुर लेके क्यों जाता है वो? एमबीए में रहता है मैंने भी सुना है बहुत। हाँ Basically they take like within the first month they take us ki orientation types, like you know you'll get to know your classmates better. I don't understand why they do that क्योंकि anyway उसका classes separate होती है based on what specialization you take. But What were you specialized in? I was specialized in finance. Finance, अच्छा। हैं? बैंक का आ गया? हाँ तो एक ही मैप के लेता है। एक ही मैप के लेता वो। चलिए करो आप। ये देख कैसे दिख रहे सालास। अरे समथिंग को लाओ यार। भाई उसका कीबोर्ड देख। समथिंग बोला हो गया मेरा, मैंने मार लिया एक में बहुत। भाई आईआईएम से पास आउट होने के लिए जिसको भी जॉब लगता है ना 1 करोड़ पैकेज इट सीम्स। लॉर्ड डू सच्ची कुछ में नहीं है उधर है। उधर भी जाके उसने हक के आया तो 1 करोड़ पैकेज पे टीपो ने एक महीने में कमाता है उतना सुपर चैट से। एक ही स्ट्रीम पे कमाता है 1 करोड़। हाँ टीपो स्ट्रीम ऑन करते 1 करोड़ कमाता है, ऑफ करके ले जाता है बाली। बाली क्यों डाला भाई? अच्छा सॉरी बच्चा। 1 करोड़ कमाने के बाद में बाली जाओ। अरे ब्रो सोच भाई वही होता है ना जितना भी। वो हिंदी नहीं यार। That one's paid off. This one, The keyboard देख टिबोन। how it's going to work out. का So tell us, HyperX का है वो and जो बैंकाई का कीबोर्ड है, how की is कैप्स this अलग है। all going to work out? क्या मारता है यार I 4 gotta सेकंड tell you, कुछ भी Victoria, I hope for T1's sake. स्क्रीन दिखा रहा हूँ। It could look like a closer match because right now, PERIPHERALS looks so on fire. They seem so in their element, and I don't know if they're going to be stopped here on Fracture. Yeah, I and don't now, know. of course, T1, I mean, sure, they make their own substitution, but then Benkai's back in, and surely you got to imagine to a certain extent, right? Because you often want that breach. This has always been kind of Benkai's go-to whenever they play the breach in their compositions, which now means Divai has to shift over to a Sentinel role. So we'll see. I mean, T1, are they prepared? Did they expect this to be the pick from PERIPHERALS? And then, of course, the double duelist coming out from T1, right? Ban now on that jet. Really taking on that duelist mantle once again. Trying to fill a different role and position here for T1 when they need it most. Yeah, well, they need to have a better game, or there is just no returning from this. That was such a one-sided map one. In a best of 3, that if we're fortunate enough to go to a game 3 is on a very modern map lineup. We're not having any of our throwback maps from earlier. T1, you know, they did stick to the style that we know of, but it was really PRX basically forcing everything and then succeeding once that said thing was forced. We now go to map 1 here. It does seem like PRX select over here just outside of A. We did see Saya play a spot that and then run back in. And it's going to be PRX with a mad dash coming through. Oh, Forsaken's just trying to get info. Saya now stuck here. Oh, but actually the stun comes out and only gets Forsaken. Beautifully done. Able to sandbag the entry there. They're going to bounce back around, but they're not giving up on A just yet. Jing providing good support. भाई नेक्स्ट अगर ये हारा ना नेक्स्ट गेम समथिंग को बुलाएंगे वापस देख लियो। Finally gets taken down by Cyplayer. I mean, they know where each other are, but it's eventually going to be T1 who cleans up house, and a big part of this was Cyplayer staying alive. Simply because of that, the A main forces had to shift over to Sand. अगर ये हारे तो अगली गेम समथिंग को बुलाएंगे वापस। हाँ वापस आ भाई। The fact that he was able to get that kill up in heaven, and
and then use the smoke to basically make a lot of discomfort and try to come in through that side of A. PRX tries to come in, you know, through an alternative entrance, but by then enough of T1 to come back in and was able to shut that down. Okay, so now without even a plant, no reason to go for any type of force here from PaperX. They're just going to go player extra आ गया क्या कोई? be onto arcade, and already this is another read coming out हाँ from बैन आया Smokes it off बैन किसकी जगह आया क्या हाँ बैन आया कौन गया? stuns and the turrets. साया गया? साया है? ऐसा है Yes, he sees him. Yeah, beautifully done. Much got a lot of patience exhibited there. They're not finished yet, though. A lineup of them is going to keep trying to come through here. So far, so good, though. Carpe and Zeta just cleaning up. Yeah, Carpe, Intro gaya. I'm sure he's got a lot of frustration pent up after Intro map gaya. 1. I believe he got 0 kills against something. Oh, is that right? Yeah, I didn't actually something catch just that. farms him the entire map. Yeah. So Carpe just trying to get some revenge. Carpe just doesn't get to play the game in map 1. Just gets killed over and over. Yeah, Munchkin very smart, though. Baited out the shots there. वो ऐसा है क्या? वो नियॉन नहीं खेल सकते इसलिए? Important with that player who's trying to initiate to get that kill and spill तो हर through. प्लेयर के वो रहते हैं कुछ प्लेयर ज्यादा मैप पे लाइक अच्छा परफॉर्म करते हैं वो अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं And this is going to be an important one. भाई, T1 started to सुनो do भी what है। PRX did to them earlier on Pearl. Okay, so now एक that एक we're प्लेयर के down, लिए एक एक Carpe लिया just भाई taking इन लोगों ने। smokes before Zakin does chase down onto Saya though. Now, PaperX doesn't have to force the same movement, right? They've got Devi up on the top side of the map, gaining some भाई वो information. सिर्फ जेट प्लेयर बोल रहे पब्लिक। कौन? Pushing's pretty good, but Zeta's there with an answer. Mindfree takes Something. him out. They don't have to force this, and they showed that type of discipline from before. Okay, God. yeah, now that Devi gets the kill, okay, it's a 3. कौन something क्या? What's the worst that could happen? Mindfree could I don't know, die. bro. He's very low, but Sure. मतलब now सिर्फ surely जेट खेलता है वो और बट कुछ नहीं। फिर भी स्मार्ट मूव है जेट ब्रो। नर्फ हो गए तो क्या करेगा? पूरा। Gives away his वो position. ये चले लोग वो भी करते हैं ना, ये लोग एजेंट भी हटाते हैं ना पूरा। एजेंट बैन भी आ रहा है बोला वैसे। हाँ। Force PRX to buy another weapon here in round 4. That would be great. But वो भाई साहब क्या मारा? a shot to the dome. Munchkin's out. PRX pulls in. जेट एंड रेना बोल रहे हैं Game पब्लिक। of catch up now, winning round 3. yeah, just keeping the minimal. Eclairs, टीबन आप पे नहीं है ना राइट बडी To try to make something happen here Nah. on round 4. Eclairs, can you please become ascendant first? Thank you. Could have been disastrous if they अरे also टीबन were का to खेलूंगी rush तो नहीं against होगा the भाई trades, but eventually क्यों नहीं होगा भाई मैं अबे खुद चुप जीत रहो। के Devi will clean up the round. I believe आप तो रहने दो हर बार कैरी भी करने गाली भी हाँ हाँ वैसे भी कैरी तो होती है। 1 point away. ठीक है भाई करते। एजेंट बैन है भाई- भाई मैंने सुना एजेंट बैन आएगा भाई। हाँ एजेंट बना रहा है। Somehow. ब्रो दे विल गेट न्यू एजेंट्स दे विल बैन सम एजेंट पक्का भाई। मैप ही बैन करते हैं तो फिर एजेंट No, they'll give agent ban to teams, bro. Teams can ban like how they're banning maps. क्या? हाँ वो वैसा एजेंट बैन होगा। पूरा एजेंट बैन नहीं क्या? नहीं वैसे तो सोच रहे नर्फ और वो वाला हटाने वाला सीन नहीं। Bond's not gonna get a chance. Bond gets dropped. It's interesting. Is PaperX really going to double down and try to? देन व्हाट मैक्सिमम एजेंट सब जब सब एजेंट्स आएंगे तब क्या करेंगे? हो गया? गेम में क्या सिर्फ मैप ही आता रहेगा अपडेट्स में? No, bro. Even if the agents come, no, they won't keep an agent down and all, bro. That is just How sad. many agents? What? What? How many Four agents? agents they'll release, no at least. Yearly 4 agents they'll release. What are you saying, bro? Yeah. Bro, what are you saying, bro? तो आया भाई 4 एजेंट हार्बर और कौन-कौन है पब्लिक? Killjoy, Harbor. किलजॉय लास्ट ईयर आया वाह वाह वाह। लास्ट मतलब भाई टोटल एजेंट्स बोल रहा हूँ जो रिलीज हुआ। नियॉन, किलजॉय, हार्बर और योरू उतना ही तो रिलीज हुआ। हार्डली किसी को योरू खेलते हुए देखा है इधर एक को हिस्सा लाया भाई। Bro, I'm telling you, in 1 year they're releasing 2 agents, bro, not 4 and all. Fate, sorry. T1 on Fracture, there are a lot of options, right? There are 4 ult orbs. आयुर्वेदिक क्रॉसर यूज कर रहे हैं बे। Maybe 2, and looks like that's what they're विशेष doing. भाई आपकी Get control of Dish and Arcade. विशेष भाई जाके आपके मम्मा को पूछो। लॉल वो नेट क्यों देख रहा है? Saya dying, I believe that finishes his show. साया का गेम नहीं दिख रहा है पता नहीं क्यों। Should be, yep, on Arcade we're seeing on the minimap Zeta picks क्योंकि up वो most मर of the रहा है। damage, but है Guy क्या? still have his Rolling Thunder. So T1's preparing everything for the coming round so that they can get the tempo back. They're not trying to win this round, they're just trying to set up for the future ones. Yeah, we'll see if they get any picks. And maybe a small victory within the round loss itself. I don't know that PRX is going to give it to him though.
Forces him out. Beautifully done. Forsaken gets that kill. Bond is now out of the picture. A big push comes through here. Oh, bye, Haga. Not the best spray control there. And these little victories are beginning to come for T1. But the lurk here from Mind Freak is too good. And the third win in a row is picked up here for PRX. But as you were saying, William, round 6 is really the one that's more important. Yeah, I mean, T1, look at their ultimates, right? They did all of that just to set up this round where they're able to fight back, especially because PaperX also has 3 of their own ultimates ready for this next attack. So T1, it's going to come down to how they can trade that utility. गेम में ऐसा मोड आना चाहिए ना, एक राउंड स्काई, दूसरी राउंड जेट, तीसरी राउंड रेस। पागल है क्या? मल्टीपल एजेंट। High crush of agents. काय? तो मैंने आपकी मम्मी को कहा Yeah, well, right now they are as exciting as ever to watch. I'll tell you that. The number of agents of the number of agents you want to play in the number of rounds. Here over by Dish, there is Munchkin waiting. This setup is nasty. We've got the operator. The first one, okay. अरे यार. Because there's the fault line. There's the push out from Munchkin. Oh, he doesn't know about the third. Yeah, he thought he had a clear there. But again, it's pretty nice to pick up those 2 kills. Bit of a trade out here. The spike is down. He needs to go back there and get that. He does nab that. And B, well, I don't know that B can be cleared here either. I think no matter what, this is kind of an uphill round for PRX. Yeah, the big thing is, कुत्ता नीचे गिर गया क्या? the lockdown was used to try to fake out B, but then तो instantly गिरा the नीचे fight क्या happens था? on satellite, so the lockdown wasted from Divide. था तो T1 नहीं था. already knows that this is a potential strike onto B. They have no reason to fight this because they have the Rolling Thunder and the Orbital Strike to fight back. It's an important moment here. This is a round that really could go either way. Now 2-4 here. Zeta takes Mind Freak out. भाई 2v4 है, जीता तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। ये जीता तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा भाई। ब्रो साया का गेम नहीं दिख रहा यार। He's just trying to force him off with the defuse. He's just trying to buy time. He's gonna let this fly at the very last second. Oh shit. All right, and now Carpe's gonna get that defuse. It will finish in time, tying this up 3-3. ओ भाई मेरे को तो कमबैक लग रहा है भाई। Yeah, lots of back and forth and एक क्लोज गेम लग रहा है मुझे। मेरे तो कोई कमबैक लग रहा है। Time their utility and their ultimates so that they can keep the tempo. This was a great set play from T1 though. A great setup to just Obviously तीसरी बंदा क्यों एक्सपेक्ट करेगा वहाँ बराबर? हाँ ब्रो वो उसका गलती नहीं था। ले गया था फिर भी। तो गलती नहीं था ब्रो, करेक्ट ही था। पीछे कैसे आ रहे हैं बे? क्या नियॉन के इससे पीछे भी आ सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? Running too rampant even in future rounds. I've never seen you play Neon once. I've never seen Ayushi play Neon once. Not seen him play. Watch yesterday's stream. इतना गंदा Neon लाइफ में नहीं देखोगे तुम जितना टीमोन ने खेला है कल. तो चैलेंज भी दो, पक्षी भी करो। हाँ वो तो लूना ने भाई हाई सेंसी लो सेंसी प्लेयर हूँ मैं भाई, मेरा 400 डी पे 0.3। क्या कुछ भी बोलते हो? 0.3 है तेरा? और क्या? नहीं चांस ही ले, चांस ही नहीं है। 800 DPI और 1 sensi 400.3 लोएस्ट सेंसी प्लेयर मैं ही होगा। 800 DPI और 1 sensi 801 is good only bro, decent sense. Mine is 400 0.7. 400 and 0.3 what the hell? They're expecting PaperX is trying to bait out their ultimates. That's why T1's not using their ultimates. They're just trying to bait out the duels 1v1 first. Great patience coming out from T1. Spike is not actually planted. It's down on the ground. Grab it again. It does finally get the plant. Here comes T1 now. They're going to come in with the infiltration. क्या कूदा स्काई? A fast rolling thunder आ गया भाई। साया आ गया भाई। Cover their sides and oh, what an explosive retake coming out from T1. Mind Freak stuck all alone. Not much he can do. भाई सब जो रीटेक ले रहे हैं लोग। अरे इसमें ब्रिम खेलना स्टार्ट कर भाई एक्लेस। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं भी बोला उस दिन। मैं भी बोला उस दिन एक्लेस को भाई, पर ब्रिम इज मोर इफेक्टिव। ब्रिम इज मोर इफेक्टिव। नो लेजेंड एक्लेस, ब्रिम इज मोर इफेक्टिव। हो गया भाई इसका। नहीं वाइपर तभी खेला जाता है तभी दूसरा और एक कंट्रोलर है हमारे पास। Another rolling thunder in the first half, but
We'll see how that बट ये goes. ब्रिम भी अच्छा खेलती है एसेंट विसेंट में तो ब्रिम खेलना आती है वैसे आता है वैसे इसको उसने एक लाइनअप में जाके बैठती है बस आपकी तरह यूजलेस तो नहीं हो ना मैं तो आता है अरे मतलब अच्छी खेलती है बोला भाई गाली क्यों दे अच्छी कोई गाली दे रहा है हाँ भाई आजकल कोई भी रेगा की पता है भाई 3300 पता नहीं कैसा खेलता है भाई क्या 3300 DPI क्या हाँ वो ऐसे ही कुछ है उसका ज़ेरेफ का भी ऐसे ही कुछ है ओ भाई साहब डीएम का बताना तेरे को 1600 DPI हाँ डीएम 1600 DPI में सेंसी खेलता कम है में होगा ना देखो मेरा विंडोज 5 में रखता हूँ DPI 400 और 0.37 है मेरा क्या बोलते हैं उसको भाई बंदी रो रही है and draw out some of this utility earlier in the map so that T1 can't just wait for the 0.42 हाँ रॉसी का तो वही है रॉसी का तो 800 DPI 0.42 है वो स्टैंडर्ड है हिसाब से ज्यादा मैंने देखा है अरे वो 10s का सेंसी है ये 10s में से कॉपी करने से कुछ नहीं होता भाई मेरा एक बार कॉपी कर कितना अच्छा एम होगा देख लो भाई रहने दे यार तुम्हारे से राइट टाइम का स्ट्रांग होगा उतना ही भाई रोज गेम 30 मारता हूँ भाई मैं अरे अरे एटलीस्ट 25 तो मारता हूँ तो प्लीज प्रोटी बोल देख लो भाई लेकिन इस गेम में सच्ची बताओ इस गेम में ना थोड़ा ज्यादा सेंसी चाहिए इधर उधर हाँ घूमना होता है नीड हाई सेंसी है बात तो है ट्राई करेंगे एक दिन क्या है रॉसी का क्या है 800 क्या 800.42 ट्राई करेंगे पब्लिक भाई कैसे नेट डॉज किया देख तो डैश मारा ना इसने but he can't win the duel. You would have thought Forsaken would have taken that, but really good reactions there from Carpe. Mind Freak doing some work of his own. Zeta out of the picture. They're all stunned up. And all left alone. Yeah, and just too much उस गेम और हुआ to deal मस्त लग रहा है गेम क्लोज जा रहा है very Paper Rex-ish victory where everything suddenly is happening and it's like in the course of about 11 seconds. Yeah, They've closed it out. And this time, part of it I think is they're trying to see is there any other movement, which agents are on which site. They don't see any of the push out, right? Something like Corsair entry बढ़िया था ना the very early sky smokes coming in. वो ఫైనల్ వాచ్ పాడి పెడతారా మోస్ట్లీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా బ్రో గౌతమ్ తెలియదు బ్రో ఉంటే అప్డేట్ వచ్చేది బ్రో మోస్ట్లీ అనుకుంటున్నాం తెలియదు ఇంకా బ్రో In many different ways. This is going to be another important round here. ओ भाई साहब क्या W भाई claiming A very quickly. There are no targets here. बाकी लोंडे आए नहीं अभी तक. I think the damage we've seen from this ulti is going to be all we're going to get from it. But again, it's not going to be an easy retake here for T1. And T1 bro, you saw the smoke or what? Two stacking smokes. Where? Strained position. No drop smoke. They did drop smoke. I love this change No. of pacing, right? They go in with the neon, but they don't all follow suit. They actually Oh, just yeah. set up. You can't smoke it, man. And then they actually bait T1 into thinking they might not push A site. Forsaken takes out another. क्या Clean trades and duels coming in from Paper Rex. Van all alone. क्या घुस रहा है भाई Things are happening so fast, it's wild. उसने अकेला ना फुल मजा लास्ट लग रहा है वाले उनके ना कहते मजा Saw आता back and forth here. PRX now ahead. Again, T1. Oh, hold on. Bow. You know what that song means. That means time out. What is it? Out time. It's, yeah, hold on. Tim out. E out? Oh no, I get it. Time out. Yeah. All right, you've solved the puzzle, Tasteless. Time-o. Well, here's the thing. So T1, I think probably what they're discussing now is okay. Paper X just went with these 2 rounds where उसके लिए custom furniture है बे देख and then they strike with an execute that is designed to take over that agent, right? Earlier it was on B against the Killjoy. This time they spot that it's, either Ban or, Raze, the Saya player over on A main, so they quickly go in with the overdrive from Neon. But then, the reason that was so important that they waited to entry into the site was not only does it give time for Forsaken to just safely check, right? He didn't buy a weapon, so he can go in, even if he dies, it's not a big deal. But then, it also forces T1 to
wait on the retake because the plan hasn't happened yet. ये But तो that means ज़्यादा है A भाई. main remains in control for Paper Rex. So T1, they've got to start to guess, how do we push out some of these other areas? Because the big problem right now for T1 is they actually have no info gathering. They don't have a Sky, they don't have a KO, they don't have any way to do it. I mean, same thing for Paper Rex. It's just, they are on the attacking side. They're attacking right now. Yeah, they can And push with that in. Neom, I mean, you're able to infiltrate so fast, things can spiral out of control very नहीं quickly. 4 लाख टका अंते. So, I mean, T1, yeah, you look at the comms, you say, okay, Paper Rex probably has the same problems on defense, so let's just try to even this first half out, but it'd be ideal for them if they can, turn this into a 6-6 or even a 7-5. Okay, this time a 4-stack push over here towards Dish, and they are going to get the line set up right there. Oh, go there. W, Bro. With the spray, just murders them. What a slide in. He jumps over the initial spray and then actually slides beyond both players, gets 2 and refreshes his slide once more. And then the spike is planted again. You only have 2 members left, T1. Retake, I mean, you gotta save here and hope for a 6-6. क्या रीडिंग भाई. Come around here. Bond may be in for a surprise. And he is. 4 मारा, And he 4. gets 2. Just रहने दे भाई इसको. ये बंदा हैकर है भाई, माँ कसम बोल रहा हूँ. नेम सर वो नाम से कुछ तो है. attack into the site, completely visually zoning out. भाई मैं आज से 4 सेकंड वाला सेंसी ट्राई करूं. 800 DPI. 0.4. उतना तो रखना चाहिए, आपका तो बहुत ज्यादा लो है. हेलो, इसलिए 20 किल होता है. अरे बहुत लो है genuinely. CS players baby. 15 years experience फिर भी नीचे झूलते हो. हेलो, CS players. Bro, मैं convert कर सकता हूँ क्या मेरा CS का? Yeah. That's how everybody did it, bro. Wrong sensi, dude. That's how everybody did it. That's That's how everybody did it, bro. What do you mean? Okay, check mine now, please. एक सेकंड रुक. ये राउंड के बाद करता हूँ. ये राउंड के बाद करता हूँ. हाँ, ये राउंड के बाद करता हूँ. पब्लिक करेंगे ना? पब्लिक बताओ ना यार. नहीं बोला क्या है? 400 DP. 400 DP 0.123. No one can recover that safely. And they're going to come in. It's a chaotic moment, but Mindfreak clears it out. Carpe returns the favor. Saya play in the distance, takes Jing out. 1 point. And this is not going to be an easy spike plant. 1 point. Everyone is scratched up 0.123. very low, so actually the firepower not as big of an issue right now. Carpe's been क्या 0.123? छूतिया है क्या तू? नहीं. 0.123 नहीं, sorry. 1.123. आई इसको निकाल देंगे ये लोग तो. 0.123 मेरा वॉल्यूम है. सॉरी. वाह. इसका क्या था यार? कुछ भी बोलता है 0.123. उसमें तेरे माउस हिल भी नहीं हिलेगा भी. Yeah, I mean, it is going to be the last round of the half, obviously. Steam में होगा. Paper Rex has been very rich. उतना नहीं कर रहा हूँ मैं मेहनत. मैं चेक कर रहा हूँ, रुको. So Divide just, we can see him kind of smiling. फिर मेरे को सेंसी बता. Very funny. Just wait to see if anyone comes out. No reason to give over the free ult point to Saya player, by the way, which is why he's hiding. Wall bang. Goodbye. 5-6. It's been so close, William. I mean, as close as it gets, right? I mean, T1, if they can take this one 6-6, and then we get to see Paper Rex. What's your answer to not having an info initiator? कैसे चेक करे बे? अरे तेरे सेंसी याद तो रहेगा तेरे को. Excellent round there for T1. ये भूल गया यार. CS:GO को भूल गया. I'm really glad. तेरा CFG लोडेड है गेम में? तो CFG फाइल में देख सकते हैं ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ. तेरा CFG लोडेड है तो उसमें मैनेज गेम फेल चाहिए. मेरा CFG उसमें होता है यूजुअली ड्राइव में. वो देख सकता हूँ. हाँ देख उसमें सेंसिटिविटी ऊपर ही रहेगा. Oh shot. Man, finally getting the kills that he's wanted on top of that box. Not going to be able to connect it to 2 though. Crazy infiltration there. Saya play blows Jing up. And they're going to have to flee this position here, running back to B. They've left Divide over here to lurk. Yeah, the problem is Divide can't do anything until the spike is planted.
because you don't know who's waiting on that A site. So it's really up to Forsaken and Mindfreak to just get this plant safely, hold the site, and wait for Divide to come after he takes out potentially Munchkin. Right, he does get the spike planted. Stunned only for a second. Divide's late on the rotate. He waited for too long, played it too safe. Push forward here. Mindfreak waits around the corner. Forsaken gets one. Munchkin takes him out. Yeah, but no one's in position to actually stop the defuse. Mindfreak has to go back up to B tower. Shorty out, doesn't find a target. Close range shotgun खेलने हैं, याद रखियो. Few starts. Oh. भाई साहब क्या round था इनका. Divide takes two out, and that's going to be the 7th win as PRX ekes out just a slight lead here as we close out the first half. I love the shorty pull out as well from Mindfreak, knowing that Saya player was so weak, so Hello? just have to hold on to tower. Where are you? Wild play here. Yeah, but those Hello? are one of those Hear me? moments where Where are you you? see the counter prep, right? I mean, you know. Where are you? Jing is so good at these blast paths, What's in? flight paths. Yeah. Saya player just ready for okay. He's gonna land either right at And my foot bye. or over on stairs. If it's the showstopper, I'll get him one What? or the What other. else can I tell, bro? Anytime Ah, soon, shit, I just thought we stop go catch up the with push. coffee or something. Unfortunately, it's not enough. So now we go to You met with an PRX accident, huh? defending here on Fracture. Obviously T1 with the Oh, spike okay. here to plant. Not T1 accident. looks good. PRX still obviously slightly stronger Okay. so far. And But bye-bye. definitely pulling through, looking a Bye. little bit more organized as we got to the end of that first half. Yeah, I mean, I would say probably if you're T1, the only unfortunate thing is the operator was never really providing as much value from Ban. I mean, that's one of the big benefits of having Jet. You can play the operator in a bit more of a greedier way, or you can try to with the tailwind, but man, not able to connect that to many kills, if not any, I believe, actually. So we'll see how that comes into play once he's on attack. Now, let's, again, remember, both sides working with no info initiator. So this time, it's on Benkai, the IGL, and Paper Rex, or I mean, I presume now that he's back in on map 2, he is back to IGLing, but probably. Yeah, what's the brain power behind Paper Rex to decide how do we overcome that weakness of our composition? T1, they didn't find a good answer for it on the defensive side. Paper Rex, I imagine it is actually W Gaming. Just push out more aggressively from one side. I mean, that's the thing, right? But on a map like this, that can be tricky to even know where you need to go, right? It's going to be a very interesting second half here. Again, for those of you just now joining us, it's Paper Rex in a 1-0 lead right now against T1. Right now, Paper Rex 1-1 in the overall group stage here. And T1 has been undefeated. So if Paper Rex wins this, both these teams are going to be 2-1. Yeah. In the big picture for scores for teams. Team versus team scores here. Yeah, obviously in this best of 3, PRX is 1-0 right now. Yeah, it will make things very interesting for the group stage, right? Their overall record as they try to get their ranking positions for the playoffs. Only 6 teams will make it there after a couple weeks of round-robin play. So Paper Rex, again, heavier stacks and then push out, which is traditionally the way you play defense on Fracture. I mean, T1 was trying to play this Fracture defense like they would play Pearl. Kind of bit them in the butt there. Paper Rex this time, they just empty out A site and say, just keep control of antenna and our spawn, and we'll. What did they just ignore A site, dude? Teammates there. Yeah. गलती किया. Quite the shot there. They're going to smoke out the A site. खाया इसने. And the spike, a little bit of a hiccup there, but it is going to be planted. Ban actually, he's trying to greed for more area. Oh! भाई साहब फिर भी मारा उसने. Bankai returns the favor. Ban always good for a couple kills here on the pistols. He's had quite a few highlights actually on pistol rounds. Now the flank coming in. Mindfreak going to push up here. Very tucked away. T1 is ready for this engagement. The smokes are, just covering their entrance here from main. And then it's Benkai. Benkai actually. Oh! भाई क्या retake है ये? What? घर पे आगा. Whirls around Carpe's shot. भाई क्या retake है ये? Move like he did a 360 triple axle. Close range net shot मारता सीधा. And it killed him. We've seen RB do it several times on different agents, but that we always say, oh, it's because he plays. भाई वो लोग हाका bro, so many mistakes they made bro. Second nature to it, but we saw it this time. Benkai says I can do it We too. did that from his perspective. Surely we see it. Oh, maybe not, because we actually missed Mindfreak's kills as well.
What a crazy round. Well, I don't even. Oh my gosh. All right, so it's now 8-5 here, and likely to be a 9-5 unless T1 really can pull off a miracle. So even with the plant, no force here. I mean, it's not a huge disparity on scoreline, so I don't blame them on the side of T1. Zeta, I think, hoping that he can still create a double angle. Oh, That's what they were hoping shot. for. 4 सेकंड के नेत्ती के ऊपर भिंडी लगाया उसने. Recover this gun. It's right in the middle of the site. Device trying to not give away this weapon upgrade. Yeah, Eclairs. beautifully done, Divide with the cover, causing an overextend Eclairs. there from T1. Yeah. Hi. They're not able to farm out the weapons from earlier. The turret, the bane of Munchkin. Just getting bored, bro. We are like dominating these guys, to be honest. Nicely done by James. Bro, even without something, they are dominating. This Lol, round dude. 3, oh so important. It's going to be the big rifle buy. Oh, they But with something, the team is. Oh, bro, different, you dude. know what, Eclairs? Oh, I'll ask off stream. Yeah. I'll ask off stream. WhatsApp में. अभी? नहीं, मैं कॉल करके बात करता. कॉल करता स्ट्रीम को, रात को कॉल करता. Oftentimes they're always kind of joking and yelling and hollering, but Hit them hard, hit them hard. So Rossi might play ugly match, no? Yeah, he might play after the Zeta match. Tomorrow is Zeta, no? मैं सोच रहा हूँ टीपन मैं क्या बोलते हो, उधर चले जाऊँ या वॉच पार्टी करो घर से? Yeah. क्या? उधर चले जाओ या घर से वॉच पार्टी करो? कहाँ चले जाओ? Now again, if T1 उनका वॉच पार्टी है, ग्लोबल स्पोर्ट्स का वॉच पार्टी मुंबई में. घर से घर भाई. उधर जाके क्या मिले? Oh, this is their own take on this setup, right? The turret spots at the vault. तू कर रहा है कल? They do get stopped. नहीं, Sunday family time. Look at this like tug of war over here. Oh, an excellent paint shell to capture that. T1 eventually wins this out. Now, it is important that they don't lose any positions, right? They invested a lot into this round. 50 हुआ क्या? If they नहीं. drop नहीं, another इनको बाया है. नहीं, स्टेट नहीं. है. हाँ, मारने पे डंडा. मैच एवढी मुड़ीची चरा उरा फ्रिया. rather the next round. ये मुड़ीची चरा शेक पूरा रे. Sorry guys. Just पूरा रे शेक. Ordination देखा? मैं stun करूँगा तू मार. They know exactly where Mind Freak is, though. He's got to reload and try to get some kind of a setup. Can he force this? I mean, he has a molly as well. He has to try for this. He has nothing to lose, right? I mean, you're just trying to do damage against T1. He should know Munchkin is in hell right now. He absolutely knows, and he's just trying to isolate these 1v1s. Oh, Munchkin too good. पुणे में मुंबई नहीं. So पुणे में. First round, and, you know, you were talking about this earlier, William. But Vlog भी हो you जाएगा don't want to मेरा. drop that many rifles. It's great to win the round, but you don't have a lot of the assets that let you win that round 3 as you go into round 4. Or I should say, round 4 of the second half. Yeah, we just saw it on the buy screen. उसने बोला stun किया, pick कर. On their half armors here. Shot called him. But yeah, I mean, they'll take what they can get, right, just to climb back in. Half armors, Carpe 1 point away from his. Same with Mind Freak, actually. Both Brimstones vying for an ult orb here, and looks like that's the setup here for Paper Rex, right? Push out from Arcade. Jing's actually just gonna full commit to this. याद रखे jump raise की. Zeta escapes on the zip line. And they're going to just try to tuck right into B. The weapon was not out. Bankai with a punish on the band and extends that over. Oh, and the orbital. Oh, dude, Bankai is just better, man. Oh, I mean, what a good start to the round for Paper. Oh, and Forsaken gets out for free as well. Now they know where he's at. Yeah. Oh, Forsaken just teasing him. Oh, Knife. Oh my god. Let's go! 2 knife kills दूसरा knife. Let's go! Paper Rex Troll कर रहे really बे. giving it to T1, telling them to sit down. I can't believe it. Bomb सुनना है Stayed मेरे. exactly out of that cone of vision perfectly. Yeah, how does he like, do it? I and वो so many सामने different आएगा. players in the world, I would chicken out right then, be like, no, I don't want to cost the team this. And That's draw a the gun. violation, dude. Wow. Well, Paper Rex. दो game दो knife. They're doing all sorts of damage to T1 right now, right? Putting a loss potentially on their record of the round robin stage. Mental damage. क्या W by hello? With these knife kills. The aces from Forsaken, and now they continue their spree. Yeah,
complete shutdown on the entry over there. They're going to force their way रिवर्स in. W अभी PERIPHERALS is going to back बी off में with से आके Actually, no, सीधा Ebb and Flow is so रिवर्स good, might W be मारा इन jump लोगों in. ने बोलते हैं टीमर बोलते हैं रिवर्स डब्ल्यू You see this round, right? मतलब उधर लौंडे नहीं है चलो पीछे चलते हैं पीछे डब्ल्यू करते Yes, just, let's talk about this ब्रो round as it डिफेंडिंग wraps में up. जीजी होने वाला है, ये नहीं होगा अब। नहीं हो गया खत्म रे The fact खत्म that है। they use this जी, जी, aggressive जी, Bro, जी. they just W'd and deleted their killjoy वगैरह everything, then reverse W. But it's used because But that was too funny, पता है But then the enemies वो दवाई तभी चाकू लेने के लिए गए थे वो नाइफ हाथ में लेके फ्लैश टच कर रहे हैं Just too good, dude, PRX. Masters Copenhagen, it is so refreshing to see them do this again. Even here we have the हमारे जैसे वैल्व क्लैश हो गया ना जी और वीएलटी का वैसे सीक्रेट और पीआरएक्स का है And what are we at now? It's 11? 11-6. 11-6, thank you. A much needed timeout. Right, uh-oh. A Get lot. those deep beats out. We're taking a timeout. अरे सेंसी तो बताएगा बदीर Sensei. हाँ अरे देखना पड़ेगा CFG5 Sounds like big underwater creatures coming to get रुकना ये गेम खत्म होने दे I was about to say, you see, you're much more of an actual human than I am, because I was just thinking like these are like those save rooms before the big boss in a game. Oh, that could be, the boss yeah. music starts playing, you're This like, is okay. this is the kind of music that plays in an arcade where you're fighting the final boss, but you've died and you got to put more quarters in. Yeah, in so order the to keep save on room is playing. there, but you actually don't have any more of those like tokens to save, and T1's like, well, what do we do? We're on our last. It's like we're on 25 our last sets leg. to continue. You're like, Dad, Oh yeah, the give countdown. me more quarters. Well, T1, I mean, listen, Which they had site is a this? Just search explosive Google, bro. start to VCT Pacific, and quite frankly, a much better start than almost anyone would have expected. I think a lot of people believed in the potential of this roster. We were just surprised at how quickly it came together, but now PERIPHERALS says, we figured out where our weaknesses are, and maybe Coach Alex was right. Maybe they just weren't being aggressive enough. I mean, it's working out. Working out. वाह Yeah, I mean, एक और फ्लैश ना just to keep them out of here. They know it's the lockdown's coming. They're trying to just fight against इनको this. पता था लॉकडाउन आएगा इसलिए वो नीचे गए बोर से करना They're set up. It's just to protect the lockdown. Yeah. How funny is that? मारा जिंग King's gonna come, and he gets अरे the यार opportunities. It जिंग doesn't भाई get हक either. दिया आपने Okay, so Ignore गया T1 अभी should इसको know they can save their ultimates until the retake actually happens. PERIPHERALS ठीक है लाइन अप है क्या draw out these ultimates before the plant happens here. अगा Oh, not fast enough. Oh! Nice trade. The showstopper shut down. Fire in the wear. Tasha said fire in the wear. Sorry, Zeta and Munchkin remaining. Munchkin, not much help. Clutch bro clutch Possible. Okay. नहीं रे He's got Wings him. Yeah, he's got a bolt. He's running, dude. Got a bolt. नहीं रे 40x में Just क्या have to क्लच run. It करेगा doesn't matter if they know what's happening or not. They have two people, so theoretically, PERIPHERALS, no reason to greed a kill here. I mean, Benkai will probably just peek to see if it really is a. Benkai, you're gonna go out here with. मैं जीत 35 सकता है Really? Well, I mean, कैसे counterintuitive, but they've extra split up angle में बैठा है नहीं they've split up bro क्या चूते के they've split up bro every time in a 2v2 anybody splits up it's gone में क्या हाँ उसका भी तो 30 HP था भाई it's now or never. T1 needs to go to overtime. जीजी हो गया We know how this क्या है जी। जीजी बनकाई ने भी चलो मारा चलो है। चलो एक क्लास चलो टीम वैलोरेंट इंडिया लाइव Hard if you're just kind of watching live matches here and there to identify what is different about PERIPHERALS. The speed seems similar, but the meticulousness of their utility and the way they're setting up for each other, you understand a lot more once you're watching the mini-map at like half speed. W 3 बंदा हाइट में उसने टरेट तोड़ा W पूरा W इंच भाई ये लोग डिफेंड अटैक कर रहे हैं ऐसा लग रहा है and he gets roasted. हिल लेगा भी They स्काई don't have any information on arcade, so they're kind of Sky stuck तो है in नहीं, antenna. sorry. They were hoping for Munchkin to stay alive, but now, what can they do? They just have to force this. Oh, and the Nice spike's shot. down on the second floor. GG भाई खत्म We're ending with some fire. GG बोलते लगा ऐसा लगा डिफेंडिंग अटैकर है अटैकर डिफेंडिंग है हाँ वही तो मोहितो वर्जिन मोहितो खेले बे कुछ भी किया भाई ये गेम तो डिफेंडिंग अटैकर डिफेंडिंग हो गया इस गेम में देख के बताओगे मेरे को भूख लग रहा है टीबोन अभी बता रहा हूँ रुक स्टीम लॉगिन किया तो गेम लॉन्च कर रहे हैं क्या जेन्युइनली
नहीं रे, कॉन्फ़िग फाइल देखूंगा ना। प्रॉपर्टीज ठीक है, चैट प्रोटेक्शन बराबर था यार। लोकल फाइल्स, ब्राउज, CSGO, CFG, As I love bro, mine is 1.2. 1.2. Wait. हाँ, Your Valorant sensitivity should be. Your Valorant should be 0.377. वही तो है। वो मैंने इसे कन्वर्ट करके किया होगा। हाँ, किया ही क्या होगा? एक डीएम करे क्या? किसकी सेंसी बोल रही थी तुम लोग? आज मैं 4 सेकंड की सेंसी करके एक डीएम करने वाला हूँ। देखते हैं क्या सीन। कितना है भाई? 800 और 0.75 ना? शायद मैं भी 4 सेकंड बन 800 सेंसी ना? Sure. चलो मिलते हैं guys. हो गया मेरा. Bye, take care. Bye guys. Bye. Hello guys. Thank you everybody for tuning in. I'll catch you guys on the next stream. Thank you so much for tuning in and doing everything. And I'll meet you guys in the next stream. Thank you. Bye bye. Bye guys. I'm not looking for a one night. You're not looking for a love life. Maybe we can have a good